Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good evening to our worthy speakers, respected audience, and my fellow colleagues. This is Aidur Yab, final year Pharm.D student, and today I'll serve as a moderator. It is my honor to extend a very warm welcome to you all at 6th Annual Conference of Giving Back to Pharmacy in Pakistan. Theme of this year's annual conference is Think Health, Think Pharmacist. To start our program in most blessed way, let's listen to the beautiful verses of Holy Quran. I request Hafiz Mehtab Ahmed to kindly join and share the recitation. Hafiz Mehtab Ahmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Subhanallah, Jazakillah. Let's commence the conference. So, as far as this organization is concerned, each year Giving Back to Pharmacy in Pakistan proudly hosts this annual conference, which serves as a platform for advancing the profession and highlighting its evolving role in patient care. Beyond this conference, our organization is committed to professional development by arranging monthly webinars and educational sessions to ensure pharmacists remain updated with latest advancements in practice, research, and policy. I would also like to take a moment to appreciate the efforts of board members of Giving Back to Pharmacy in Pakistan. This platform stands today because of the vision and dedication of them. Their tireless efforts have been instrumental in guiding and creating opportunities for growth and learning. This is their unwavering commitment we celebrate here today. So, ladies and gentlemen, without further ado, it is now my distinct privilege to invite our worthy speaker, Dr. Muhammad Siddiqui, a well-known pharmacist and reputable person. He has done MBA and leading board member of Giving Back to Pharmacy in Pakistan. He is currently serving as Director in Patient Services in Cleveland Clinic, Abu Dhabi, to deliver opening remarks and formally inaugurate the conference. Also, sir, we are thrilled to have your kind words on charting the pharmacist clinical impact across the care continuum. Over to you, sir. बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम अस्यूमिंग कि आप लोग जो है वो मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। सबसे पहले हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये चीज़ याद दहानी कराई कि अल्लाह ताला की इतनी सारी नेमतें हैं कि आप जो हैं वो उसका शुक्र अदा करते करते थक जाते हैं और नहीं कर सकते। सेहत भी जो है एक बहुत बड़ी नेमत है। एंड आई एम ग्लैड कि एज फार्मासिस्ट आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, इसलिए कि हम सेहत बांटना चाहते हैं, सेहत बेहतर करना चाहते हैं और इस पोजीशन में हैं कि हम जो है दूसरों की मदद कर सकें। सेकंड, वॉलंटियर्स, साइंटिफिक कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेहनत से इस प्रोग्राम को पॉसिबल बनाया। अल्लाह ताला आपके मामलात को आसान करे और आपके वक्त में बरकत दे। As a pharmacist and as pharmacy profession, मेरा ये ख्याल है कि we are in a very unique position कि regardless of geography, as a pharmacist आप खिदमत खल्क में पीछे नहीं रह सकते। As pharmacy service हम जो है चीज़ों को geography में या जगहों में तकसीम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप अपनी सर्विसेज जो है वो कम्युनिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पेशेंट की मदद कर सकते हैं जो आपके हॉस्पिटल में आए या फार्मेसी से कोई दवा पिक करे या डिस्चार्ज होने के बाद जब वो घर जाए तो उसको आप अपनी तमाम सर्विसेज इफेक्टिवली दे सकते हैं। तो आई थिंक एज अ प्रोफेशन वी आर ब्लेस्ड टू बी in this particular profession. इसीलिए we believe as a giving back to pharmacy in Pakistan कि अगर आप फार्मासिस्ट को अपॉर्चुनिटीज दें तो they can make a difference in healthcare.
और यही हमारा मकसद है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट्स व्हाट वी इनवाइट यू, कि किस तरह से हम आपस में मिलके नॉलेज शेयरिंग के ज़रिए से थ्रू आउट द वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन को बेहतर बनाएं, और जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंगेज करते हुए इस प्रोफेशन को आगे से आगे लेके जाएं. आई होप के यू गाइस विल agree with this vision and mission and join hands to make a difference. We started by discussing कि pharmacist matter करता है, और क्यों matter करता है, बहुत सारे reason हो सकते हैं, लेकिन I believe the three drivers that are making pharmacists important in every part of healthcare is number one, the rising chronic disease burden. वक्त के साथ साथ diseases की complexity बढ़ती जा रही है. Number two, increase of polypharmacy. We all know that. मुझे इस बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है. More and more patients are taking multiple medications, and that's where pharmacist's role can come in. The third driver, in my opinion, कि individuals हों या governments हों या hospital या health systems हों, they're all worried about the increasing cost. किस तरह से हम ये मेक श्योर करें कि जो पॉलीफार्मेसी में जो पॉलीफार्मेसी वाले पेशेंट क्रॉनिक डिजीज़ के साथ रह रहे हैं, किस तरह से उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन जो है वो मुहैया की जाए. तो दीज आर द ड्राइवर्स दैट विल कंटिन्यू टू मेक फार्मासिस्ट मैटर. जाहिर है कि जो ड्राइवर्स हैं दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, एंड एज आई सेड कि फार्मेसी इज़ नॉट वन सेगमेंट. रिसर्च ऑन डेस्क इज़ नॉट ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू. ये एक कंटिन्यूम है, और इसे हमें जो स्टूडेंट्स हैं आज अटेंड कर रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे इस ग्रुप में, हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये कंटिन्यूम जो है वो डिमांड करता है कि हम उसमें शामिल हों रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू आर. सो एज फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव हेल्थ आप कम्युनिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन. जब पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में हो तो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू बी पार्ट ऑफ द क्लिनिकल राउंड्स, to provide support for physicians through drug information, your nurses, medication reconciliation at transition of care, another opportunity. और फिर जब patient घर पे हो या clinic में आए post discharge, you can support and make yourself felt through MTM, medication therapy management, or adherence pharmacy concept. So opportunities are endless. These are three examples where we can make a difference at different part of the journey of a patient. Although के बहुत evidence मौजूद है, I mean you go and search के impact of pharmacists on medication safety, improving outcomes, both process outcome or patient quality outcome, disease state related outcomes are better. या cost जो है वो decrease होती है when pharmacists get involved. लेकिन unfortunately ये evidence पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन. और इसीलिए मैं आखिरी में जो कॉल टू एक्शन आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, इट विल बी फोकस्ड ऑन दैट. द रीजंस जिसकी वजह से फार्मेसी प्रोफेशन इज प्रोबेबली लैगिंग बिहाइंड are due to following challenges. The regulatory scope that limits what we can do. In addition, training gaps, opportunities for exposure, new graduates के लिए, जो graduates already practice में हैं उनके लिए, it's preventing us to do what we want to do. ठीक है, लेकिन simultaneously, if we work together as a volunteer organization, as a community organization, as healthcare systems, regulatory bodies, academia, through providing continuous professional development programs like this conference, collaborating with our nursing and physician colleagues, जिसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बहुत काम करने की ज़रूरत है. Utilizing digital tools, I mean AI is becoming big and big. We need to start looking at how do we use that as a tool. और फिर making sure कि our academia is allowing us to learn and practice what is needed and what is happening in real life. Those are the things that will enable us to be effective. It doesn't matter where we are in that continuum. So those are things to keep in mind. Zahir, to develop competencies,
हमें मुख्तलिफ strategies और tactics इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, going from improving the clinical knowledge जो कि guideline development के through, pharmacology related courses के through provide की जा सकती हैं. The second important thing जो हमें मदद करेगी as a pharmacy profession in Pakistan, both students के लिए ये ज़रूरी है और practicing pharmacists के लिए कि our attitude towards care is patient centric, safety oriented mindset. और उस पर alhamdulillah there are efforts that are going on in Pakistan कि जो आजकल के webinars में या conferences में patient safety के हवाले से efforts हो रही हैं. I think we need to strengthen that. Communication skills, अगर communication skills as a competency या skill बेहतर नहीं होती है as a student or as a practitioner, we cannot be advocates for patients. We cannot be advocates for our profession. तो ये बहुत ज़रूरी है कि communication skills को बेहतर किया जाए. It should start in academia and then it can go beyond. Documenting what we do and being able to interpret the data are the other two skills जो हमें सीखने की ज़रूरत है. And I think when we talk about documentation, this would be the call to action जिसके बारे में मैं अगली 2 slides में बात करूँगा इंशाल्लाह. And of course, pharmacists जो हैं, our learning doesn't stop. अगर ये mindset हमारा नहीं होगा, तो then once we are a practicing individual, we will think कि भाई हमने सब कुछ achieve कर लिया है. There is no need to go beyond that, and that would be a very negative influence on the newcomers, and it will prevent patients from benefiting from the most up-to-date and the best practices that are available. And of course, doing research and practice research. I'm not talking about just bench research, but practice research की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Just some ideas about the roadmap for students and practitioners. इस चीज़ का यकीन रखें कि कोई भी चीज़ कल चेंज होने वाली नहीं है. It will take persistence, but it will also take resilience and patience. So there are some ideas about short-term, medium-term, and long-term. Giving back to pharmacy in Pakistan is going to play its role in all of these 3 phases, inshallah. We will provide programs and we will provide mentorship opportunities and help you, if you wanted to perform ethical research, inshallah. And that would be done through our upcoming professional workshops, webinars, and one-on-one training, inshallah. So now let's shift focus on what can we really monitor, what can we really document. So let's assume कि आप hospital pharmacy में हैं. There are different type of services that you provide. So on the left section of this slide, those are the services that are most likely offered in your hospital. ठीक है. अगर आप बात करते हैं outside the hospital setup, ambulatory clinics हो गए जिसमें anti-coag clinic as an example है, या अगर आपके retail pharmacy है जहाँ पे आप medication therapy management provide कर सकते हैं. Antibiotic stewardship can go both inside or outside the hospital service, and transition of care, ensuring कि patient के जब level of care change हो रहा हो upon admission, for example, या upon discharge, as another example, pharmacist की involvement है या नहीं है, और अगर है तो आप किस तरह से show करेंगे कि उसकी जो services हैं they are making a difference in patient's life. Until we are able to show कि we are making a difference, आप कोई भी चीज़ change आसानी से नहीं कर सकते. I think we always quote example of US और वहाँ पे pharmacy practice कैसे बेहतर हो रही है. They have done that. They started in the 80s and it took them a number of years. लेकिन उन्होंने अपना evidence generate किया. They documented their services and that's what they use to ask and justify for more resources. These are just examples. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि when we are going to offer giving back to pharmacy in Pakistan के platform से, we invite other organizations to do the same कि what to measure and how to measure. और उसमें हम अपने academia में जो researchers हैं, we would invite them to participate and collaborate with us when we are training our students and practitioners on how to correctly set up ethical research, और ये practice research होगी.
अगर आप ट्रांसप्लांट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, what are some of the things to monitor, why you need to monitor, what are the suggested targets. Once you collect this information and you present it to your community or to your administrators, I believe कि not only कि pharmacists की image बेहतर होगी, when they see कि patient outcomes better हो रहे हैं, then they will provide you resources and we will gain the respect that we deserve, and the patient and healthcare in general would be better. Lastly, what is the call to action? Call to action ये कि we should engage with local professional bodies. And I think Pakistan के context में हम इस चीज़ को lack करते हैं. What I mean by this, कि we should be working with our nurses, with our physicians and other organizations, not as a competitor, but as a collaborator. जब हम ये करेंगे, तो we will get more opportunities and we should be able to impact care in a hospital setup, in a community setup, or in a retail setup. And second, and the most important in my view, okay, we need to start clinical projects. Track impact on outcomes. Outcomes जो हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, right? Process outcome, for example, कि pharmacist अगर engage होता है आपके septic patient के treatment के लिए, so they make sure कि antibiotic from the time of admission until it is given is within 60 minutes. ये process outcome है. If you involve a pharmacist, it will meet that target. If you don't have a pharmacist, you will not be able to deliver it in time. So this is a process outcome. अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं क्वालिटी आउटकम, पेशेंट आउटकम, उसमें आप फॉर एग्जाम्पल कर सकते हैं कि एंटाक्वाक क्लिनिक में पेशेंट्स आर within the INR therapeutic range in a shorter period of time and they maintain that अगर pharmacist involved होता है, as an example. या ये कि अगर transition of care में at time of discharge or time of admission अगर pharmacist involved है, तो you are reducing the readmission rates, for example, or you are decreasing the length of stay. And they both are money saving. So those are attractive things, not only for patients, but also for administrators. So that's the second call of action. I hope that with this, you would agree that pharmacists are present and they can make a difference at any point in the continuum of care for a patient. We just need to be able to be intentional कि what इसीलिए हमने ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस रखी है, you will notice कि your speakers will discuss this. Right after me is Dr. Umaima Shah. She will talk to you about उनकी जो efforts हैं in a hospital setup in Peshawar. But rest of the speakers, they will talk about different part or segments of the continuum of care. So I hope कि आप लोग notes लेंगे. I hope कि you would realize कि what pharmacists are worth. I hope कि we would document and collaborate with people in all facets of professional life, just to make sure that we save lives of patients, we improve their health care, and if we are able to, as an individual, only impact one life, Allah subhanahu wa ta'ala tells us that it is as if you saved 100 or the entire humanity. So with this, I will conclude and hand it back over to Duryab. Thank you for your time and listening, and please do volunteer for giving back to pharmacy in Pakistan and for strengthening your profession. Believe in who you are as a pharmacist, and inshallah, we will make a difference for our community. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for reminding us and motivating us about that our responsibility is patient-centered. And the key point is learning never stops. Thank you so much, sir. Now, as we carry this energy forward, we move to next speaker, for which I would like to invite next moderator, Ms. Amina. Thank you from my side. Allah Hafiz. Thank you, Duryab. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to all distinguished guests, colleagues, and participants. My name is Amna Shafi, final year PharmD student. I have the honor of moderating this session at the 6th Annual Conference of Giving Back to Pharmacy, Pakistan. It's my privilege to introduce our distinguished speaker, Dr. Saida Umaima Shah, a graduate of the University of Peshawar. She has served at Rahman Medical Institute and is currently working at Peshawar Institute of Cardiology as a pharmacist with
a focus on clinical practice and quality management. She also holds certifications in health research and clinical trial management. Reflecting her expertise in evidence-based practice and healthcare quality, today she will be presenting on a very significant topic, clinical decision-making in hospitals, from theory to practice. Please join me in welcoming Dr. Saida Umaima Shah. Over to you, Dr. Umaima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? Yes, Dr. Umaima. Okay, that's perfect. Okay, let me share my screen. Let me know, Amna, when my screen is visible. Yes, it's visible. Perfect. So thank you so much, Amna, for such a beautiful and detailed introduction. And also thanks to Dr. Siddiqui and Giving Back to Pharmacy in Pakistan for giving me the opportunity to talk on this platform. Uh, the topic is just like the clinical decision making in hospital pharmacy from theory to practice. So start के कुछ slides में I'll talk about the theoretical things के लोग क्या कहते हैं कि who pharmacist is, what is the role of pharmacist, and what actually we do. So I'll just make a quick question for all the audience who is listening. What do you think? Who are we? Who are like the pharmacist? What is just like the definition? What do you think? And I'll move forward. I'm waiting for your responses as well, okay? The vision and mission statement of giving back to pharmacy in Pakistan, ये डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने बहुत डिटेल से बताया, and everyone would be clear about it, and I have nothing to disclose as well. Chale, let's see if we have anything about pharmacist. Okay, we are patient advocates. Okay, so I was like making the presentation, तो मैंने quick search दिया कि let's see कि क्या myths है और क्या सोचते हैं लोग pharmacist के बारे में. So I found a very बहुत different सोच जो लोगों की है, बहुत different definitions मुझे मिले pharmacist की, and one of these are, why is it okay here? So some say a person who can read doctor's handwriting, like, or and this is real. मतलब ये myth जो है जो लोग सोचते हैं कि yes, the pharmacists are there to just crack the prescription and dispense it, which is not wrong, which is not right, sorry, but it is the जो doctors होते हैं या बाकी लोग staff healthcare professionals, especially in Pakistan, Peshawar, I would say, तो अक्सर इसी चीज को बिलीव किया जाता है, और अ पर्सन जो कि बस सिर्फ जाके मेडिसिन सेल कर रहा है. एंड आई शेयर माय प्रैक्टिकल एग्जांपल विद इट कि लास्ट वीक आई वाज ट्रेनिंग द डॉक्टर्स ऑन द मेडिकेशंस हैंडलिंग, उसको एडीआर कैसे रिपोर्ट करना है, नार्कोटिक डिफरेंट थिंग्स. आई वाज ट्रेनिंग द डॉक्टर्स. तो वन ऑफ द डॉक्टर जस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन इन क्यूए सेशन, तो उन्होंने मुझे कहा कि here's Azan at my side.
Thank you, everyone. There was azan shuru ho gayi thi, so I had to take a pause. So, okay, I was sharing something. Okay, so in the question answer session of my training session, so a doctor, or you would say a medical officer, he said that there is a restriction for pharmacy from pharmacy side कि हम हर medicine कुछ है specified जैसे controlled medicines है a bit जिनके लिए हमने restriction डाली है कि जी the doctor will enter the notes, detailed notes, उसके बाद ही the pharmacy will dispense it. So he was thinking why the pharmacist has restricted us about this. Like we know that we know what we are doing. तो ये dosing के उसमें और notes डालने में time लग जाता है. So I was like, he was saying कि why pharmacist is doing so? उनका तो कोई role है ही नहीं इसमें. So the myth again came. So then we had to tell them कि how pharmacist is important in this thing and how pharmacist plays a role. अगर pharmacist आपसे notes या dose या किसी medicine की justification मांग रहा है, so he is authorized in this thing. So okay, then so this was the practical thing happened in my life in last week, during last week. So let's move quickly towards the theoretical definition, which I saw. Simple definition which says that WHO, SHP वगैरह जो कहते हैं कि जी, who is a pharmacist who cooperates with the healthcare team, who prepare the medicines and who dispense it, and who also provide the drug information for the better patient care. What I think pharmacist का role limited नहीं है, it's unlimited. It starts from the extraction of raw material for preparing the medicines till manufacturing, processing, then QA, then supply chain आ जाता है फिर जी to retail community and hospital pharmacy inventory management, dispensing to patients, then clinical rules आ जाते हैं. You have to reconciliate the medicines, how you have to safely administer it, like the guidance. This का role from the very start, extraction of raw material till the excretion of the medicine from the body. तो इसमें बहुत ज़्यादा vast role आ जाता है. So let's go to the different roles we can, or different professionals we can pursue professions. हम हमारे जो अक्सर यहाँ पे पेशावर पे खासकर जब मैं देखती हूँ तो हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब वो ग्रेजुएट करते हैं या इन फाइनल ईयर फोर्थ ईयर वो क्लूलेस होते हैं कि which way they should go in the future. तो there are a lot of rules जिसमें हम जा सकते हैं. Clinical and hospital is very common here. Community retail हो गया, sales, industry and production, academia, regulatory policy making, ये हमारा अलग से काफी बड़ा डोमेन है. R&D, very good lot of things. I just want कि हमारे जो academic sides के जो teachers हैं, they should like conduct some kind of career counseling, or they should introduce their students from third year, from their fifth semester to all these practical fields, ताकि उनको पता चल जाए कि by the end of their academic जो उनका 5 साल की जर्नी होती है, by the end of that they should know कि उनको कौन से रोल में आगे बढ़ना है. So this is the very quick rules जो कि theoretical है again कि जी optimize hospital pharmacist क्या कर रहे है to optimize therapy for admitted patients, the dispensing, that's true, but practical, you educate the patient. Same in regulatory policy making, you work with DRAB, WHO, and different authorities for licensing. जैसे अभी medical जो कि properly follow नहीं हो रहा है. I love that act. उसमें बहुत details है.
So we should read that. We should try to follow. Dr. Umaima? Dr. Umaima? Can you hear So me? I'll quickly move toward. Yes, yes. There's a distortion in your voice. Can you please check it? Is it okay now? Hello, Amna, is my voice? No, still there is distortion. Change it. Just give me a minute. I'm working on it. Hello, Amna, can you hear me now? Is it clear? Yes, Perfect. now it's clear. Okay, sorry for that. I don't know what happened. Chale, that's fine. We were still in the theoretical portion. So, theoretically, a hospital pharmacist. Let me. Amna, is my screen visible to everyone? Yes. Okay. Okay, so we talked about the different roles of pharmacist we can play. We also talked about कितने roles है जिसमें हम आगे जा सकते हैं for our next generation pharmacist. We were in hospital pharmacy कि उसमें हम different काम करते हैं. For example, being what I do is being a quality management. जितने SOPs होते हैं, जितने policies होती हैं, जितने for example stocks management होते हैं in the ward. You have to manage all those things. Critical items होते हैं, high alert होते हैं, कितनी वो critical होती है. So managing those things plus ये ensure कराना patient को कोई medicine overdose ना जाए, कोई medicine expired ना चली जाए, even drug devices. So all these things you have to control that. And now coming towards the clinical. The clinical one we will talk about now, the clinical onwards. Clinically, we play pharmacist is very important to be included in the healthcare team जो कि patient के लिए जो भी decide होता है from admission or I would say from OPD visits or ER till his discharge and then follow-ups as well. So when the patient comes in, a pharmacist क्या करता है जी उनकी जितने past histories है, जितनी labs है, जो भी है, to review the past medications है, all the things to review those medicines, those details, then see what therapy is going to be given to that patient, फिर उसको किस तरह से intervene करना है, कैसे monitor करना है, ताकि ना overdose हो, ना underdose हो, ना कोई extra medicine जाए. Interactions, ADRs, ये सारी चीजें monitor करना. Let's move so from dispensing as well as hospital pharmacy का ये role भी है that you have to manage the inventory के जी आपके stock outs ना आए. Because if there is no medicine available for the patient, how would you intervene clinically? So ये सारी चीजें pharmacist oversee करता है in a hospital practically. Let's talk about clinical pharmacist, the practical role of clinical pharmacist. So what we do is we review prescribed medication for dosage appropriateness, drug and drug disease interaction, ADRs, providing therapeutic recommendations,
and education as well, educating the team, the patients, and the attendants. I'll quickly move towards the अच्छा इसमें मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूँ अपनी quick एक जो experience I have gone through nowadays ADR मैंने देखा so ADR भी हो सकता है इसमें जो dosage appropriateness की बात भी आती है all the things so I was just checking I was on my system and I was checking the consumption of phenyramine maleate कि जी एक पेशेंट है हमारे पास पीड्स कार्डियोलॉजी वार्ड में एंड ही इज टेकिंग ही हैज रिसीव्ड फेनरामीन मेलिएट ही वाज 7 years old और फेनरामीन मेलिएट उनको 3 days में 4 दफा एडमिनिस्टर हुआ है 4 दफा सो आई वाज लाइक अ बिट curious why because usually we give it with the allergic reaction, right? I visited the ward and met the patient family and then met the doctor. So I came to know that patient was admitted for infective endocarditis or he was started on vancomycin and gentamicin, like the full dose, the loading dose and the whatever the dose is like vanco 25 milligrams per kg. He was started on that 3 times a day. Same with gentamicin, the conventional dose. After a few days, the rash appeared, the full red rash appeared on the whole body of the patient. जी डॉक्टर्स फेनरामीन मेलिएट लगा रहे हैं डेक्सा लगा रहे हैं maybe this is the vancomycin reaction or Redman syndrome. This was documented everywhere. जब मैंने कहा कि अच्छा if it is with venco फिर भी हम venco continue कर रहे हैं then how could it be like ये ठीक कैसे होगा? So I checked I ordered his labs and when I checked his CRET on admission creatinine was 0.8 and now it went to 1.84. Like he is going towards the nephrotoxicity. No one has noticed this. So we stopped quickly the gentamicin, ordered the vancomycin levels. मैं आपको role of pharmacist का बता रही यहाँ पे. And the vancomycin levels normally should not exceed 20. And you won't believe the vancomycin levels were more than at 85. Oh my God, that was toxic level. So then we adjusted the dose and we did what we could and the rash went away. Rash bhi nahi tha next day after 24 hours. No need of Evel and Dexa. Nothing. The patient was all good. He got discharged within 1 week and he was admitted there for 24 days. So alhamdulillah, so this is what we can do as a clinical pharmacist practically. Now, let's see. There are different things we can do. Number one, let's go towards the drug-drug interactions. अक्सर हमें पढ़ाया जाता है in our course and syllabus that just open some website like Z हो गया या फिर up to date or anything, just check all the drug-drug interactions. But I believe कि कुछ drug interactions होते हैं drug जो कि या drug disease interactions होते हैं देखिए हमें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए that would come with the practice and that's fine और कुछ बहुत बेसिक्स होते हैं I have this case study we had 65 kg 50 years old patient who is 65 kg Asam में kidney transplant में I have worked for 3 years good 3 years so I would present more of the examples with kidney transplant so and cardiology as well तो हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट था 6 months हो गए थे पोस्ट ट्रांसप्लांट एंड ही वाज ऑन tacrolimus दिस इज एन suppressant medicines which the transplant patient has to take for lifelong like dose उसकी change हम करते रहते हैं but it's for lifelong he was on 3 milligrams twice daily and had hypertension and hyperlipidemia as well अच्छा रीजन फॉर रीएडमिशन वाज कि उनको respiratory infection था and he was diagnosed with bacterial pneumonia. So he was prescribed with clarithromycin 500 milligram twice daily for treatment. जैसे ही patient की जी prescription मैंने देखी what clicked my mind was what is tacrolimus? Tacrolimus is metabolized by cytochrome P3A4 enzyme.
we should know that what medicine ऐसी कौन सी है जो कि cytochrome enzymes की inhibitors है और कौन सी इनकी inducers है. They are very few, like हम उसको fingertips पर याद कर सकते हैं. और if it's difficult, we can just print it and हम अपने टेबल पर या फार्मेसी पर या कहीं पर भी लगा ले ताकि identification में आसानी हो. So tacrolimus is metabolized by this enzyme, and interestingly, clarithromycin is its strong inhibitor. So क्या होगा कि patient का GTAC levels बढ़ेंगे, nephrotoxicity होगी, even he can go to the graft rejection, renal failure, which we never want क्योंकि उनका transplant हुआ है. So discuss the case with the consultant, and we gave two options, whether either switch the clarithromycin to another one, azithro is safe comparatively, या फिर आपको tacrolimus की डोज इतनी कम करनी होगी ताकि वो toxicity ना हो. Then they switched it, and yes, the patient recovered. कुछ ही दिनों में he recovered, and then it was a really good result. So that's the one drug interaction को कैसे stop कर सकते हैं. There are lots of drug interactions. कुछ होने के बाद या जो नियर हुए हैं हमने उसको स्टॉप कराए ताकि वो एक्सीड ना हो. कुछ हमने पहले ही जैसे ही प्रिस्क्राइब हुए तो उसी टाइम पे स्टॉप कर सकते हैं. So this was a, let's go to the next one, that is therapeutic drug monitoring. We all are aware about neurotherapeutic drugs. कुछ मेडिसिन जैसे वेनको की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, वेनकोमाइसिन की. इस तरह से जेंटामाइसिन की भी हम करते हैं लेवल्स. डिजॉक्सिन की बहुत ज़रूरी है, वारफरिन की ज़रूरी है, लिथियम हो गए, बहुत सारे मेडिसिन हैं जिसको बहुत क्लोजली, नॉट ओनली TDM बल्कि उनके लैब ऑर्डर्स भी आपने, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गिविंग कोलेस्टिन टू अ पेशेंट तो RFTs को बहुत क्लोजली आपने मॉनिटर करना होगा. इफ़ यू आर गोइंग एम्फोटेरेसिन B फॉर सम कंडीशन, या फिर आपको, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, या फिर इफ अ पेशेंट इज ऑन IVIG या ऑन हेपरिन, तो हर एक की अपनी मॉनिटरिंग है, जो पैरामीटर्स है उसको आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होगा. नाउ आई विल गो क्विकली क्योंकि टाइम इज शॉर्ट विद मी. जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सो देन आमना विल शेयर विद मी. Okay, there's another case scenario of therapeutic drug monitoring or lab monitoring. Again, I would go for CKD, as I shared KG Mera. Most of the times I spend in the nephrology and transplant ward and then cardiology now. So I had a CKD patient whose eGFR was 35 ml per minute, and he was type 2 DM as well, or history of AFB hai. Now, it seems like it's a CKD case, but it's more a cardiac case. The reason for admission, if this was the interactive session, तो ये और भी ज़्यादा मज़े का होता क्योंकि मैं इसको आपसे पूछती and then you would participate in it and it would be so fun, but it's okay. We can just learn from it. तो क्या था, the patient complaints of chest pain था and SOB था, and he was diagnosed with an STEMI जो non-ST elevation MI है. He was on warfarin, metformin, and atorvastatin. The doses are clearly mentioned. What was the background, KG, जब हमने labs किए तो INR? Whenever you see the warfarin, just quickly go for INR. Don't think about anything else. बाकी medicines में भी आप देखो, but warfarin के साथ INR is like so must. The INR was 3.8, and I have mentioned the therapeutic range for AF. It should be 2 to 3. It should not exceed than 3. So, and serum cret, look, 2.5. If serum cret is that much high, that means warfarin की excretion कम हो रही है. That means body में तो toxicity और भी ज़्यादा होगी. So we should see this parameter as well. तो फार्मासिस्ट की हमारी असेसमेंट क्या थी कि जी एलिवेटेड INR है, ब्लीडिंग की रिस्क ज़्यादा हो सकती है, इंटरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, बट द थिंग इज के प्रॉबली जो कॉज है वो है ड्रग डिजीज इंटरेक्शन. क्रेट इज हाई
and maybe that's why warfarin की जो excretion या वो है वो कम हो रही है, and that's why it INR is high. And the next could be atorvastatin की भी थोड़ी सी interaction है which can enhance warfarin's effect. So that could also be a possible cause. So what we recommended was that कि या तो फौरन से warfarin stop करे for 24 hours and check the INR, monitor the INR, या फिर, and when it becomes normal or it becomes in the range, then start with the lower dose, that is half of the 5 milligram. And then again, adjust the dose or go for, if we cannot stop or hold the warfarin, then we should taper it down, and we should hold atorvastatin or also taper down the dose and work on the patient better care. ठीक है? So हमने regularly monitor किया INR every 2 to 3 days and just stabilization. renal function को भी monitor किया कि कहीं creat uptrending पे तो नहीं जा रहा, और ड्रॉप आय के लिए भी हमने फिर इवोल्यूशन की कि इफ़ एंटीकोगुलेशन स्ट्रेटजी को है वो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं, वेदर वो शुड स्विच टू द low molecular weight heparin or to some other anticoagulants or not. So this was, and then we counseled the patient as well कि if you see any bruises or dark stools or such kind of के bleeding की थोड़ी सी भी आपको कुछ symptoms नजर आए, so you should come to the clinic, to the hospital, उसी time आपने आना है. I hope my voice is clear, it's not breaking. Then quickly going, okay, I don't know what happened. Okay. ओके, डोज एडजस्टमेंट की बात आती है तो डोज एडजस्टमेंट तो हम फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. इट्स ऑन इफ यू आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ रीनल फंक्शन, फीड्स की डोजिंग अलग होती है, लिवर की डोजिंग इफ लिवर हेपेटिकली पेशेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है उसकी अलग है. सिमिलरली विद एंटीबायोटिक्स आपने लेवल्स कुछ के करने होते हैं. So a lot of dose adjustment, a pharmacist should be involved in every dose adjustment. So we had this patient again CKD stage 4. EGFR was less than 25, type 2 DM था, hypertension भी थी. अच्छा, the reason for admission was that उनको bacterial infection था because WBC suspected था, because WBC count was super high, fever भी था, febrile था patient, and blood cultures were positive for Staph aureus. The patient started on क्योंकि if it's only Staph aureus, that's fine. But if it is MRSA, then yes, you have to quickly start the therapy. So he was started on vancomycin. The initial dose prescribed was 1 gram every 12 hours, but we have to look at the kidney profile as well. तो अब जो प्रिस्क्राइब डोज है इट एक्सीड सेफ लेवल्स अगर हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस को देखें और उसी की कैलकुलेशन पे जाएं. And vancomycin also in renal impairment, the drug half-life increases. Even I was studying an article, it increases more than 100 hours. So this much increase. So we can even give it on 48 hours ड्यूरेशन दे सकते हैं, फिर या फिर 72 आवर्स गैप भी दे सकते हैं बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस एंड द पेशेंट कंडीशन ऑफ कोर्स. और साथ में हम लेवल्स भी करते हैं, इतना भी ड्रॉप नहीं करना कि थेरेप्यूटिक लेवल से ही लेवल्स ड्रॉप हो जाए. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू मॉनिटर. हाँ, इसमें ज़्यादा सी चीज़ें ये नहीं है कि वी हैव टू गो एंड जस्ट स्टिक टू द गाइडलाइंस, वट एवर द गाइडलाइंस है, चाहे पेशेंट को कुछ भी हो रहा हो. यू हैव टू असेस द पेशेंट एज वेल कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या डिसाइड करना है, क्या डिसीजन लेनी है. ठीक है, तो जो हमने TDM किया, रिकमेंड वेंकोमाइसिन ट्रफ लेवल्स वर 15 to 20 माइक्रोग्राम पर ml फॉर सिवियर इन्फेक्शंस. तो यहाँ पर हमने रीनल वेट, इन्फेक्शन सिवियरिटी, रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी
रीनल फंक्शन, इन सब को देखते हुए हमने जो लोडिंग डोज थी वो इट शुड बी 20-25 milligrams per kg, लेकिन अगर पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन vancomycin देन वी कैन चेंज ओनली मेंटेनेंस डोज, क्योंकि ऑलरेडी ही इज ऑन, तो नो नीड ऑफ लोडिंग डोज. So 15 milligrams per kg every 24 to 48 hours. So ये हमने उनकी dosing change करी थी कि you cannot give 1 gram twice daily, but give it once daily or on every alternate day. So this was it, and then the patient rank levels जो थी वो सारी चीजें accordingly जो थी पेशेंट की कंडीशन के साथ वो मैच कर गई. So this was thing. अच्छा, antimicrobial stewardship में बहुत मजे की चीजें हम कर सकते हैं being a pharmacist. Okay, the time is very short. The first thing, अच्छा जो हम कर रहे हैं antimicrobial stewardship committee बनाई हुई है हमने, तो उसमें what we do, we calculate DDDs, ठीक है, जो हमारे ड्रग डोजेस है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो डेज ऑफ थेरेपीज है, डॉट्स जिसको कहते हैं. हमने अपने कुछ मैट्रिक्स, कुछ KPI सेट कर लिए फॉर एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप. सब पॉइंट प्रिवेलेंस सर्वेज हो गई, एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर दोज. एंड उसी उसके बेसिस पर वी प्रेजेंट द डेटा, और फिर हम अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स किस तरह से डोज को ऑप्टिमाइज करने हैं, डेज ऑफ थेरेपीज को कैसे मैनेज करना है. तो ये चीज़ें, तो if any one of you is practicing in a hospital and want to apply DDDs or DOTS therapies or कुछ भी antimicrobial stewardship के हवाले से करना चाहता है and they need assistance, so yes, they can contact me through my email. Or the Giving Back to Pharmacy team, all the team is available for you all, pharmacists, next generation pharmacists. So these are a few things which we do as antimicrobial stewardship. एंड हमने कुछ अवेयर क्लासिफिकेशन जैसे WHO की हो गई, कुछ हमने completely रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि नो डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब इट until कि हमें पूरा केस सिनारियो क्लियर ना हो. And yes, infectious disease consultant, microbiologist and pharmacist is in the team. So along with the consultant उसको रिव्यू किया जाता है and then वो फिर पेशेंट को दी जाती है. Now for ADR example, this is a very basic example, but मैं ADR का आपको बताऊंगी कि in whichever setup you guys are working, start working on ADR reporting. जिस level से भी आप कर सकते हैं, start working on it, because this is very very important. आप सबको पता होगा thalidomide tragedy का, everyone would know about it, कि how important the reporting is. कितनी लोगों की डेथ हुई, कितने पेशेंट्स उससे वो हुए थे, इफेक्ट हुए थे थैलेडोमाइड. सिमिलरली जो हमारा और भी ऐसे काफ़ी हमारे साथ हिस्ट्री में ADRs के एग्जाम्पल्स हैं जो कि हिस्ट्री बन चुके हैं. सो आई विल क्विकली शेयर वन केस विद यू. ये हमारे पास एक टाइप 2 DM का व्हाट हैपेंड. जी आमना, हेलो. Hi, Dr. Umaima, this is Kamran. Yes, Kamran, is my voice Just, clear? yeah, thank you very much, Doctor. Actually, we are just running short of time. Okay. Okay, perfect. So I'll just conclude it in a minute. Sure. So yes, this is Really, for it's ADR. very interesting. Thank you. Thank Really you very so much. interesting. Thank you. We want to listen to you more and more. It's really interesting. Yeah, you can That's continue, fine. please. Thank you. Okay, Thank you. sure, You can sure. continue. Okay. Just give me a minute. So these are my case reports. I will just go to the last thing, that by intervening, how can you decrease the cost of a patient, or how can you prevent the increase in cost of the patient? And the most important thing which Dr. Siddiqui also shared with you guys, that you have to document each and everything. You should start writing it. You should start publishing your work, because the role of pharmacist, everyone should know about it.
ठीक है? So pharmacists are actually patient safety advocates, therapy optimizers, and healthcare innovators, and leading in personalized medicine, digital health, and global health policy. So key takeaways just ये है कि believe in yourself, and being a pharmacist, we can do and we are doing much more. Just start presenting it, start sharing it, and start doing और भी अच्छा काम करना शुरू करें for the better patient care. And पाकिस्तान में स्पेशली फार्मेसी कम्युनिटी को लोगों को अवेयर कराने के लिए कि who we actually are. If there are any questions, please. Thank you so much. Amna or Kamran, if there are any questions, then okay, Thank let you me very know. much. And if no, then thank you so much. Thank you very much, Dr. Moema, for your insightful presentation and for sharing real-life examples. Now, I would like to invite Mr. Shersha to take over the session. Over to you, Mr. Shersha. Thank you, Ms. Amina, for moderating the previous session so gracefully. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. My name is Muhammad Shersha, a final year PharmD student at the University of Management and Technology, Lahore. And I am honored to be your moderator for this session of the 6th Annual Conference of Giving Back to Pharmacy in Pakistan. It gives me great pleasure to introduce our distinguished speaker, Dr. Tahira Khatun. She is a PharmD with 5 years of experience and is currently pursuing her MPhil in pharmacy practice at Karachi University. She also holds an ASHP certification in anticoagulation and is presently working as a clinical pharmacist at Indus Hospital and Health Network. Today, she will be presenting on the very important topic, real-time interventions, adding value in ICU rounds. Over to you, Dr. Tahira. Dr. Tahira, you may continue. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Dr. Sher, for your kind introduction. Please confirm me, आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. I hope मेरी slides visible हैं. मैम स्लाइड्स विजिबल नहीं है आपकी अब विजिबल है. Just give me a minute. Slides अब show हो रही हैं? मैम स्लाइड शो हो रही हैं, काइंडली आप फुल स्क्रीन इसे कर लें स्लाइड्स को. Okay, let's begin. In this session, I will highlight the critical role of critical care pharmacists and our impact, and demonstrate how our interventions play effective role or important role in ICU settings. Basically, in 2020, the Society of Critical Care Medicine and American College of Clinical Pharmacy describe clinical pharmacists and their roles, which include role in clinical activities, educational activities, scholarly activities, and administrative activities. Basically, a clinical pharmacist involved in multiple activities, which include medical history, evaluating drug therapies, pharmacokinetic monitoring, evaluating parenteral nutrition orders, providing educational services, supervising handling of investigational drugs, and monitoring adverse drug events, and their role in फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी. बेसिकली क्लिनिकल फार्मासिस्ट या अगर आप फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट जो है बहुत कीनली, बहुत क्लोजली इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है डेली बेसिस के ऊपर. आपके आईसीयू के अंदर आपके रोटेशन के दरमियान आप रोज़ाना एक न्यू चैलेंज फेस करते हैं, एक न्यू लर्निंग होती है आपकी.
बेसिकली अगर आप रोल की बात करें क्रिटिकल फार्मासिस्ट के, तो मल्टीपल डोमेन्स हैं क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट के, जिसमें वो रोल प्ले कर रहा होता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है डायरेक्ट पेशेंट केयर का। क्रिटिकल फार्मासिस्ट जो है बेसिकली एक इंटेग्रल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर होता है आईसीयू सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पर आपके कंसल्टेंट्स, आपके रेजिडेंट, आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट, आपकी न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट या आपके फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। उसी तरह क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट एक ऐसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है जो अपनी इंटरवेंशंस के थ्रू जो है पेशेंट लाइफ सेव कर रहा होता है। और बेसिकली जब हम कहते हैं कि पेशेंट लाइफ सेव कर रहा है, तो आईसीयू में वाकई ही आप पेशेंट लाइफ सेव कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास आईसीयू में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन के साथ पेशेंट आ रहा होता है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सेप्टिक शॉक के साथ पेशेंट आ रहा है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, मल्टीपल ड्रग्स चल रही हैं, जिसमें सिडेटिव ड्रग्स हैं, जिसमें एनाल्जेसिक्स चल रहे हैं, पेशेंट को एंटीकोगुलेट्स चल रहे हैं, और मल्टीपल वेजो एक्टिव एजेंट्स चल रहे होते हैं। तो एक आईसीयू में एडमिटेड पेशेंट 15 से 20 मेडिकेशंस ले रहा होता है। अब वो 15 से 20 मेडिकेशन मैनेजमेंट करना आपके क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप एक मेडिकेशन ऑर्डर को जब रिव्यू करते हैं, तो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली आप हर चीज़ मॉनिटर कर रहे होते हैं। आपके पेशेंट की डोज सही है कि नहीं, उसकी डोज एडजस्टमेंट की नीड तो नहीं है। जब आप डोज एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली वो भी मल्टीपल डोमेन्स में डिवाइड हो जाता है। आपका पेशेंट रीनल इम्पेयरमेंट के साथ है, हेपेटिक इम्पेयरमेंट के साथ है, या कोई स्पेशल पॉपुलेशन है जिससे आप डील कर रहे हैं, जैसे कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है या लैक्टेटिंग मदर है। अक्सर हमारे पास आईसीयू में पेशेंट होते हैं जो ओबीज होते हैं। मैं एक रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। पेशेंट आईसीयू में डीवीटी के साथ एडमिट थे, और जो रिकमेंडेशन थी वो अगर आप इनॉक्सापैरिन दे रहे हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट पैरिन, तो 1 mg/kg वीडी, तो पेशेंट की डोज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन रही थी, और उसकी कोई शुरू की फर्स्ट डोजेस में आप कैप ऑफ नहीं कर रहे होते। लेकिन हमारी पॉपुलेशन जो है वो ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा डरती है और थ्रोम्बस से नहीं डरती। तो इस तरह के चैलेंजेस आप अपनी टीम को जो है किस तरीके से अपने रेफरेंसेस के थ्रू आप उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप ड्रग थेरेपी को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, और पेशेंट को भी देख रहे होते हैं, उसके क्लिनिकल स्टेटस को भी देख रहे होते हैं। इसके अलावा ना सिर्फ आप डोज एडजस्टमेंट करवा रहे होते हैं, आप पेशेंट की मेडिकेशन रिजीम को डिज़ाइन करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी एडीआर जो कि एक्सपेक्टेड होता है, आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आप उसे अगर अगर हो रहा है तो आप उसे टाइमली आइडेंटिफाई करके उसे मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट पेशेंट केयर के अंदर ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। ना सिर्फ पेशेंट केयर और ना सिर्फ डोज कैलकुलेशन और डोज एडजस्टमेंट, आप एज अ क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट मेडिकेशन सेफ्टी इनिशिएटिव्स ले रहे होते हैं बहुत सारे। इन केस अगर कोई इवेंट होता है, या कोई एडीआर या कोई मिसहैप अगर होता है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, और फ्यूचर में उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। आप किस तरह की इनिशिएटिव्स या किस तरह की मैनेजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कि उन चीज़ों को रोका जा सके। किस तरह की एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस डिज़ाइन कर सकते हैं जो जिससे आप लोगों को एजुकेट कर सकें और उन एरर्स को फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। A critical care pharmacist is also involved in education and training. अब जब आप education and training की बात करते हैं, तो उसमें आपके fellow pharmacists आते हैं, आपकी नर्सिंग टीम आ जाती है, आपके रेजिडेंट्स आ जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन डिस्कशन। बेसिकली जब आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद भी सीख रहे होते हैं, आपको भी पढ़ाया जा रहा होता है, और आप भी, मतलब हम अपनी अपनी नॉलेज लेकर जो है आप इन सारे लोगों से शेयर कर रहे होते हैं, और इनसे भी बहुत सारी चीज़ें आप ड्यूरिंग राउंड सीख रहे होते हैं। डोज कैलकुलेशन से अगर थोड़ा सा बाहर आए, या एजुकेशन और उससे एजुकेशन से हट के बात करें, तो रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट की, क्योंकि डेली बेसिस पे हम जिस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, अक्सर रेफरेंसेस नहीं मिल रहे होते हमें, अक्सर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं मिलेगा, तो हमें उसके अंदर जो है ना अपने केसेस को, या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ हमने एनकाउंटर की है जो आपको लगता है कि रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसका डेटा मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर भी क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर सकता है। आप जो भी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व किया, तो एटलीस्ट उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है।
बेसिकली क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट या फार्मासिस्ट एक ब्रिज होता है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। और इसके अलावा अ क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट कैन ऑल्सो हेल्प अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप देयर स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज विच कैन दे यूज इन ICU फार्मेसी सर्विसेज। अच्छा, other than research and education and training, critical care pharmacists also play administrative roles. They can participate in pharmacy and institutional committees overseeing critical care medications. They also support formulary decisions and management of critical care medication supply and cost containment. जहाँ आप ICU की बात करते हैं, ओवरऑल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ICU के नंबर ऑफ बेड्स तो कम होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है वो ICU सेटिंग्स पर ही लग रही होती है, आपके ICU वार्ड्स ICU डिपार्टमेंट पर ही इन्वेस्ट हो रही होती है। उसका रीज़न ये होता है कि आपका पेशेंट जो है वो वेंटिलेशंस पे होता है या मल्टीपल मेडिकेशंस पे जा रही होती है या ICU स्टे प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट जो है जब थॉरली मेडिकेशन ऑर्डर को रिव्यू करेगा तो ये चीज़ ज़रूर देखेगा कि जब जो मेडिकेशन थेरेपी आप दे रहे हैं क्या वो रैशनल है कि नहीं, कहीं कोई ऐसी पॉलीफार्मेसी तो नहीं चल रही है, कहीं कोई इरेशनल ड्रग तो नहीं यूज़ हो रही, या आप कोई थेरेप्यूटिक कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हैं जो कि रिलेटिवली उतना कॉस्टली ना हो। तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जहाँ पे आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ओके, जब आप बात करते हैं रोल्स की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। मैं डॉक्टर उमैमा से बिल्कुल अग्री करूंगी कि अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि अच्छा आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं तो आपका काम तो डोज एडजस्टमेंट है, आप मेरे डिसीजन को क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो उस टाइम पॉइंट पे आपको इस चीज़ को टैकल करना जो है वो बहुत आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली आप उनकी जो क्वेरीज होती हैं इससे रिलेटेड कि हम क्यों क्वेश्चन करते हैं या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या हम क्यों उस सवाल को कर रहे हैं, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा ये सवाल हम बहुत फेस करते हैं बेसिकली। तो ये भी एक चैलेंज है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को शो कर रहे हैं। जब आप अपनी एग्जिस्टेंस को शो करते हैं या आप रेजिस्ट करते हैं, किसी के डिसीजन को अपोज करते हैं, तो बहुत रिस्पेक्टफुली हम अपने रेफरेंसेस लेकर जाते हैं और अपनी सजेशंस दे रहे होते हैं और वो उस चीज़ को सुनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाला एलिमेंट ज़रूर आता है कि आप कौन हैं हमसे सवाल करने वाले। खैर, ये वाली चीज़ जब आप परसिस्टेंटली जाते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ICU में पॉलीफार्मेसी बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही होती है क्योंकि मल्टीपल मेडिकेशंस पे चल रहा होता है पेशेंट। सिवियरिटी ऑफ इलनेस बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर पेशेंट सेप्टिक शॉक के साथ आता है, सीजर्स के एपिसोड के साथ होता है, मल्टीपल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स चल रही हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी हो रही होती है। अक्सर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है क्योंकि तमाम कैंपसेस में या तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट जो है वो फेस कर रहा होता है ICU सेटिंग के अंदर। इसके अलावा आपका पेशेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के साथ। क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ मेडिकेशंस हैं तो हाई रिस्क मेडिकेशन एरर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा वर्कलोड एंड रिसोर्स लिमिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैनेजिंग अप टू डेट नॉलेज एंड स्किल्स में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप ICU में हर दिन आपको कुछ नया सिखा के जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलते हैं। तो उस चैलेंजेस के साथ या उस टीम के साथ शाना बशाना चलने के लिए या अपनी वर्थ को प्रूफ करने के लिए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सरअंजाम देने के लिए ये जिम्मेदारी होती है क्रिटिकल फार्मासिस्ट की कि वो अपनी नॉलेज को गाए बगाए टाइम टू टाइम जो है अपडेट करते रहे। मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास ऑनलाइन ऑन साइट ऑप्शंस होते हैं या डेली बेसिस पे आप जो है अपडेटेड गाइडलाइंस रिव्यू कर रहे होते हैं। लास्ट आप जो है इंटीग्रेशन इनटू क्रिटिकल केयर टीम में जहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स अवेलेबल मतलब फिजिशियन अवेलेबल है, जहाँ पे नर्सेज अवेलेबल है, वहाँ पे क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है लेकर आना और एग्जिस्ट करना और उस जगह रहकर जो है रेजिस्ट करना जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। अच्छा, अगर आप बात की जाए कि वर्क फ्लो क्या होता है क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट का, तो बेसिकली हम अपने राउंड्स को 3 मेजर पोर्शंस या 3 मेजर डोमेन्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट का जो डेली हॉस्पिटल पहुंचने के बाद
राउंड स्टार्ट होने से पहले का जो 1 घंटा होता है, उसमें सबसे पहले आप पेशेंट के मेडिकेशन ऑर्डर को थॉरली रिव्यू करते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने पेशेंट को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप उसके मेडिकेशन थेरेपी को नहीं असेस कर सकते, आपसे एवेल्युएट नहीं कर सकते कि मेडिकेशन सही जा रही हैं कि नहीं, क्या उसमें किसी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, क्या पेशेंट कोई ड्रग एडवर्स इवेंट एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो जो आपके पास 1 घंटा होता है शुरू का, उसमें आपको अपने पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। बेसिकली अक्सर हॉस्पिटल्स में आपके पास जो है वो ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं, HMIs के थ्रू आप रिव्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जब रिव्यू कर रहे होते हैं, उसके बाद आप राउंड अटेंड करते हैं। राउंड में आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो जो कुछ भी आपकी सजेशंस होती हैं, आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं, वो आप शुरू के 5 मिनट के अंदर, इनिशियल 5 मिनट्स में आप वो डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ, अपनी इंटरवेंशंस को या अपनी रिकमेंडेशन को गाइडलाइंस की बेसिस पे या एविडेंस की बेसिस पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप जस्टिफाई करते हैं तो कंसल्टेंट या आपकी टीम जो है वो आपकी उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड पार्ट ये होता है कि पोस्ट राउंड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो पोस्ट राउंड भी जो आपने रिकमेंडेशन दी होती हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो गई, क्या वो सही इम्प्लीमेंट हुई, ये सारी चीज़ें आप पोस्ट राउंड देख रहे होते हैं। जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया, तो 1 आवर प्री राउंड प्रोसेस। तो बेसिकली इसमें आप जो है शुरू के 1 आवर में आप 10 to 15 पेशेंट्स रिव्यू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली आप 10 to 15 पेशेंट्स तक रिव्यू कर सकते हैं। अब रिव्यू करते हुए आपको मेडिकेशन ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें रिव्यू करनी है। तो बेसिकली ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने सिंपली मेडिकेशन ऑर्डर रिव्यू कर लिया, डोज करेक्ट है, ग्रुप ठीक है। आप बेसिकली पेशेंट की तमाम कोमॉब्स को और उसकी तमाम इंडिकेशंस को, सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में जाके देख रहे होते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको रिव्यू करनी है, तो उसमें सबसे पहले आती है इंडिकेशन रिव्यू। जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है, क्या वो इंडिकेटेड है। सपोज अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास पेशेंट आता है हाइपोकैलिमिया के साथ, और आपने एडवाइस कर दिया कि ठीक है पोटेशियम क्लोराइड ओरल ऐड कर देते हैं, सिरप पर पेशेंट रहेगा। लेकिन अगर वो अनअटेंडेड चलता रहे और एक टाइम ये आता है कि पहले आप हाइपोकैलिमिया को ट्रीट कर रहे होते हैं, उसके बाद अगले कुछ दिनों में आप हाइपरकैलिमिया को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो डेली बेसिस पे मेडिकेशन ऑर्डर को क्रिटिकली इवेल्युएट करना चाहिए कि आज इस ड्रग की नीड है कि नहीं, आप क्या आप इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। इसमें मल्टीपल एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स आ जाते हैं, PPIs हैं, इसके अलावा एल्ब्यूमिन, स्टीरॉइड्स पे, या वो तमाम कॉस्टली मेडिकेशन जो पेशेंट यूज़ कर रहा होता है, उसकी आप इंडिकेशन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। सेकेंड, मेडिकेशन सिलेक्शन एंड डोजेज एडजस्टमेंट। जैसा मैंने कहा कि आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स पेशेंट आता है, आपका पेशेंट ओबीस हो सकता है, आपका पेशेंट अंडरवेट हो सकता है, आपका पेशेंट जो है वो हेपेटिक रीनल इम्पेयरमेंट के साथ आ सकता है, डायलिसिस पे हो सकता है। तो आपकी डोज एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप कह रहे हैं कि आपका पेशेंट डायलिसिस पर है, हीमोडायलिसिस पर है या पेरिटोनियल डायलिसिस पर है, तो इस तरह के पेशेंट के अंदर आप नॉर्मल डोजेस नहीं यूज़ कर रहे होते। इनके लिए इनकी एज पर हीमोडायलिसिस कौन सी डोज जानी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। CRRT पे पेशेंट है तो उसकी डोज भी डिफरेंट होगी। तो अपने पेशेंट को देखना समझना बहुत ज़रूरी होता है और उसकी इंडिकेशन को जज करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर हम ICU में वाली चीज़ बहुत ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि पेशेंट आया, मेरोपनम 1 ग्राम TTS से स्टार्ट हो गई, लेकिन पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस पे था, तो आपकी जो डोज एडजस्टमेंट है वो एज पर पेरिटोनियल डायलिसिस गाइडलाइंस चेंज हो जाएंगी। अक्सर ड्रग्स होती हैं जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है उनका, और वो आपके लो फ्लक्स डायलाइजर से क्लियर आउट नहीं हो पाती हैं अगर आपका पेशेंट डायलिसिस पे। तो वहाँ पर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डोज एडजस्टमेंट को देखें, आप TTM को फॉलो करें ताकि आप अप्रोप्रिएट डोज दे सकें पेशेंट को। इसके अलावा कोर्स एवेल्युएशन, कितने टाइम पीरियड के लिए कोई ड्रग कंटिन्यू होनी चाहिए, क्या उसका रैशनल बन रहा है, क्या वो डिसकंटिन्यू हो सकती है अब, या किन सर्कमस्टांसेस में वो स्टार्ट की गई थी। ड्रग रिलेटेड ADRs बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाते हैं ICU सेटिंग में। अक्सर पेशेंट मल्टीपल ड्रग्स पे होता है, मेरोपनम पेशेंट को चल रही है, कार्बापेनम चल रही है, साथ में फिट्स की हिस्ट्री या पेशेंट को सीजर्स हुए और
वेल्प्रोइक एसिड स्टार्ट करा दी गई। तो एज वी ऑल नो वेल्प्रोइक एसिड एंड मेरोपनम का मेजर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होता है, आप साथ नहीं दे सकते। वेल्प्रोइक एसिड जो है वो कार्बापिनेंस के सीजर थ्रेशोल्ड को भी इंक्रीज कर देती है। तो इसके अलावा इसी तरह जब आप आईसीयू में थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस दे रहे होते हैं तो अक्सर हम किताबों में पढ़ते थे कि जो है हाइपरकेलेमिया हो रहा होता है इनॉक्सापैरिन से या हेपारिन से। तो ये सारी चीज़ें आप पेशेंट के अंदर भी देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और इनको मैनेज कर रहे होते हैं साथ साथ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीडीएम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग की जा रही होती है, नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग की, हाई रिस्क मेडिकेशंस की, एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव्स के लिए आप मॉनिटर कर रहे होते हैं पेशेंट को एडीआरस के लिए, ओवरडोज तो नहीं हो रहा, पेशेंट अंडरडोज तो नहीं है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस, कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम सबको देखना पड़ता है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे लो मिडिल इनकम कंट्री में। ओके अब अगर बात की जाए ड्यूरिंग राउंड, तो ड्यूरिंग राउंड जो भी आपने रिकमेंडेशंस दी हैं आप उन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बेसिस के ऊपर जस्टिफाई करते हैं। आपको अपनी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लेकिन सिंप्लीफाइड होने के साथ साथ वो उन्हें एविडेंस बेस्ड होना चाहिए ताकि आप उसे कोट कर सकें, आप उसे जो है वो उसे रिलायबल सोर्स से लेकर आप उसे इम्प्लीमेंट करवा सकें। पोस्ट राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब आपने इंटरवेंशंस एडवाइस कर दी, डिस्कस कर ली, अब जो थर्ड स्टेप है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। तो पोस्ट राउंड एज अ क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट आपको देखना चाहिए कि आपने जो इंटरवेंशन सजेस्ट की थी क्या वो इम्प्लीमेंट हुई हैं, क्या वो सही इम्प्लीमेंट हुई हैं। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन से अगर आप आगे जाते हैं तो क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट जो है वो एज मतलब ड्रग कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। आपके पास मल्टीपल कॉल्स आती हैं ड्रग रिलेटेड क्वेरीज के से रिलेटेड, न सिर्फ आपके ड्यूटी आवर्स में बल्कि पोस्ट ड्यूटी आवर्स के अंदर भी। इसके अलावा क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट जो है वो मेडिकेशन रिकन्सिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एजुकेशन ऑफ मेडिकेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में काफ़ी हेल्प आउट कर रहा होता है और पोस्ट आईसीयू फॉलोअर्स भी परफॉर्म करता है। Okay. Now I will share a case study. Basically, a 56-year-old female patient थी, known case of hypertension for last 10 years, CKD secondary to obstructive uropathy since 2016, functional class 3 due to bilateral knee osteoarthritis, presented in ER with complaint of decreased urine output, worsening shortness of breath for last 2 days, generalized body ache, decreased oral intake for 15 days. अब पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंशन लेकर आ रही हैं, सीकेडी ऑलरेडी नोन केस है यानी रीनल इम्पेयरमेंट भी है, पेशेंट को बायलेटरल ऑस्टियोनियार्थराइटिस था, ठीक है। अब करंट कंप्लेंट्स में मुझे डिक्रीज यूरिन आउटपुट मिल रहा है, एसओबी मिल रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी जो कॉमॉर्ब्स हैं उससे कोरिलेट कर रही हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जनरलाइज बॉडी एक और डिक्रीज ओरल इंडेक्स। अब हुआ ये कि पेशेंट ईआर में लैंड की इन सारी कंप्लेंट्स के साथ, नेफ्रोलॉजी को ईआर में जो है वो ऑन बोर्ड ले लिया गया और नेफ्रोलॉजी ने सबसे पहले आके मेटाबॉलिक एबीजीज कराई और एबीजीज में हमें नजर आया कि पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है। इन सारी सिचुएशन को देखते हुए, उसके रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस को देखते हुए पेशेंट के एयरवे को सिक्योर करने के लिए उसे इंट्यूबेट कर दिया गया ईआर में। बेसिकली उस टाइम पे क्वेरी बनाई गई पेशेंट की AKI ओवर CKD सेकेंडरी टू UTI। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस को हम मैनेज कर रहे थे, हमने इंट्यूबेट कर दिया पेशेंट की, क्योंकि वॉल्यूम ओवरलोड में था, CKD का पेशेंट था, इमरजेंसी में फॉरन DL लाइन पास की गई, पेशेंट के 2 सेशंस किए गए हीमोडायलिसिस के। एज यू ऑल नो क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर पेशेंट को एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होता है, आपकी किडनी जो है वो प्रॉपर इरिथ्रोपोइटिन नहीं बना रही होती जिसकी वजह से पेशेंट एनेमिक हो जाता है। तो सेम आर पेशेंट वाज आल्सो एनेमिक। उस टाइम पर पेशेंट को 2 पैक सेल ट्रांसफ्यूज किए गए, CKD का वर्कअप भेजा गया और हेमेटोनिक्स और एरिथ्रोपोइटिन स्टार्ट किया गया। जब आप CKD वर्कअप की बात करते हैं तो CKD वर्कअप के अंदर फॉस्फेट भेजा गया और फॉस्फेट रिपोर्ट हुआ 12 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई था। कैल्शियम लेवल वॉज 11। फॉस्फेट को देखते हुए ER में ही फॉस्फेट बाइंडर स्टार्ट कर दी गई, लोफोस बेसिकली कैल्शियम एसिटेट स्टार्ट कर दिया गया एज अ फॉस्फेट बाइंडर। नेक्स्ट ID को बुलाया गया तो ID ने सबसे पहले आके कल्चर्स एडवाइस किए और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेरोपनम स्टार्ट किया गया और वैंकोमाइसिन स्टार्ट कर दी गई।
पेशेंट ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। पेशेंट को बेसिकली ER से MICU शिफ्ट कर दिया गया और पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उसके जो TLC काउंट था वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में था। पेशेंट की नॉरेट सपोर्ट जो ये MICU में स्टार्ट की गई थी वो रिड्यूस होने लगी और पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर दिया गया फोर्थ डे के ऊपर। लेकिन जो यूरिन कल्चर 4th और 5th डे पर एक यूरिन कल्चर रिपोर्ट हुआ जिससे पता चला कि पेशेंट के यूरिन CS के अंदर E. coli है जो कि सेंसिटिव टू मेरोपनम था। मीरो को कंटिन्यू कर दिया गया। अब इनिशियल कल्चर्स रिपोर्ट होना शुरू हुए तो पता ये चला कि ब्लड CS के अंदर मर्सा ग्रो कर रहा है। तो उस टाइम पॉइंट पे हम डील कर रहे थे E. coli से और मर्सा से। तो मेरोपनम एंड वैंकोमाइसिन वाज कंटिन्यूड ऑन बेसिस ऑफ दिस कल्चर। पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा था। पेशेंट जो है नॉरेट सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो गई, फ्लूइड रिस्पॉन्सिव था। लेकिन जब 6th डे आया तो 6th डे ऑफ एडमिशन पे पेशेंट ने सडन ऑनसेट ऑफ हाइपोटेंशन डेवलप किया। फ्लूइड रिस्पॉन्सिव था। उस टाइम तक फ्लूइड रिससिटेशन की गई। नॉरेट सपोर्ट जो है जो पहले कम होने लगी थी अब आपको जो है दोबारा जो है उसे ऑप्टिमाइज करना पड़ा। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और कल्चर्स भेजे गए। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी रेस मिले। CRP वॉज 279। प्रोकैल्सिटोनिन रेस था एंड पेशेंट को हाइड्रेट फीवर की स्पाइक्स आ रही थी। उस टाइम पर कल्चर्स भेजने के बाद हम ऑलरेडी मेरोपनम दे रहे थे, वैंकोमाइसिन दे रहे थे। अब हमारे पास सस्पेक्ट किया गया है कि कोई पेशेंट ने कोई ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन एक्वायर किया है जिसके लिए कोलेस्टिन से लोड कर दिया गया पेशेंट को। ओके, तो यहाँ पर अब तक हम फाइट कर रहे थे E. coli से और मर्सा से। लेकिन नेक्स्ट डे जो कल्चर्स रिपोर्ट हुए उसमें ये पता चला कि पेशेंट की जो लाइन साइट है वहाँ पे कैंडिडा ग्रू कर रहा है, कैंडिडा एल्बिकन्स। तो फंगीमिया भी है अब पेशेंट को। पॉलिस्टिन और वैंकोमाइसिन को स्टॉप किया गया क्योंकि ऑलरेडी मर्सा का जो एक्चुअली कंटिन्यू किया गया था वैंकोमाइसिन को उस टाइम पॉइंट पे। लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ तो हमने वैंकोमाइसिन को डिसकंटिन्यू किया और सिर्फ हमने कैंडिडा के ट्रीटमेंट के लिए कैस्पोफंगिन को कंटिन्यू किया। कैस्पोफंगिन स्टार्ट कर दी गई। DL लाइन जो कि सोर्स था, सोर्स को रिमूव कर दिया गया और 7th डे ऑफ एडमिशन पे पेशेंट को ICU इंड्यूस साइकोसिस डेवलप हो गया। ICU इंड्यूस साइकोसिस के लिए क्यूटिपिन ऐड की गई थी। ठीक है, अब तक E. coli है, मर्सा है जो कि ट्रीट हो गया था। आपने उसको उसके लिए फंगीमिया हुआ पेशेंट को, उसके लिए एंटीफंगल स्टार्ट करा दी गई। अब 10th डे ऑफ एडमिशन के ऊपर जो ब्लड CS था वो फिर से पॉजिटिव आया स्टीनोटोफोमोनास के लिए, जिसके लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया जिसमें सेप्ट्रान और लीवोफ्लॉक्सासिन था इन रीनल रजिस्टर्ड डोसेस। अब ना सिर्फ इन्फेक्शन से डील कर रहे थे, एक प्रॉब्लम और एनकाउंटर की गई। पेशेंट को अल्ट्रासाउंड राइट अपर लिम्ब कराया गया जिसमें देखा गया कि पेशेंट को थ्रोम्बस है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है आपकी ब्रैकियोसेफलिक वेन तक। अब यहाँ पर उसको ट्रीट करने के लिए इनॉक्सापैरिन एडवाइस किया गया 1 मिलीग्राम पर kg OD से। जैसा कि हम सबको पता है कि आपके वो तमाम पेशेंट्स जो कि हीमोडायलिसिस के होते हैं या रीनल इम्पेयरमेंट के होते हैं उनमें इनॉक्सापैरिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। बेसिकली लेस देन 30 ml पर मिनट पर इनॉक्सापैरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाती है और ये पेशेंट ऑलरेडी हीमोडायलिसिस पे था तो इनॉक्सापैरिन बिल्कुल भी एक अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली मैं डिस्कस करना चाहूँगी एज अ क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट हमने क्या इंटरवेंशंस की। अपॉन कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन रिव्यू, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आइडेंटिफाइड सम की इंटरवेंशंस। नंबर 1 वाज एंटी फंगल थेरेपी। कैस्पोफंगिन स्टार्ट की गई लेकिन जब कल्चर्स रिपोर्ट हुए तो देखा गया कि कैस्पोफंगिन सेंसिटिव तो है लेकिन आपके पास कुछ चीपर ऑल्टरनेटिव्स भी थे जिसमें आपकी एजोल्स हैं जो कि चीपर तो है लेकिन इफेक्टिव भी हैं। तो फ्लूकोनाजोल से सेंसिटिविटी थी तो कैस्पो एज आर पेशेंट इज CKD। तो क्योंकि फ्लूकोनाजोल हम सब जानते हैं एजोल से पैटोटॉक्सिक होते हैं लेकिन साथ साथ फ्लूकोनाजोल की जो क्लियरेंस होती है वो रीनल रूट के थ्रू होती है। तो फ्लूकोनाजोल को उस टाइम के ऊपर हमने रीनली एडजस्ट कराया। बेसिकली मेडिकेशन ऑर्डर में 200 मिलीग्राम फ्लूकोनाजोल OD में एडिट की गई। जब क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने रिव्यू किया तो पता ये चला कि फ्लूकोनाजोल से लोड ही नहीं किया गया। तो सबसे पहले पेशेंट को फ्लूक से 800 मिलीग्राम लोडिंग डोज से लोड कराया गया
और मेंटेनेंस डोज ऐड की गई 400 मिलीग्राम ऑन डायलिसिस डे एंड 200 मिलीग्राम ऑन नॉन डायलिसिस डे. सेकेंड इंटरवेंशन वॉज GI प्रोफाइलेक्सिस. MICU के अंदर या सर्जिकल ICU के अंदर स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस रिकमेंडेड होता है बेसिकली उन पेशेंट्स के अंदर जो कि जिनका प्रोलॉन्ग लेंथ ऑफ स्टे होता है या जो रिस्क पर होते हैं बेसिकली. तो दिस पेशेंट वाज ऑन हाइड्रोकॉर्टिसोन स्ट्रेस डोजेस. तो ये एक रिस्क फैक्टर था जिसके लिए GI प्रोफाइलेक्सिस मिसिंग था मेडिकेशन ऑर्डर से. तो अपॉन रिव्यू क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने GI प्रोफाइलेक्सिस को मेडिकेशन ऑर्डर में एंटर करवाया. एंटीकोगुलेशन मैनेजमेंट. एंटीकोगुलेशन को मैनेज बेसिकली इस तरह किया गया कि इनॉक्सापेरिन क्योंकि एक अप्रोप्रिएट चॉइस नहीं थी, पेशेंट ब्लीड कर सकता था. इसके अलावा जो आपके रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी यूरीमिया की वजह से यूरिमिक डिसफंक्शन होता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन हो रहा होता है. तो ये वाली पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा प्रोन होती है ब्लीडिंग के लिए. तो हमने इनॉक्सापेरिन को स्विच करवा दिया एपेक्साबान पे, डोएक्स पे. अब यहाँ पे एक चैलेंज मैं कहूँगी या एक हर्डल में ये कहूँगी कि कंसल्टेंट का पॉइंट ये था कि हम एपेक्साबान पे इसलिए नहीं स्विच करना चाहते क्योंकि आपके पास एपेक्साबान का कोई एंटीडोट नहीं है, जबकि इनॉक्सापेरिन का हमारे पास एंटीडोट है, हम प्रोटामाइन यूज़ कर सकते थे. यहाँ पर मुझे अपनी गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस लेकर उनसे डिस्कस करना पड़ा जिसको उन्होंने बिल्कुल कंसिडर किया. बेसिकली एपेक्साबान एक ऐसी ड्रग है जो रीनली सेफर है जिसका ब्लीडिंग पोटेंशियल बहुत कम है. तो इस आपकी जो गाइडलाइंस है, जो रिकमेंडेशन है, वो इस तरह आपकी हीमोडायलिसिस वाली पॉपुलेशन में रिकमेंड करती है कि आप डोएक्स की तरफ जाएं क्योंकि एक सेफर ऑप्शन, एक सेफर ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है. अब नेक्स्ट पॉइंट उनका ये था कि वो कंसल्टेंट जो है बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते थे. रीनल फंक्शन था, पेशेंट ब्लीड कर सकता था. इस वजह से उनका पॉइंट ये था कि हम 10 मिलीग्राम BD से लोड नहीं करेंगे, हम 5 मिलीग्राम BD से लोड करके फॉर 7 डेज 5 मिलीग्राम BD, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है लेकिन खैर 7 मिलीग्राम BD से उन्होंने लोड किया और 5 मिलीग्राम BD डोज को कंटिन्यू किया. ओके, फोर्थ पॉइंट इज लैब बेस्ड एडजस्टमेंट. जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया कि पेशेंट का फॉस्फेट 11 का था और पेशेंट को फॉस्फेट बाइंडर स्टार्ट करवाना था और लोफोज से स्टार्ट की गई. लोफोज बेसिकली एक कैल्शियम बेस्ड फॉस्फेट बाइंडर है और जो कि फर्दर जाके आप पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया करा सकता है और पेशेंट बॉर्डर लाइन पर है. तो इस तरह के पेशेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेविलामेर. ओके, इसके अलावा आप बहुत सारी थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं जिसके अंदर आपकी वैंकोमाइसिन की TDM चल रही होती है. वैंकोमाइसिन वाज लोडेड विद 750 मिलीग्राम फॉलोड बाय 1 ग्राम BD. तो यहाँ पे क्योंकि पेशेंट आपका हीमोडायलिसिस पर था तो डोज को चेंज किया गया BD से 1 ग्राम 48 आवर्ली में और पेशेंट के ट्रफ लेवल्स भेजे गए. ट्रफ लेवल्स में हमारा यूजली टारगेट होता है 15 to 20 का. तो क्योंकि 19 माइक्रोग्राम पर ml के लेवल थे तो हमने सेम 48 आवर्ली फ्रिक्वेंसी को कंटिन्यू किया. जब आप ड्रग इंटरेक्शंस की बात करते हैं, क्योंकि मल्टीपल मेडिकेशन ऑर्डर्स, मल्टीपल ऐसी मेडिकेशन चल रही थी जो कि QTC प्रोलॉन्ग करवा सकती थी. जैसे कि पेशेंट को स्टीनोट्रोफोमोनास था, उसके लिए लीवो और सेप्ट्रान स्टार्ट कराई गई थी. तो लीवो का पोटेंशियल है QT प्रोलॉन्गेशन के लिए. क्यूटाइपीन हाई रिस्क ड्रग है फॉर QTC प्रोलॉन्गेशन. फ्लूक में ऑल्सो कॉज QTC प्रोलॉन्गेशन. तो यहाँ पे आपके पास 3 ड्रग्स ऐसी आ गई जो कि QT प्रोलॉन्गेशन करवा सकती थी. तो यहाँ पे हमने क्यूटिपीन को स्विच करवा दिया ओलेंजापीन पे क्योंकि ओलेंजापीन का पोटेंशियल एज कम्पेयर टू क्यूटिपीन बहुत कम है. तो एक सेफर ऑप्शन ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल था तो हमने ओलेंजापीन पर इसको स्विच करवा दिया. फ्लूकोनाजोल लीवोफ्लॉक्सासिन को हम सिर्फ रीनली एडजस्ट कर सकते थे ताकि ड्रग की कम्युलेशन ना हो और ADRs को जो है कंट्रोल किया जा सके. तो हमने लीवोफ्लॉक्सासिन को 500 mg 48 आवर्ली के अंदर एडजस्ट करा दिया. थैंक यू सो मच. ओके, Thank you very much, Thank you so Dr. much. Tahira Khatun. Yeah, Duria, please. Thank you very much, Dr. Tahira Khatun.
Thank you very much for the detailed about your topic. Really well presented, and we really like it. Alhamdulillah, thank you very much for coming and presenting on giving back to Pharmacy in Pakistan platform. I would like to invite our next moderator to please come and moderate the next session. Sayyida Gulsha, please. Thank you, Ms. Tahira, for such an insightful session. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Sayyida Gule Zehra. I'm a final year student from UMT School of Pharmacy, and I'm extremely delighted to be moderating today's session for the 6th Annual Innovation in Pharmacy Conference. Our next session focuses on the transition from emergency to ICU. To shed light on such an imperative topic, we have Mr. Syed Uzair Saghir joining us today. Mr. Uzair Saghir completed his pharmacy degree at University of Lahore. He is currently working as a critical care and infectious disease clinical pharmacist at a specialized transplant hospital. He has served as the Secretary for Antimicrobial Stewardship Program and has also contributed as a preceptor for pharmacy internships, actively mentoring the next generation of pharmacists. Mr. Uzair has a special interest in critical care and transplant medication and infectious diseases, and his expertise focuses on optimizing antimicrobial use and improving outcomes in high-risk patients. Over to you, sir. Thank you so much. Let me share. Thank you so much, Kulezara, for the introduction. Is my screen visible or not? Yes, sir, it's visible. So, thank you so much for the introduction, and thanks for the opportunity from Giving Back to Pharmacy Pakistan, Sarana Kamran, Dr. Muhammad Siddiqui, to present in this prestigious forum. Jazakallah khair. So, without wasting any time, let's start the presentation. The topic of my presentation is From Chaos to Control, Pharmacists Bridging ER to ICU Transition. So vision is clear and power pharmacists for the better healthcare. ER to ICU. When a patient crosses from ER to ICU, the survival depends not only on technology and physicians, but on seamless medication management. Pharmacists stand at this bridge, preventing harm, optimizing therapy, and ensuring that no detail is lost in the handoff. From chaos to control, that is the true value of our profession. ER में होता क्या है कि ER के अंदर you have critically ill patients. So when a critically ill patients land at ER, say for example the patients are in septic shock and massive PE, cardiac arrest, doctors are intubating, suppressors, inotropes. So there's a chaotic environment. So what makes that chaotic environment, controlled environment, is the inclusion of the proper professionals, doctors, pharmacists, nurses, and RTs. So my topic is From Chaos to Control, Pharmacists Bridging ER to ICU Transition. Why this topic matters? So when you are transferring the patient from ER to ICU, when the patient lands in ER, you have stabilized the patient. When you are transferring from ER to ICU, 25-50% of the medication errors occur at transition of care. Patients are unstable, therapy complex, documentation are incomplete. There is no medication reconciliation. So pharmacists are the uniquely positioned to close these gaps. These are the gaps that really can, compromise the patient care. हम लोग जब ER से ICU में patient को transfer कर रहे होते हैं, तो patient की continuity of care बहुत जरूरी होती है. That's where the transition matters. So what are the challenges? High patient acuity, there's a lot of time pressure, there are multiple prescribers, incomplete or rapid changing histories.
emergent interventions, intubations, vasopressors before the full reconciliation. There are a lot of polypharmacy, high alert medications, sedatives, anticoagulants, antimicrobials, and there are a lot of communication gap during handoff. Again, when a critically ill patient moves from ER to ICU, clinical information can be lost, therapy can be delayed, duplicated medication errors are common, which can lead to the poor prognosis, ICU readmissions, and trust me, it increases the mortality of the patients from 50 to 100%. So what is the transition of care? How you do the pharmacist-led transition of care? We'll go through in detail of these all the points and we'll go through whole case. Best practices, structured models. आपके पास एक proper structured model होना चाहिए to hand off to the ICU people. Bar or IPAS, we'll discuss this in detail with a proper pharmacy component. Whenever a patient comes, lands in an ER, you should have a medication checklist, you should have a proper safety checklist. You document the allergies, document the medication reconciliation, you check the anticoagulation status, you check the sedation analgesic plan if the patient is intubated, and you do a number of we'll discuss. Pharmacist-led transition of care protocols. When you have stabilized the patient and you are transferring the patient from ER to ICU, the pre-ICU transfer hurdle is very important, which includes doctors, pharmacists, nurses. ER-based patient reconciliation flag is another very important thing. ER के अंदर proper medication flags होते हैं to document the allergies, to document the anticoagulation status, कि patient को have you started the DVT prophylaxis or not, if there are any pending cultures, flags, there should be flag, are there any documented allergy, then the flag should be there. Quality metrics, time to dose first of the antibiotics in sepsis. We all know that in sepsis, every hour delay increases the mortality from 7 to 10%. And it's very important to dose appropriately. Number of medication errors averted and ICU length of stay and the readmission increases if there is no transition of care. So you make sure that you get proper transition by doing everything. What did the literature say or risk says? Impact of pharmacist involvement in the transition care. So if there is pharmacist involved in transition, faster antibiotic delivery in the sepsis, and there are very less number of fewer medication dependencies at the transfer. Now let's go to a case and discuss all these things in detail. We know every hour of antibiotic delay in sepsis increases the mortality by 7 to 8%. Now imagine a patient arriving in septic shock and the pharmacist is the one ensuring the first dose. It's the win in under 15 minutes, 45 minutes. Let me walk you through the case. अच्छा, आप लोगों को मैं सबको मैं ये कहूँगा कि हम लोग ट्रांजिशन ऑफ केयर को समझते हैं कि हम लोगों ने जस्ट पेशेंट अपनी बताई जी ये मेडिकेशंस ले रहा था, ये एलर्जीज थी, ये ER फ्लैग्स थे. There is much more to communicate to the ICU personals for the proper continuity of the care. Trust me, just focus on that case and you will go through. 52-year-old male renal transplant recipient, post-renal transplant recipient, 10 days ago, and it's the early transplant period. Very important. You need to know why I have mentioned, just for educational purpose, in early transplant period, you focus on bacterial and fungal infections. And in the later stages, you focus on the opportunistic infections. So you really need to know what the post-transplant period is. Is non-epileptic on levetiracetam oral and immunosuppression, mycophenolate mofetil, and tacrolimus. He presents with hypoxemic respiratory failure, hypotension, or altered mental status, Tmax of 38.4 fever, and profuse diarrhea, and with tonic-clonic seizures. Initial vitals were the patient is tachycardic, tachypneic, patient is desaturating. We attached the non-rebreathing mass of 15 liters and it improved 85 to 90%. Still it's 85 to 90%. And the patient is febrile. It's really febrile, 38.9. What the ABGs showed severe metabolic acidosis with proper compensation. These are the initial radiology findings. You can see the lungs and the CT with bilateral multiple focal patchy infiltrates. These are likely ground glass opacities with dense infiltrates. So what the pharmacist did at the right away,
obtains the best medication history and obtains the proper knowledge what is the GFR of the donors. We mentioned that it's very important when the patient lands in the ER, you need to document the best medication history. And in the post-renal transplant recipient or other special population, it's very important that how you dose specific medications. In post-renal transplant, your renal dose adjustments depend on the donor's GFR because this is the donor's kidney that has been grafted in the recipient. So we document no allergies and we document 60 ml per minute. So medication reconciliation immediate holds. What we did, it was he was taking mycophenolate mofetil. So we immediately hold because mycophenolate mofetil causes the diarrhea and severe infection. It flares up the infection drastically. We made sure what was the last trough levels of tacrolimus. It was 8 2 days ago. We load the patient with levetiracetam because he was having tonic-clonic seizures, and we made sure that we maintained good levels. We continued steroids because the patient was on steroids, and the patient had the history of alcohol. So to prevent the Wernicke's, we started thiamine. It's very important. Had we not documented and obtained medication history properly, we would not have in a position to start and to continue or to discontinue the specific drugs. And you will get to know why. This is very important. I always teach to my residents, my students, my seniors, my juniors, you need to know head to toe assessment. You need to know patient assessment because if you know a bigger picture of a patient, then you are in a position to give a proper handoff. Then you are in a position to transition from ER to ICU for the proper continuity of the care. So the patient lands with septic shock. The blood pressures are 82 by 48. The MAP is less than 60. Heart rate is 124. Is lesser tissue perfusion. Lactate is rising. Severe metabolic acidosis. Chloride is 123. So resuscitation. They tried to resuscitate with the normal saline. The pharmacist said no. The patient is having hyperreninemic, hyperchloremic metabolic acidosis, and the normal saline is associated with that thing. Let's start with the crystalloid, balanced crystalloid. From airway, because the patient had deteriorating GCS, we calculated the proper induction and paralytic dosings for rapid sequence intubation because we have to intubate the patient. And then we properly design a sedation plan and we check the Y-side compatibility. Septic shock management, fluids, vasopressors, antibiotics needs to be given within 30 minutes, very important. And we calculated the dilution rate and infusion rate, stepwise approach. What is the impression? What is our patient's impression is? He's in septic shock. He's a post-renal transplant recipient. He has septic shock, sore his lungs. He has hospital pneumonia since he has just been discharged less than 10 years ago. Why source identification matters? Again, guides the antimicrobial therapy, prevents unnecessary broad spectrum use, and it improves the patient outcomes. We, right away gave meropenem and vancomycin, good loading doses. In critically ill patients, again, it's very important to document in your handoff that we have given adequate loading doses because in critically ill patients, when you are resuscitating, there's altered volume of distribution, and these are the drugs that have very high volume of distribution. So just trust me, if you are not loading these patients with good amount of loading doses, you are just, they can flare up the infection drastically. What we did, it was refractory shock. We had to start stress dose steroids, considering it's a transplant depression. Then we, organize a sedation plan. We hold the immunosuppression therapy. For another thing, as a pharmacist, you should be knowing that in fungal and viral infections, your T-cell mediated immunity helps really well. If you have lesser immunity, then your infection would be flare up, and it will again cause a refractory shock. So we intubated the patient and we sent the tracheal biofar. It showed
E. coli, which had OXA40 and NDM and KP. So these are carbapenem-resistant genes. And the drug of choices are not meropenem. We started on meropenem within half an hour. Our tracheal biofurcum, it is a polymerase, it's a multiplex PCR that right away detects microorganisms and detects the antimicrobial resistance genes and helps you starting your antimicrobial and guiding your antibiotic as soon as possible. So we started the patient on Cas-IV and Astronam, and it's the standard therapy for NDM E. coli, for NDM hospital-acquired pneumonia. We started the patient with, and we made sure the proper dosing and infusion protocol was being given. So source evaluation and microbiology results, Cas-IV was started. It's hospital-acquired pneumonia. We made sure the proper dosing protocols. Now the patient's assessment again. CNS, respiratory, CVS, abdominal, renal, and ID. If you're assessing the patient from head to toe, you are giving, then you are in a position to really, for the continuity of the care. Now the transition phase. What we mentioned, what we learned, S-bar and I pass, now we'll discuss. Now what's the situation? It's a 52-year-old transplant, 10 days post-op, intubated, septic shock, hospital-acquired pneumonia, NDM E. coli. We started norepinephrine. The patient was in refractory shock. We added vasopressin, AKI on CKD, seizures control on IV levetiracetam. Because the patient was on oral levetiracetam, and the patient had profuse diarrhea, it was provoked seizures because of subtherapeutic doses of levetiracetam. So we documented all the doses. Background is patient is on tacrolimus MF. It means your T cell mediated immunity is very low. Trust me, to really know what's going on is very important. You assess the patient and then you give your recommendation. Pharmacists ensure that all ER meds are charted and reconciled. Antibiotics renally adjusted for the IC continuation. We continue Cas-IV Astronam, but again, the phenotypic cultures are pending. So we flagged it that phenotypic cultures you need to follow. We did the dose adjustments and we gave a proper verbal and handover, a proper documented. We continued thiamine because the patient was alcoholic to prevent keeps. We hold the MMF because MMF not only worsen the diarrhea, will just flare up the hospital-acquired infection. We made sure since the tacrolimus levels are 8, we are okay with the 8 levels. In severe pneumonia and severe infections, 4 to 6 levels, a rock solid 4 to 6 levels we required. Proper handover sedation plan was given because we had to intubate the patient because of the deteriorating GCS. What we did, we had to use lots of propofol, and these are the patients that can develop propofol-related infusion syndrome. What we said to the ICU personnel, you need to have triglyceride level. क्योंकि propofol related infusion syndrome के अंदर अगर आप triglyceride level early पाते हैं तो it's an initial sign of propofol syndrome. We continue the stress dose steroid because the patient was in refractory shock, and then we performed the Dopplers, the venous Dopplers, low-limb Dopplers, because the patient's INR was high. Patient was, not appropriate for sub-Q heparin or enoxaparin as a prophylaxis. So we made sure that we had documented that there is no low-limb DVT. So let's go through the proper head-to-toe assessment. The patient was intubated, sedated. We handed over the proper propofol-related infusion syndrome strategy, and we documented the infusion protocols. We made sure that the IV levetiracetam should be continued because the patient having profuse diarrhea. Respiratory-wise, the patient had bilateral consolidations, crown glass opacities, NDM, KP, and CRE, E. coli. FiO2 is now decreasing. Decreasing, it is maintaining good volumes. It means it's stabilizing. So we need to document. It's very important. And you will be asking me why pharmacists should be knowing all these things. We are here to document the dosing protocols, the drug-induced things, medication reconciliation. Yes, we have discussed all those things, but trust me, if you know your patient on a bigger picture, if you are involved in patient in your patient care from resuscitation to the transition of care, then you can really deliver a proper transition of care, and that is my go-to. So we
From abdominal wise, it's soft, non-tender, but nutrition wise, we have not started nutrition because on very high dose pressures, there is a risk of aspiration. So we didn't start nutrition. So what we did, documented it because nutrition is again very important in septic shock. Initially, the renal wise, the patient was oliguric. Creatinine was 2.5. Now it's 2. It's stable. Now patient is maintaining good urine output. You need to know that in post-renal transplant recipients, you need to know what was GFR of donor's kidney. You just cannot say the patient has now 0.5 creatinine and now I'll dose in accordance with the normal creatinine clearance. You need to know these sort of things. Immunosuppression, we hold MMF and mutual tacrolimus levels should be between 4 and 6, and we flagged it in our EMR because the balancing of the infection control versus craft protection. So my takeaway from the ICU, from the ER to ICU transition is, if you understand the broader clinical picture and you remain actively engaged in the stabilization phase, and you document all those things which we have learned in all this presentation, then you are in a position to deliver a comprehensive and structured handoff to the ICU, one that includes fully documented clinical pharmacy checks and ensures the continuity of safe, optimized patient care. Thank you so much. If there's any questions, you can ask. Thank you so much, sir, for joining us today. After having the privilege of learning from you, we are confident that the future is bright. Now I would like to hand over the session to Ms. Durayab. Thank you so much, Sayyida Gule Zahra. This is Ayadur Yab. I would like to invite our next worthy speaker, Dr. Ariba Nayab. She is a certified clinical pharmacist with specialized expertise in infectious diseases, anticoagulation, and critical care. She is currently serving at the Taba Heart Institute, where she leads initiatives in antimicrobial stewardship and patient-centered care. With prior experience at the Aga Khan Hospital and multiple industrial internships, she combines hospital pharmacy, electronic medical record proficiency, and research experience, including presenting at the Qatar International Conference. Today, she will be presenting on the very important topic, precision under pressure, sedatives, vasopressors, and electrolyte balance, a subject of immense significance in critical care pharmacy. Ma'am, over to you. Thank you so much, Duryab. Am I audible? Yes, ma'am, you are. Okay, and please share my slide so we can. Okay, Okay, first of all, the precision under pressure, sedative, vasopressors, and electrolyte balance. सबसे पहले तो अगर इंटरविजन हमारा है कि जैसे कि पिछले स्पीकर्स ने भी बात की कि फार्मासिस्ट को इतना एम्पावर होना है कि इन स्पेसिफिक क्रिटिकल केयर एरियाज में अपना रोल प्ले कर सकें, ये हमारा विजन रहेगा और मिशन भी यही है कि हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू वॉलंटियर ऑफ फार्मेसी वॉलंटियर्स को हेल्प कर सकें। सबसे पहले ज़रूरी यह है देखना कि प्रिसीजन अंडर प्रेशर जो बहुत ही फैंसी वर्ड है, इसके आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये क्या चीज़ है? It is the tailoring medical treatment to a patient's individual characteristics as their genetic makeup, specific disease mechanism or other data to improve treatment outcomes. For example, अगर बात करूँ मैं अदर पेशेंट जो कि किसी और वार्ड में एडमिट हैं और बात करूँ मैं ICU, CCU या HTU जो कि क्रिटिकल यूनिट्स होते हैं, उनके अंदर पेशेंट्स एडमिट हैं तो उनका जेनेटिक मैकेनिज्म डिफरेंट है, उनके अंदर स्पेसिफिक डिजीज इन्वॉल्व हुई हुई हैं, उनका डेटा, उनके आउटकम्स, ये सब चीज़ें उन नॉर्मल पेशेंट से डिफरेंट होती हैं। तो हमारी ड्रग्स के बिहेवियर में भी हमें उसी हिसाब से इनको कैटेगराइज करके कस्टमाइज करना होगा। इंट्रोडक्शन में बात करूं, जैसे मैंने बात की है कि अगर कोई पेशेंट किसी क्रिटिकल यूनिट में एडमिट है तो हमें एक पिक्चराइज करना होगा उस पेशेंट को कि फॉर एग्जांपल वो पेशेंट है, वो क्रिटिकली इल पेशेंट है, उसका सिंगल किसी भी डिजीज़ की वजह से वो एडमिट नहीं है, अनस्टेबल हीमोडायनामिक्स है, यानी कि जो उसका ओवरऑल बॉडी स्टेटस है, फ्लूइड स्टेटस है, मेंटल स्टेटस है, ये स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, वो अनस्टेबल है।
तो हमें अपनी जो भी मेडिकेशंस करनी है वो टेलर करनी पड़ेंगी उस पेशेंट के हीमोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, उसके फार्माकोकाइनेटिक्स के अकॉर्डिंग और उसके डायनामिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर फोकस किया जाए इस प्रेजेंटेशन में तो हम 3 चीज़ों को फोकस करेंगे। सुपरफिशियली होगा, लेकिन जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सेडेशन, यानी कि पेशेंट को सेडेट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं स्पेसिफिकली इन क्रिटिकल केयर। वेजोप्रेसिन सपोर्ट, जिसकी वजह से पेशेंट के हम प्रेशर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइट ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्लूइड रिससिटेशन, यू कैन से। ये जो स्कोरिंग है वो मैंने इंट्रोडक्शन में ऐड इसलिए की है बिकॉज जब एज अ फार्मासिस्ट हम क्रिटिकल केयर में एंटर होते हैं और हमें सेडेशन और वेजोप्रेसिस की गाइड्स के बारे में बात की जाती है, तो कुछ स्कोर्स बहुत ज़रूरी हैं जो हमें पता हों, जो कि मेनली क्रिटिकल केयर में यूज़ किए जाते हैं, जिसमें से ये RASS स्कोर, दैट इज द रिचमेंट एजिटेशन सेडेशन स्कोर, जो कि हर पेशेंट का अलग होगा। अगर बात करूं तो जैसे कि हमने देखा है कि हमारे पास पेशेंट्स एडमिट हैं, उनकी एक एज ग्रुप है, फर्स्ट से कि वो 40 टू 55 ईयर्स की हैं, और अगर बात करूं तो अबव 60 ईयर्स, तो सबका रास स्कोर डिफरेंट होगा। ये बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें कैलकुलेट करने की नीड क्यों है, या हमारा एज अ नर्सिंग हमें नर्सिंग से हेल्प इसकी क्यों चाहिए, बिकॉज ये हमें बताएगा कि हम अपनी मेडिकेशंस के लिए कितना एग्रेसिवली जा सकते हैं और पेशेंट का इसमें एजिटेशन का और सेडेशन का क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, उसमें पॉइंट्स हम फिल करते हैं कि पेशेंट एजिटेटेड है, रेस्टलेस है, तो हम इसको पॉइंट्स देते हैं और आखिर में जो हमारा कम्युलेटिव स्कोर बनता है वो पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है उनकी इस तरह की क्रिटिकल मेडिसिन को अरेंज करने के लिए। सबसे पहले अगर बात करूं सिडेटिव्स इन क्रिटिकल केयर, मेरे ख्याल से अगर कोई फार्मासिस्ट क्रिटिकल केयर में काम कर रहा है तो उसके लिए सिर्फ 3 ड्रग्स को याद करना और उस पर एक कमांड करना, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है। जिनमें से कॉमन सेडेटिव्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने क्रिटिकल केयर में इज़ द प्रोपोफोल, सुना होगा नाम, जो बच्चे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या किसी का एक्सपोजर है हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर के, मिडाजोलाम, डेक्समेटोमिडीन। तो इन ड्रग्स की 3 को हाईलाइट करने का मकसद ये है कि इन ड्रग्स की इंडिकेशन, इनके साइड इफेक्ट्स, इनकी क्रिटिकल केयर में स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे इनका काइनेटिक्स, डायनामिक्स और इनसे रिलेटेड कोई भी सिग्निफिकेंट अगर कोई लेटेस्ट रिसर्च है तो वो बीइंग अ फार्मासिस्ट इन अ क्रिटिकल केयर हमें पता होनी चाहिए। को गोल्स क्या होंगे, कभी भी किसी मल्टी डिसिप्लिनरी के साथ अगर आप राउंड्स करते हैं, पेशेंट को रिव्यू करते हैं क्रिटिकल केयर के, हमेशा याद रखें जिस पेशेंट को सेडेटिव्स यानी कि इन तीनों ड्रग्स में से कोई ड्रग चल रही है तो हमें उसकी एजिटेशन को ऑब्वियसली कम करना है। ठीक है, यानी पेशेंट आइदर के वो हो सकता है सर्जरी के बाद आपके पास क्रिटिकल केयर में आया हुआ है, हो सकता है वो किसी ट्रॉमा के बाद सर्जिकल यूनिट में है, वो किसी भी हिट इंजरी के साथ हो सकता है, किसी भी डीप इन्वेसिव इन्फेक्शन के बाद उसकी लाइंस और उसको वेंट सपोर्ट की नीड है तो हमने उसको क्रिटिकल केयर में लिखा। देयर आर सो मेनी रीजंस कि पेशेंट एजिटेट हुए हों, तो उनका रास स्कोर के अकॉर्डिंग हमारा ये ड्रग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट का हमें रिड्यूस करना है एजिटेशन स्कोर। ठीक है, उसकी वेंटिलेशन, ऑल दो सेडेटिव्स का वेंटिलेशन का रोल नहीं है, लेकिन सेडेटिव्स बहुत हेल्प करते हैं इन वेंटिलेशन सेटिंग, बिकॉज इट्स अ वेल अंडरस्टूड थिंग कि आपने अगर रास स्कोर पे अच्छा काम कर लिया, यानी कि पेशेंट के एजिटेशन स्कोर को कम करने के लिए सेडेटिव्स की मिनिमम मैक्सिमम डोजेस को कंट्रोल कर लिया, तो पेशेंट की वेंटिलेशन बहुत फैसिलिटेट हो जाती है। वरना अगर जो पेशेंट एजिटेट होंगे उनकी वेंटिलेटरी सपोर्ट हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, और ऐसा बहुत कॉमनली देखा जाता है क्रिटिकल केयर में कि अगर वो अंडर सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट हों या उनकी डोजिंग ऑप्टिमाइज ना हुई अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड ग्रुप्स, तो पेशेंट बहुत एजिटेटेड होते हैं, उनकी वेंट सपोर्ट को बार बार हमें कस्टमाइज करना पड़ता है, और उसका बहुत कॉमन रीज़न कभी कभार सिर्फ सेडेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं डालना है, हमें उसको एक्सट्यूबेशन, यानी कि अगर आसान वर्ड में बात करूं तो ये वेंटिलेटर से हटाने का एक पूरा प्रोसीजर है जिसे हम ऑफ सपोर्ट भी कहते हैं। तो हमें पेशेंट्स को सेल्फ एक्सट्यूबेशन की तरफ लाना है हमेशा जब भी सेडेटिव स्टार्ट करें, और फैमिली को काउंसिल करें कि हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, इनके लिए कुछ ऐसी दवाएं हम देंगे, तो उस पर हमेशा हमारा टारगेट रहेगा कि हमें उसको खुद ब खुद एक्सट्यूबेशन के ट्रायल पे भी लाना है। अब इन 3 ड्रग्स का अगर कॉमन बात करूं तो जो फार्मासिस्ट को चैलेंज आता है वो ये है कि पेशेंट हमारे पास ज़्यादा क्रिटिकल केयर में बहुत कॉमनली सेप्सिस या सेप्टिक शॉक में होते हैं, जैसे पिछली प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि वो चैलेंजेस हैं जो हम सेप्टिक शॉक में देख रहे होते हैं। उन पेशेंट्स में हाइपोटेंशन इज़ द प्राइम लाइक द डिफ़िकल्टी कि हमें वो सेटल करनी होती है, और ये जो हमारी सेडेटिव ड्रग्स हैं इनका भी एक चैलेंज है कि अगर हम इसको एक इनिशियल हाई डोजेज में प्रोवाइड कर देते हैं वो हाइपोटेंशन कॉज कर सकती हैं। और अदर देन दिस प्रोलॉन्ग सेडेशन इज आल्सो द चैलेंज इन द क्रिटिकल केयर जो फार्मासिस्ट
उसको डील करना होता है कि हम पेशेंट को सेडेटिव स्टार्ट कर देते हैं, बस हमारा एक्सट्यूबेशन क्राइटेरिया बहुत डिले हो जाता है। अब सेडेशन को प्रिसाइज कैसे करें किसी पेशेंट के लिए, तो जैसे मैंने बात की लास्ट स्लाइड में, हमें टाइट्रेशन मोड में रहना होता है। हमें पेशेंट का रास स्कोर कैलकुलेट करके उसको इम्प्रूव करने के लिए बात करनी है। यानी कि अगर मैंने फर्स्ट डे एंट्री की है अपनी क्रिटिकल की यूनिट में और पेशेंट को सेडेटिव स्टार्ट किए, तो मेरा हमेशा गोल ये रहेगा कि कुछ घंटों में पेशेंट का रास स्कोर इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। और उस स्कोर के बिहाफ पे हम BIS मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये एक तरह से EEG मॉनिटरिंग है, जिसमें हम ब्रेन की रिस्पॉन्स को चेक कर रहे होते हैं कि पेशेंट के ब्रेन के रिस्पॉन्सेस कैसे हैं आफ्टर स्टार्टिंग सेडेशन। सेडेशन की तो एक जो बहुत ही एफिशिएंट मीन्स होते हैं, यानी कि फार्मासिस्ट के लिए एक बहुत टारगेटेड चीज़ होती है कि वो लाइट वर्सेस डीप सेडेशन पे काम करे, क्योंकि इसके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। अगर ये मैं आपको इजीली समझा सकूं, तो पेशेंट को ऐसा सेडेशन हमें देना है जो कि ओवरऑल उसको डीपली सेडेट तो करे, बट वो इतना लाइटली होना चाहिए या इतना नॉट डिपेंडेंट होना चाहिए कि पेशेंट उसके एक्सट्यूबेशन ट्रायल के लिए हेल्प आउट कर सके। जब पेशेंट को हमें वेंट आउट करना पड़े, तो वो सेडेशन इतनी हाई ना हो कि पेशेंट हमारा एक्सट्यूबेट ना हो पाए। और ये बहुत कॉमनली होता है कि पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते करते हमें पूरे 12 से 13 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज हमने उसकी सेडेशन की डोजेस बहुत हाई की हुई होती हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है, जब भी हमें सेडेशन करनी है पेशेंट की, तो हमें अवॉइड करनी है उसकी ओवर सेडेशन को, बिकॉज समटाइम्स हम एक्सट्यूबेट भी कर जाएंगे पेशेंट को, पेशेंट वापस भी आ जाएंगे वेंट से, लेकिन उनका डेलीरियम फेज जो कि ओवर एज ग्रुप में बहुत प्रॉब्लम है, और ये ऑलरेडी पेशेंट डेलीरियम के साथ आए होते हैं और सेडेशन की वजह से हम उनको और डेलीरियम में ले जाते हैं। तो कीपिंग इन माइंड कि हम रास स्कोर को फोकस करते हुए अपनी सेडेशन करें, और पेशेंट का ICU का या CCU का स्टे को भी जो है वो कम से कम करें। तो नेक्स्ट ड्रग है वेजोप्रेसर्स। वेजोप्रेसर से बहुत बात हो सकती है, बिकॉज ये द मेन ड्रग जो कि हम सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में यूज़ कर रहे हैं। हमारा पेशेंट सेप्सिस में होता है, हमने उसको फ्लूइड रिससिटेट कर दिया होता है, ऑल्दो फिर भी उसके प्रेशर्स मेंटेन नहीं होते, तो हमें वेजोप्रेसर्स पे आना पड़ता है। दे आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स आई कैन से, बट बिकॉज ऑफ सम कॉमन साइड इफेक्ट्स एंड चैलेंजेस ये ड्रग्स इतनी आसान नहीं है चलानी। जब भी फार्मासिस्ट ना क्रिटिकल केयर एरिया काम कर रहा है, तो उसको ख्याल रखना है कि परफ्यूजन तो करना है अपने वेजोप्रेसन से, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उनको भी आपने अवॉइड करना है। मैं अगर बात करूं, जिस वक्त हम यूज़ कर रहे होते हैं कॉमनली नॉरेपिनेफ्रिन, ऑब्वियसली सबने सुना ही होगा, सबसे कॉमनली यूज और बहुत ही मैं बात करूँ तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग में आती है नॉरेपिनेफ्रिन, बिकॉज इसकी हाई डोजेस तक पहुंचना और इसकी कस्टमाइजेशन बहुत आसान है पेशेंट्स के ऊपर। एडिशनली अगर नॉरेपिनेफ्रिन से भी प्रेशर्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं, तो हमें अब गाइडलाइंस ये कहती हैं कि नॉरेपिनेफ्रिन की मैक्सिमम डोज तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एडिशन ऑफ अनदर आइनोट्रोप्स या वेजोप्रेसर्स कर दीजिए, जो कि मैंने मेंशन किए हैं। वेजोप्रेसन हो सकता है, आइदर एपिनेफ्रिन हो सकता है, या डोपामीन हो सकता है। टारगेट हमेशा हमेशा हमारा मैप पे रहेगा। मैप इज द मीन आर्टीरियल प्रेशर, जो कि हम सेप्टिक शॉक के पेशेंट में या सेप्सिस में देख रहे होते हैं, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 65। सो वेजोप्रेसर चलाने के बाद आपने उसकी कंटिन्यूसली जो इन्फ्यूजन्स होते हैं उनकी डोजेस पे नज़र रखनी है। आपने उनके हाई डोजेस पे नॉरेपिनेफ्रिन के पहुंचने से पहले कोशिश ये करनी है कि हम एडजुवेंट थेरेपी, जिसको हम कहते हैं कि 2 आइनोट्रॉप्स की सपोर्ट पे पेशेंट को ले लें। उसमें ट्रायल तो एक्सट्यूबेशन का डिफिकल्ट होता है, बट ये आसानी होती है कि पेशेंट जो है वो खुदा न खास्ता जो हम हाई डोजेस ऑफ वेजोप्रेसन से उसकी साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं उससे बच जाएंगे, और मिनिमम डोज ऑफ द अनदर आइनोट्रोप विल हेल्प अस। प्रिसीजन की बात करूं, तो जैसे कि हमने ये देखना है कि आइनोट्रोप्स को स्टार्ट करने के लिए फार्मासिस्ट को ये पता होना चाहिए कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं सेप्टिक शॉक की या सेप्सिस की। वेजोप्रेसन ऐसी ड्रग नहीं है जो कि पेशेंट को हम 24 घंटे गुजरने के बाद दें, या समझो 48 घंटे गुजरने के बाद दें। दीज आर द ड्रग्स दैट आर द लाइफ सेविंग ड्रग्स, एंड आई कैन मस्ट से कि अगर आपने फर्स्ट आवर और थर्ड आवर बंडल पढ़ा हुआ है सेप्सिस में, तो यू गाइस शुड नो कि हमें जितना अर्ली वेजोप्रेसर्स या आइनोड्रॉप्स की सपोर्ट पे पेशेंट आ रहा है और हम ले लें, तो वो बहुत जल्दी जो है वो शॉक की फेस में निकल सकता है। सो फर्स्ट आवर बंडल में आपके फ्लूइड रिससिटेशन, जिसमें आप अच्छे खासे फ्लूइड्स दे रहे होते हैं, उसके फौरन बाद आपको जो है वो आइनोड्रॉप्स की सपोर्ट पे पेशेंट को लेना होता है, और इसके लिए 1 से 3 घंटे का हमारे पास टाइम होता है। आपको टाइट्रेट करना होता है उसका इफेक्ट। फॉर एग्जांपल पेशेंट प्रेशर्स के साथ आया आपके पास 75/6, नीचे के प्रेशर्स हैं 55, तो आपने उसको टाइट्रेट करना है, अपने वेजोप्रेसर्स की डोज को बढ़ाना है इतना कि वो 90 to 60, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल कोट कर रही हूँ, 90 to 60 पे रीच कर जाए। फिर आपको अगर लगता है कि रिस्पॉन्स है उसके साथ, तो आपने उसको बढ़ाना है, लेकिन कीपिंग इन माइंड के मिनिमाइज करना है साइड इफेक्ट्स को। बहुत आसानी से आपको इसका लिटरेचर मिल जाएगा कि आपने नॉरेपिनेफ्रिन के साथ वेजोप्रेसन जब चलाई है पेशेंट्स के ऊपर क्या फिर एडवर्स इफेक्ट
बताएं। तो मैंने जो बहुत कॉमन थे जो कि वाकई में एक चैलेंज है हमारे लिए और हम कंटिन्यूसली टाइट्रेट करते वक्त मॉनिटर करते हैं आईसीयू में और सीसीयू में, दीज आर द एरिथमियाज, इस्कीमियाज एंड लैक्टेट क्लियरेंसेस। तो ये सारे वो मसले मसाइल हैं जब हम डोजेज हाई करने जा रहे होते हैं आइनोट्रोप्स की, तो हमें जो है वो फेस करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगेन दिस इज द होल चैप्टर। एक सिंगल 2 से 3 स्लाइड में बड़ा मुश्किल है इसको बताना, लेकिन अगर मैं इसको समराइज करूं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मैं कहती हूँ एक स्मार्ट वे है फॉर एक जेडी है क्लिनिकल क्रिटिकल फार्मासिस्ट की। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस जो हैं उसका सिंपल मतलब ये है कि आपके आईसीयू या सीसीयू में जो हीमोडायनेमिक्स डिस्टर्ब हैं पेशेंट की, उसको आप इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू बैलेंस करेंगे। और उसमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट आपके पास ओल्ड एज भी है, पेशेंट आपके पास रीनली हिट भी हुआ है, मे और मे नॉट बी एकेआई या सीकेडी के साथ भी है। और साथ ब साथ अगर मैं बात करूं जहाँ की हम तबा हार्ट में काम करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पेशेंट कार्डियक का भी होता है। लाइक इलेक्ट्रोलाइट को अगर गाइडलाइन के थ्रू मैं पढ़ूँ तो मुझे पता है कि सेप्टिक शॉक में 3 लीटर्स पर केजी से हम फर्स्ट आवर बंडल्स में पेशेंट को दे रहे होते हैं, बट इट इज़ वेरी टफ इन कार्डियक केयर सेटिंग कि हम उनको दें और फिर उनका फ्लूइड ओवरलोड हो जाए बॉडी में। देन वी हैव अनदर चैलेंज कि अब हम उनको हार्ट फेलियर से बचा रहे होते हैं। तो जब भी हमने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है या हाइड्रेट करना है पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स जो कि क्रिटिकल केयर में हैं और प्लस कार्डियक हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें उनको कंटिन्यूसली एको कराना होता है। कुछ आवर्स में हमें फिर उसको अगेन ड्रिप से स्टार्ट करनी होती है। तो इट्स नॉट द ईजी थिंग, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही टोटली डिपेंडेंट होती है क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट के ऊपर। इट मे बी क्रुशियल बिकॉज मैंने बताया कार्डियक रिदम पे हमें मॉनिटर करना होता है, सीएनएस के इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम की बात की पिछली स्लाइड्स में, काफ़ी ज़्यादा सोडियम का रोल है। आपकी मसल यूनिवर्सिटी पे तो वो काम कर ही रही है, लेकिन अगर आपने सोडियम की जो है वो ओवर डोजिंग कर दी है, तो वो नॉट ओनली कि वो मसल्स के ऊपर जाएगा और बल्कि उसके रिसेप्टर बाइंडिंग साइज उसके ब्रेन को वेट करते होते हैं। ठीक है, तो मसल फंक्शन, सीएनएस एंड कार्डियक रिदम, दीज आर द मेन थिंग्स जिसके हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हमारे लिए एक चैलेंज होता है। कॉमनली होता क्या है जब डिस्टर्बेंस आती हैं, हमें ये पता है पोटेशियम कम हुआ है, तो हमने पोटेशियम दे दिया पेशेंट को। रात की बात होती है, पेशेंट नॉर्मली रात में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में बहुत आते हैं। ठीक है, तो हमें जब सुबह रिपोर्ट्स मिलती हैं तो देखते हैं ये है कि लो पोटेशियम यानी हाइपोकैलेमिया में पेशेंट को पोटेशियम दिया गया है, लेकिन उसकी डोजिंग क्योंकि अप्रोप्रिएट नहीं थी या उसका या क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट का उस पर विजन नहीं था, आई नहीं थी, तो पेशेंट जो है एरिथमियाज में तो पेशेंट जो है वो एरिथमियाज जो है वो फेस कर रहा होता है। सिंपली ये है कि मैग्नीशियम आप दे रहे हैं, मैग्नीशियम का काइंडली डायरेक्टली रोल जो है वो रिफ्रैक्टरी हाइपोकैलेमिया में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैग्नीशियम रिप्लेस करें और पोटेशियम ना देखें। और ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस होती हैं क्रिटिकल केयर में कि हम मैग्नीशियम को करेक्ट कर रहे होते हैं, बट हम साथ में साथ पोटेशियम को भी जो है ना वो करेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का डायरेक्टली जो है वो पोटेशियम और से जो है वो गेटेड आयन चैनल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली जब प्रोफाइल रिव्यू करेंगे इस क्रिटिकल केयर में, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग्स को ये बताती हूँ कि कोई ऐसा पेशेंट हो ही ना नहीं चाहिए कि जिसके हमने इलेक्ट्रोलाइट देखे ही ना हो, तो कि ये हमारा ही रोल है और इस पे हमें ही पता है कि इसका काउंटर कैसे करना है। सोडियम इम्बैलेंसेस की बात हुई है पिछली स्लाइड में भी। सोडियम की रोल को हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि सीरम सोडियम कम है और हम सोडियम दिए जा रहे हैं, पेशेंट के सेरेब्रल एडिमा को देखना है, पेशेंट के शॉक के स्टेटस को देखना है, तो कि ऑलरेडी हम बहुत हाईली रिससिटेट कर चुके होते हैं पेशेंट्स को, और जब वो क्रिटिकल केयर में आते हैं ईआर से, तो हमें उनके सिर्फ ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन नहीं करना, हमें ये देखना है कि पेशेंट अब हीमोडायनेमिकली जो है वो अनस्टेबल हो चुका है। हमें इतने सोडियम को जो है वो मैनेज करना है या मेंटेन करना है कि वो पेशेंट एडिमा की स्टेटस से निकल आए या शॉक की स्टेटस से निकल आए। कैल्शियम हम सबको पता है बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं कार्डियक केयर सेटिंग भी। कैल्शियम इज़ अ कार्डियो प्रोटेक्टिव आइज एज वेल। तो अगर सारे इलेक्ट्रोलाइट मैनेज हो गए बट कैल्शियम रह गया तो हार्ट की कंट्रैक्टिबिलिटी नहीं होती है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज कर रहे होते हैं। इसके लिए ज़रूरी यही है कि हमें टाइमली एवरी डे और एवरी आवर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना होता है इन आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट। अच्छा, अब अगर मैं कॉम्बिनेशन बताऊं तो जैसे लास्ट स्लाइड में बात की गई है सेडेटिव्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तो कि देखें पेशेंट अगर आपका आईसीयू या सीसीयू में है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सेडेटिव्स दे दिया आपको इलेक्ट्रोलाइट नहीं देने, ऐसा नहीं है। ये तीनों वो ड्रग्स हैं जो कि सेप्टिक शॉक में बात करूं तो तीनों हमेशा साथ जाती होती हैं सेडेटिव को अलावा। सेडेटिव्स हमें जब रिक्वायर्ड होंगे या तो पेशेंट को हम इंट्यूबेट यानी कि हम उनको किसी सपोर्ट पे ले रहे होंगे या पेशेंट का कोई रास स्कोर मैनेज करना होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स और वेजोप्रेसर जो है वो मेन ड्रग्स हैं किसी भी सेप्टिक शॉक
के पेशेंट्स में। तो ये कॉमन ADRs हैं, जो कि अब बात ये है कि हर तरह के ADRs तो फार्मासिस्ट कहता है हमें याद नहीं होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको इतना पता हो कि आपने अगर प्रोपोफोल स्टार्ट की है और आप अगर उसकी हाई डोजेज स्टार्ट कर दें, और ऐसा मेनली होता है कि हाई डोजेज ऑफ इन्फ्यूजन स्टार्ट किए जाते हैं प्रोपोफोल के एज अ सेडेटिव, तो वो आगे जाके प्रेस करवा देते हैं, जो कि इन्फ्यूजन रिलेटेड सिंड्रोम है प्रोपोफोल का। और ये सिर्फ प्रेस नहीं होता, ये एक हाइपरकेलेमिया की एसिडोटिक स्टेट होती है, जिसको आपने फॉर एग्जाम्पल आपने पेशेंट को सेडेटिव तो दे दिए, लेकिन उसके साथ पेशेंट को आपने हाइपरकेलेमिया और एसिडोसिस से नहीं बचा सके। तो और एसिडोसिस जैसे कि pH होता है सीरम का, वो एसिडिक नेचर हो जाता है। इट्स नॉट इजी कि आप वेंटिलेटरी पेशेंट को आप मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए फिर मजीद मेडिसिन दें। तो ये एक तरह से ड्रग्स देने के साथ साथ आप उनको फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगे। ये एज अ क्रिटिकल केयर फार्मासिस्ट आपका रोल होता है। सेकेंडली इज द मिडाजोलाम। हम सबको पता होना चाहिए, मैंने इसलिए 3 ड्रग्स को फोकस किया बिकॉज इन तीनों के बारे में अगर कमांड कर लेना तो अच्छा खासा क्रिटिकल केयर का यूनिट पूरा आपका कवर होता है इससे। मिडाजोलाम इज द स्लोअर क्लियरेंस ड्रग इन द हेपेटिक एंड डिसफंक्शनिंग। अगर नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम ही क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की रीनल कॉम्प्रोमाइज हिस्ट्री होती है, CKD के पेशेंट होते हैं, और अब तो बहुत कॉमनली हेपेटिक इश्यूज आ रहे हैं, पेशेंट हेपेटाइटिस C से आ रहे हैं। तो मिडाजोलाम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो दे तो दें, लेकिन ये ख्याल रखें कि इसकी क्लियरेंस स्लो होगी, तो जो डोजेज आप नॉर्मल पेशेंट्स में देते हैं वो इन पेशेंट्स के लिए आपको कस्टमाइज यानी कि टेलर करनी पड़ेंगी, प्रिसाइज करनी पड़ेंगी, लिटरेचर सर्च करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब आती है लास्ट ड्रग जो कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ दे रहे हैं, और ये सेडेटिव्स ही हैं, जैसे डेक्समेटोमिलीन, जो कि ब्रेडिकार्डिया करा देता है। और समटाइम्स ऐसा नोट किया गया है कि ये इसकी इंटरेक्शन की वजह से, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द काउंटर मैकेनिज्म, ये रेयर हाइपोनेट्रीमिया भी कॉज करा सकती हैं। तो आपने जब भी प्रोफाइल पे देखा कि पेशेंट को सेडेटिव्स और इलेक्ट्रोलाइट साथ साथ चल रहे हैं, तो आपने ज़रूर ये देखना है कि पेशेंट जो है वो किसी भी तरह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से तो नहीं हो रहा। बहुत ही शॉर्टली मैंने 2 केसेस समराइज किए हैं। दीज आर द एक्चुअल केसेस फ्रॉम आवर सेटिंग, नॉट गिविंग एनी information of the patient because keeping the confidentiality. He was 62 years old male. सेप्टिक शॉक के साथ आया था पेशेंट, पोस्ट नमूनिया था, ER में लैंड हुआ था। तो हमने अगेन उसके सेप्टिक मार्कर्स को लेबल करते हुए सेप्टिक शॉक लेबल किया पेशेंट को, और नॉर एपिक की सपोर्ट पे ले लिया पेशेंट के। बिकॉज ऑफ द पोस्ट नमूनिया सिंड्रोम लंग्स इतने एफिशिएंट नहीं थे, तो हमें उसको वेंटिलेटर की सपोर्ट देनी पड़ी, जिसके लिए हमने उसको प्रॉपर जो सेडेट, पैरालाइज एंड पेन फ्री किया और मिडाजोलाम दे दिया एज अ सेडेटिव। जब पेशेंट की लैब्स देख रहे होते हैं तो उसमें हमें मिला है हाइपोकैलेमिया, दैट इज द लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन द सीरम। इस पोटेशियम के लेवल हमने देखे तो 2.9 थे, और लैक्टेट जो कि हमारा pH को रेगुलेट भी करता है और हमारा सीरम लेवल है लैक्टेट का 4.5 है। जब फर्स्ट आपका लेंस जाता है एज अ फार्मासिस्ट इन प्रोफाइल्स पे, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इस केस को इस तरह से हम देख सकते हैं कि पेशेंट को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंश्योर करना है कि इस पेशेंट को किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हम इसके वेजोप्रेसर या आइनोट्रॉप्स को डिले ना करें, ठीक है। इंश्योर करें कि अर्ली वेजोप्रेसर स्टार्ट किए गए हैं या आइनोट्रॉप्स स्टार्ट किए गए हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन जो कि अगेन एक आइनोट्रॉप तो है लेकिन इसने इम्बैलेंसेस कराए हैं, तो हमें वेट नहीं करना। हमें अगर नॉर एपिनेफ्रिन हमने स्टार्ट कर दी तो हमें इसको टाइट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम कोई भी ड्रग रिलेटेड इंटरेक्शंस जिसमें बहुत कॉमनली नॉरएपिनेफ्रिन के साथ अब हाइपोकैलेमिया रिपोर्ट हो रहा है, हम नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे हैं और कंटिन्यूसली हम पोटेशियम्स भी साथ में दे रहे हैं बिकॉज ये कॉज करा रही है इसके लेवल्स को ड्रॉप डाउन करा रही है। तो जब भी आप नॉरएपिनेफ्रिन चल रहा है पेशेंट्स को, अगर आपके पास CCU में 115 पेशेंट्स होते हैं तो मेरे ख्याल से इनमें से 9 से 8 पेशेंट का ये मसला है कि उनको हम नॉरएपिनेफ्रिन चला रहे हैं, उनका पोटेशियम सप्लीमेंटेशन हमें करनी है। जब फार्मासिस्ट को ये पता ही नहीं होगा कि वो कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से पोटेशियम लो हो रहा है, तो जो है वो हम कभी भी उस चीज़ को एडिशनल सप्लीमेंटेशन से मैनेज नहीं करेंगे। अगेन इसीलिए लाइन ऐड की गई है नंबर 30 कि रिकमेंड IV पोटेशियम क्लोराइड सप्लीमेंटेशन प्लस मैग्नीशियम रिप्लेशन। तो जब भी पोटेशियम रिप्लेस कर रहे हैं, आपने जो है वो मैग्नीशियम को भी रिप्लेशन को चेक करना है। डेली सेडेशन इंटरप्शन चेक करनी है। ऐसा नहीं है मैंने फर्स्ट डे पेशेंट को जो सेडेशन स्कोर के साथ मेडिसिन दी है कि वो उससे सेडेट हो जाएगा, सेकंड डे भी उसकी वही सेडेशन डोज रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने यही बात की है शुरू में, हमें रास स्कोर मैनेज करना है। रास स्कोर हमेशा इम्प्रूव होता है या डिटोरिएट होता है डे वाइज। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा रास स्कोर डे फर्स्ट पे क्या था, डे सेकंड पे क्या था, और उसके हिसाब से हमें अपनी सेडेशन को इंटरप्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट केस। इसकी वजह से ये देख सकते हो आप लोग कि हाइपोकैलेमिया को हमने स्कोर किया बिकॉज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन, और हमने साथ में सप्लीमेंटेशन की है उसमें पोटेशियम क्लोराइड की एंड मैग्नीशियम की रिप्लेशन को चेक किया, और अगेन इसमें भी हमने नॉरएपिनेफ्रिन की डोज को कस्टमाइज किया है, टाइट्रेट किया है डोजेस को। The second case, and it is the last case of my slide,
Again, this is the actual case of 55-year-old male. Prolonged ICU stay था इनका, और ये कंटिन्यूस जो है वो मिडाजोलाम पे थे बिकॉज इनका वेंटिलेटरी सपोर्ट बहुत प्रोलॉन्ग हो गई थी बिकॉज ऑफ मल्टीपल इन्फेक्शंस एंड थिंग्स। तो एक कॉमन फैक्टर हमें जो मिलता है इन केसेस में वो ये था कि राइजिंग इनके अब लिवर एंजाइम्स जो थे वो राइज होने शुरू हो रहे थे बिकॉज ऑफ लाइक मल्टीपल ड्रग्स इंड्यूस हेपेटिक इंजरीज एंड लाइक पेशेंट की अपनी जो डाइट होती है न्यूट्रिशन वो भी कॉज कराती है कि जब आप बहुत टाइम तक पेशेंट को सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे होते तो उसके एंजाइम्स जो है ना लिवर के वो मेटाबॉलिज्म क्योंकि करते होते हैं, और अगर जब उनको डाइट नहीं है या कोई एंजाइम्स एक्टिविटी नहीं है तो वो राइजिंग ट्रेंड पे आ जाते हैं। इस केस में पेशेंट का सोडियम भी 128 था। तो हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें रिकमेंड करनी है सेडेशन रोटेशन को, जो कि हमें पता है डेक्समेटोमिडीन जो है वो लेस हेपेटिक लोड रखता है। अभी आपने मिडाजोलाम दिया है, हम इजीली इस पेशेंट को डेक्समेटोमिडीन विद द इक्विवेलेंट डोजेज हम दे सकते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हाइपोनेट्रीमिया है वो बिकॉज ऑफ द वेजोप्रेसिन यूज है। सही है, ये चीज़ें हमें पता होनी इसलिए ज़रूरी है कि हमें उसके हिसाब से प्रिसीजन करनी होगी अपनी एक्टिविटी अपनी ड्रग्स के लिए। एडजस्ट करने फ्लूइड और ऐसा सोडियम कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करना है थ्रू ड्रिप्स कि पेशेंट की ये चीज़ भी मैनेज हो जाए। तो हमने फर्स्ट इसमें डेक्सामेटामिडीन को स्विच किया है, लेस हेपेटिक लोड रखता है क्योंकि वो हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट किया है हमने बाय द मीन्स ऑफ फ्लूइड। और इसमें साथ साथ ये ज़रूरी है जो कि हम अभी कंटिन्यूसली करना शुरू कर दिया है, हमने नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि नर्सिंग को भी ये बात पता होनी चाहिए करेक्ट टाइट्रेशन अगर नहीं होगी ड्रग्स की तो पेशेंट का जो स्टे है ना सेडेशन के ऊपर वो बढ़ता जाएगा। और हमारा वीनिंग स्ट्रेटेजी जो हमने बात की कि फर्स्ट डे हमारा ये इरादा होना चाहिए कि हमने जो ड्रग स्टार्ट की है उसको हमें वीन आउट करना है, तभी हम अपने आप को जो है वो टाइट्रेट कर पाएंगे चीज़ों को लेके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, Dr. Riba. It was a very nice talk and to the point and very meaningful talk. Thank you so much for your precious time. Now I would Thank like to invite our next moderator, Ms. Amna. Please continue. Thank you, Mr. Yap. My name is Amna Shafi, and I have the honor of moderating this session featuring our distinguished speaker, Mr. Zishan Ali. He is a Harvard Medical School postgraduate in safety, quality, informatics, and leadership, with a master's in health services management and a fellowship in healthcare quality from Ireland. He serves on the boards of the American College of Healthcare Executives and Giving Back to Pharmacy, Pakistan. With deep expertise in medication safety, JCI, CBAHI, and ISO compliance, Mr. Zishan has dedicated his career to advancing healthcare quality and patient safety. Today, he will speak on medication safety as a mindset, proactive role at every touch point. Please join me in welcoming Mr. Zishan Ali. Over to you, Mr. Zishan Ali. Thank you so very much. Thank you for the introduction. So the topic I'll be presenting is medication safety as a mindset at the proactive role at every touch point. So let's just talk about that. What are the effects or what possible effects that a patient could get during the time we are serving those patients? So let's be clear, medication safety is not a checklist. It is basically a mindset. It is all about that how we act and the culture that we create at every touch point, that every medication is being prescribed, dispensed, administered, or monitored. So I'll be talking about some strategic, operational, and cultural interventions or values we need to embed to have the safe thinking practice for our patients. So moving forward, basically medication safety is not a department, and every provider, every process, every dose is counting. Basically, for our patients, what we are doing, every person in the room, whether he or she is a pharmacist or prescriber, nurse, or administrator, he or she has to play a critical role while keeping our patients safe. This is not something we have to do when we usually see that when auditors are coming. So we say that now we have to do this procedure, this SOP needs to be followed. No, this has to be like all the time. We have to do all the right things that they are supposed to be done every single time. So culture eats strategy for breakfast, a famous saying. Now, the objectives. First of all,
making medication safety part of our daily thinking process or is important. It has to be a proper quality metrics. Secondly, we have to identify all the risk points in our medication use, what could go wrong, or where we need to do an FMEA or something along those lines. And finally, we have to talk about how to create a shared accountability model so that medication safety becomes the everyone job, not just a pharmacy job, or you can say a pharmacist job. So the case for action, so basically these are some of the statistics. The link, reference link is embedded in the slide also. So 1 in 20 patient worldwide suffers the medication related harm. And these are the actual numbers. These are being public by the journals, by the established journals. So we can see that there are 1.5 million preventable adverse drug events every year, and approximately $37 billion cost has to be faced, or has to be paid annually, all in managing all those preventable errors. And most of these errors are not happening because the people don't care. So this is not the case. They happen because due to the high risk transitions, or maybe the prescribing or dispensing or the administration went wrong. So this could be the scenarios where we have to deal with all those statistics later on, and when these are published, and these are some really concerning numbers. So every day we don't have to, we just need to improve our systems so that there are no more errors, or at least we can say the no more preventable errors. Because even in healthcare, preventable error is simply unacceptable. Majority of the areas, if we are talking about prescribing, dispensing, administration, still preventable harm is unacceptable. Medication management and use, basically, this is one of the chapter of the Joint Commission, and also the Joint Commission International. In 8th edition, they have revised multiple standards and measurable elements. So basically, the MMU is a structured process which guides it under the supervision of pharmacists. They have to cover all those 7 to 8 stages that start from planning till it ends up at monitoring, and the circle goes on. So the oversight needs to be provided by the committee, particularly the PNTC committee, the Pharmacy and Therapeutics Committee, or maybe by the Antibiotic Stewardship Committee. So that the policies which are being formulated needs to become the practice, the daily practice, or something we can say about that. There has to be a simple KPIs for that. If we are talking about the medication safety, then there has to be a KPIs for all those parameters of the medication safety, so that we can ensure that our patient is safe when they are at hospital, because these patients are relying on ourselves, on basically on nurses, on doctors, on physicians, on pharmacists. So moving forward, these are some of the stages which starts with the planning, selection, procurement, storage, prescribing, dispensing, or maybe preparation, administration, and last is the monitoring. So if you can say that all these stages are linked. It starts with the committee that will be selecting all those medication, and those medication will be entering the formulary process after the procurement and storage, and definitely they will be used for the patients. And overall, this whole process is being governed by the medication management and use chapter. So culture of safety, basically processes are important, but culture is everything. As I've said earlier, that culture eats strategy for breakfast. So if the staff is afraid, or if the staff are afraid to report an error, so we cannot expect them to learn from it. Basically, the psychological safety, we talk about the psychological safety, but we have to, you can say that we have to ensure that we never miss a near miss event, or because if we are hiding something because of the punishment. And leadership has to be visible and vocal about safety. That is very important.
We must learn from the systematically from the incidents or near misses, maybe via root cause analysis or FMEA. We can perform an FMEA to prevent them from happening again, or maybe proactive approach by doing FMEA. So moving forward, these are some of the risk points in medication use. At every single one of these steps, there is a chance that harm could reach or could slip and maybe pass on to the patient if the steps are not clearly, if the SOPs are not carefully observed or exercised. So our mission has to be proactive safety checks that has to be in place at each and every step so that we can stop error before they reach to the patient. So the proactive role of prescribers, they are mostly involved in clinical decision making. So they have to follow some tools, some SOPs. So it is recommended that they should follow the evidence-based guidelines. That is the most relevant for that patient. That is the most authentic information available on internet or any other resource available for them. It means that this shows that they are taking some good approach. They are taking account for the allergies, maybe renal function, hepatic function, or you can say avoiding all those dangerous abbreviations or shortcuts which could potentially harm the patient. So medication reconciliation is definitely important. It starts from the admission, transfer, discharge, and we have to try to omit or avoid duplication at all level, because it is very important to have a clear communication, because ambiguity always kills. So there has to be a clear communication channel. So for the pharmacist, the role is equally important as well as critical. Every prescription needs to be reviewed for appropriateness, for interactions, for dosing lookalike medications, for polypharmacy. They have to be separated physically, and no checklist, no reliance on memory alone. There has to be a proper checklist that this step has been performed. Now we are moving towards this step. So pharmacist should counsel the patient. They should document the interventions if there are any, and they have to be they should be empowered enough to stop unsafe orders. If they want to talk to their doctors, they can. And pharmacy, I would say that is the last line of defense before a medication reaches to the patient. Nurses are the final gatekeepers. Their vigilance is definitely important. 6 hours are mostly the right patient, right drug, right dose, right route, right time, and right documentation. So for nurses, if something goes wrong, nurses has to speak up. A timely documentation or maybe a close monitoring for ADRs can potentially save a patient life, or maybe can prevent a big strategies. So patient and families as partners, basically families and attendants are not passive passengers. They are partners in our safety. So we have to empower them also. They have to ask question that why I'm taking and why what is I'm taking, and they have to be vigilant enough. So patients should understand their medication so that the adherence could be improved and error may be omitted or decreased. Technology. So the CPOE, computerized physician order entry, it has to be supported by the decision support system, clinical decision support system. These are very much common in United States or other countries. So barcode scanning or maybe smart infusion pumps, all those tools can reduce human error, the reliance on memory. So, but again, the technology is an assistant. It can help you, but it is not a replacement for human vigilance. Definitely, we have to think critically, and that is important, because we are serving our patients. Patient could be our family member. So moving forward, there is an example case study, dispensing error reduction. One of the pharmacy noted a sudden increase in dispensing errors, so they started to dig out, and they found that there are many wrong strengths were being administered and wrong form is being used.
So when they investigated, they found out that the medication was stored alphabetically without separating any strengths. The intervention was definitely required at this level. So the rearrangement was done, separated by maybe Lassa medication was separated, or new physical space has to be created, and result was a 50% reduction in errors over the 2 quarters. Key barriers and mitigation. So as we all know that barriers are there, heavy workload, maybe communication gap, poor communication, or over reliance on automation. So we know that the daily interdisciplinary hurdles or stimulation training or periodic audits and routine audits are important, because the key is to be proactive, not waiting the harm to happen before we act. So this is the most important takeaway message. So medication reconciliation, one of the most effective safety net that we have, or because the best possible medication history from the patient or caregiver or attendant, verified information, and reconciling it when it is required. Every transition of care, every 24 hours, it is required. So this one step can prevent duplication, omission, or we can say dangerous interactions. Data-driven improvements. We have to track near misses, medication errors, ADRs. We have to share the data to the leadership, to the PNTC committee, to the quality council, where all the stakeholders are present. So it is important to close the loop. Use the data to fix the systems, not just to report the numbers. It has to be intervention oriented. Global and local standards. WHO Global Patient Safety Challenge calls for 50% reduction in medication related harm. And also we have to align ourselves, if we can try to align ourselves according to the medication management and use standards, because these are very much particular, these are very much important. And local DRAP lines, if DRAP rules, if we are talking about Pakistan, because safety, I would say, is not an optional item. It has to be the part of ethical duty. Call for action. Medication safety is everyone's business. If we see something unsafe, just report it. If you make a mistake, share it with others. Let them learn from your own mistakes together, because together we can turn each error into opportunity for improvement. Now, I want to hear from you. Maybe you can reply back to this question later, that what one change can you implement tomorrow to reduce the medication errors in your area? It could be a simple hint I would be giving it. It could be a simple double check, or on a high dose, high alert doses drugs, maybe rearranging the storage, new addition of new physical storage, or educating a patient. So every single step counts. Every single step matters. These are some of the references. And last, thank you very much for being here and committing to this mission. So medication safety is not just a professional obligation. It is a moral one also. So together we can make every dose safer. So if there are any questions, I would happy to answer them. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Zishan Ali, for sharing your invaluable insights and highlighting the importance of medication safety as a proactive mindset. Now, I would like to invite Ms. Aisha to take over. Over to you, Ms. Aisha. Assalamu alaikum, everyone. Thank you, Amna, and thank you, Mr. Zishan, for your insights. Myself, Aisha Shehzadi, a final year pharmacy student at GCUF. I am honored to join Giving Back to Pharmacy Society as an moderator. Today, I am here to moderate Dr. Iman Fazal's session. She is an emergency care pharmacist at the Aga Khan University Hospital, Karachi, Pakistan, with almost 3 years of experience, which includes serving as a lead to ASHP approved resident, where she received the Best Resident of the Year award.
She is also pursuing an MPhil in pharmacy practice with a research grant awarded in her program. In today's session, Dr. Aman will share her insights on rapid decisions, safer outcomes, emergency department pharmacist at the front line. Dr. Aman, over to you. Dr. Aman? Okay, Aisha, am I audible, Aisha? Yes, ma'am. Kindly share your screen. Yeah. Yes. May I start? Yes. Okay. So start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I am Iman Fazal, an emergency care pharmacist at Aga Khan University Hospital. First of all, I would like to share my sincere gratitude toward this organization. Today, I will be talk about the role of emergency pharmacists in taking rapid decisions and safer outcomes. So what is an emergency department? Emergency department basically is the high pace area and which is operational 24/7 and provide unscheduled services to patients who require immediate care. बिकॉज जो पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होते हैं उन्हें जो होता है इमीडिएट केयर की नीड होती है क्योंकि वो जो है वेट नहीं कर सकते. So the National Hospital Ambulatory Medical Care Survey defines hospital facility that is staffed 24/7 and provide unscheduled services to patient whose condition requires immediate care. If we talk about the core elements, so you often heard the word triage. Basically, triage is the area where nursing staff assess the patient on the basis of on the basis of severity, not on the basis of arrival. So once initial assessment is done, so patient को जो है वो initially manage किया जाता है until patient stabilize हो जाए. Then we go toward disposition decision where we will decide whether to admit this patient in an inpatient, whether to admit this patient inpatient for further stabilization or to discharge this patient if the patient is stable. So here is the layout of emergency department. Basically, in emergency department, we have diverse range of patients, adult and pediatric, clinical, critical and non-critical patients. So an ideal emergency department must have separate categories for adult patient and pediatric patient, as well as critical and non-critical patient. Here is the most common diagnosis of emergency department. अच्छा यहाँ पे जितनी भी diagnosis है वो diagnosis है जहाँ पे patient को immediate और urgent care की need होती है, जिसमें हमारे पास cardiac emergencies आ जाती है, myocardial infarction, stroke. इसके अलावा infection हो सकता है, sepsis, status epilepticus and the most common is road traffic accident. So emergency department का दूसरा नाम जो है वो accident and emergency department भी होता है. Moving toward the challenges of emergency department, the most significant challenge of emergency department is the medication error. So why the medication errors are common in emergency department? Because we have limited or incomplete medication histories available here. So अगर patient किसी चीज से allergic है और उसका doctors को नहीं पता और अगर वो medication like penicillin अगर patient को दे दी जाए तो उससे patient को harm हो सकता है. लेकिन emergency department में we often have incomplete medication history. Secondly, in emergency department we have evolving diagnosis. So we have to treat the patient on the basis of suspected diagnosis because we don't have definite diagnosis available here. So we have limited time for decision making. So सबसे main thing जो होती है emergency department में वो time pressure होता है क्योंकि हमारे पास इतना time नहीं होता कि हम decision ले सकें, तो हमें safer decision को ensure करना होता है. The fourth and the last thing is we have diverse and wide range of patients here.
So yes, the workflow of emergency department is unpredictable. One minute you are dealing with a patient having mild to moderate fever, and in a next minute you have a patient with cardiac arrest. And the last important thing, क्योंकि emergency department में immediate care चाहिए होती है, तो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा crowded होता है, panic और chaos environment होता है. So these all are the factors which contribute in medication errors. So we will discuss how ED pharmacists cope up with these challenges and reduce medication errors in the next slide. So who is an ED pharmacist? An emergency pharmacist is a clinical pharmacist specializing in the hospital emergency department, providing expert medication management, drug information, and patient care during medical emergencies and acute care. So here I would like you to think, how would you apply your pharmacy knowledge in an area where every second counts? So basically emergency department जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई पेस एरिया होता है और हर जगह जो होती है बहुत पैनिक सिचुएशन होती है. तो यहाँ पर जो है ईडी फार्मासिस्ट दूसरे फार्मासिस्ट से किस तरह डिफरेंशिएट करता है कि यहाँ पे ईडी फार्मासिस्ट को सिर्फ मेडिकेशन मैनेजमेंट नहीं करनी, बल्कि उसे जो है क्विक डिसीजन भी लेना है और हाइपर विजिलेंट भी होना है. इसके अलावा उसे उस पैनिक एनवायरनमेंट से कोप अप भी करना है, उसे खुद पैनिक नहीं करना और कामली डील करना है उस सिचुएशन से. So here is the rules of emergency pharmacist, ambulatory care dealing, information source for healthcare. We will discuss this in next slides. So why ED pharmacists matter? Here is the data. In USA, CPs reduce medication errors by 80% and save over 80,000 annual emergency department lives annually. Emergency department of medication of Children's Hospital. Furthermore, in Jordan 2020 research shows that CP decreased the incident of prescription error in the emergency department from 24.6% to 5.4%. तो ये डेटा ही बता रहा है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है और फार्मासिस्ट किस तरीके से जो है मेडिकेशन एरर्स को कम करता है. ये ह्यूज नंबर है. ट्रेडिशनली क्या होता था कि इमरजेंसी फार्मासिस्ट का रोल इतना स्टेब्लिश नहीं था, लेकिन अब जो ये रोल जो है वो शिफ्ट हो रहा है और इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ रही है इमरजेंसी फार्मासिस्ट की. और ये इम्पोर्टेंस कब से बढ़ी है? जब ASHP ने अपनी गाइडलाइन इमरजेंसी मेडिसिन फार्मासिस्ट की पब्लिश की थी 2008 में, तो एक्रीडिएशन जो थी इमरजेंसी फार्मासिस्ट में वो बढ़ गई थी फ्रॉम 3 in 2007 to 70 in 2020. So now I would like to discuss how ED pharmacists contribute in quality and patient safety. So the first we will discuss this step by step. What is medication appropriateness review? Basically first step जो होता है इमरजेंसी फार्मासिस्ट को क्या करना होता है कि जो भी ड्रग है उसको appropriateness elements के अगेंस्ट चेक करना होता है कि एक पेशेंट को जो है वो राइट ड्रग मिले, राइट डोज में, राइट फ्रिक्वेंसी में. Once you ensure the medication appropriateness review, you have to check कि पेशेंट की कोई हाई रिस्क डायग्नोसिस ना हो. हाई रिस्क डायग्नोसिस में हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसमें अगर किसी पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी है तो हम उसमें एसिटामाइनोफेन नहीं देंगे. इसी तरीके से हाई रिस्क डायग्नोसिस बहुत सारी हो सकती है, ये एक एग्जांपल है. इसके अलावा पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी ना हो, किसी पेशेंट की कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो. जब इमरजेंसी फार्मासिस्ट ये सारे एलिमेंट को इंश्योर कर लेगा तो फिर वो ड्रग को डिस्पेंस करेगा. लेकिन इमरजेंसी फार्मासिस्ट का एक इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसे ड्रग को रैपिडली डिस्पेंस करना होता है, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत क्योस होता है. तो इमरजेंसी फार्मासिस्ट को इस चीज को भी मेक श्योर करना होता है कि जो ड्रग डिस्पेंस हो रही है वो राइट ड्रग हो. ऐसा ना हो कि आपको फ्यूरोसमाइड देनी है और आपने जो है वो एपिनेफ्रीन दे दी उसकी जगह. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डिस्पेंस द राइट ड्रग्स. तो इस तरीके से इमरजेंसी फार्मासिस्ट जो है वो मेडिकेशन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं. जब मेडिकेशन एरर्स रिड्यूस होते हैं तो पेशेंट का लेंथ ऑफ स्टे हॉस्पिटल में ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है और जिससे पेशेंट की कॉस्ट भी रिड्यूस होती है. जो कि इस तरीके से ये तमाम फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं पेशेंट की क्वालिटी और सेफ्टी को इम्प्रूव करने में. So here we will discuss how emergency pharmacists reduce medication errors. So there are 4 elements: medication appropriateness review, timely and rapid drug dispensation, high alert drug monitoring, and pediatric medication management. So we will discuss in next slide about the medication appropriateness review. यहाँ पे हम एक ना example से समझ लेते हैं कि we have to give
heparin infusion for acute coronary syndrome. तो जब ऑर्डर इमरजेंसी फार्मासिस्ट की स्क्रीन पे आता है तो वो क्या क्या चीजें चेक करेगा. तो बिकॉज हेपरिन के लिए हमें एपीटीटी के लेवल्स चेक करने होते हैं. वंस जब हमने एपीटीटी के लेवल्स चेक किए तो उसके एपीटीटी के लेवल्स अबव 120 थे. तो इमरजेंसी फार्मासिस्ट इमीडिएटली कांटेक्ट विद फिजिशियन और जो है उससे कम्युनिकेट किया कि अबव 120 जो है हेपरिन इन्फ्यूजन मस्ट बी स्टॉप. सो यहाँ पर इमरजेंसी फार्मासिस्ट ने क्या किया, बाय रिव्यूइंग, ओनली रिव्यू करने से मेडिकेशन ऑर्डर आपने एक एरर को जो है वो प्रिवेंट कर लिया. सेकेंड थिंग इज टाइमली एंड रैपिड ड्रग डिस्पेंसेशन. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इमरजेंसी फार्मासिस्ट का एक मेजर रोल ये है कि उसे रैपिडली ड्रग को डिस्पेंस करना है, बट टाइमली और सेफली. लेकिन कुछ कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिसमें आपको टाइमली ड्रग डिस्पेंस करना होता है. जैसे कि इन केस ऑफ स्ट्रोक यू हैव टू डिस्पेंस एल्टीप्लेस विद इन 3 to 4.5 आवर्स. तो आपने उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर मेडिकेशन अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू भी करनी है और रैपिडली ड्रग को डिस्पेंस भी करना है. लाइक in case of sepsis, you have to dispense antibiotic within 1 hour. The third important element is high alert drug monitoring. These are the drugs which have high risk of medication errors. तो जब भी हाई अलर्ट ड्रग आएगी तो उसके लिए आपको डबल चेक करना है बिफोर प्रोसेसिंग ऑर्डर, वाइल डिस्पेंसिंग, इन वाइल प्रिपेयरिंग. इन तीनों चीजों में आपने जो है हाई अलर्ट ड्रग को डबल चेक करना है. जैसे कि इसके एग्जांपल में हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड आता है, हाइपरटोनिक सलाइन आता है. तो हाई अलर्ट ड्रग को जो है जब आप डिस्पेंस कर रहे हैं तो उसको आपने डबल चेक कर लेना है. और पोटेशियम क्लोराइड को हमने कभी भी जो है वो अनडाइल्यूटेड डिस्पेंस नहीं करना है. द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज पीडियाट्रिक मेडिकेशन मैनेजमेंट. पीड्स आर नॉट लाइक एन एडल्ट. पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो होती है वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है. पीड्स जो होते हैं उनकी जो है वेट बेस्ड डोजिंग होती है. तो पीड्स की डोजिंग में आपने बहुत ख्याल रखना है. फॉर एग्जांपल पीडियाट्रिक पेशेंट जो है उनको आप पैरासीटामोल दे रहे हैं 15 mg पर केजी से और बच्चे का वजन 5 kg है. आपने जो है ना कैलकुलेट बिल्कुल ठीक किए डोज, बट जब आप लिख रहे हैं तो आपने 75 की जगह जो है 750 लिख दिया. तो आपके एक एरर से किसी की लाइफ का रिस्क हो सकता है. तो योर वन एरर कैन टेक लाइफ. तो पीडियाट्रिक मेडिकेशन में बहुत छोटे से एरर्स बहुत मैटर करते हैं. So now we will discuss the role of emergency pharmacist in mass casualty. So basically mass casualty is the situation where the number of ill or injured patients exceed the available medical care. तो इस सिचुएशन में हमारे पास मास कैजुअलिटी दो तरह से हो सकती है. या तो कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है या फिर कोई मैन मेड डिजास्टर हो सकता है. तो नेचुरल डिजास्टर में हमारे पास फ्लड या अर्थक्वेक्स हो सकते हैं. और मैन मेड डिजास्टर में हमारे पास जो है वो कोई फायर इमरजेंसी हो सकती है या फिर कोई बस एक्सीडेंट हो सकता है. ये तमाम वो कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं और हमें बल्क ऑफ मेडिकेशन रिक्वायर होती हैं. तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है. इमरजेंसी फार्मासिस्ट जो है वो डिजास्टर कार्ड मेडिकेशन को स्टोर करता है, बल्क ऑफ मेडिकेशन इन डिजास्टर कार्ड. ना सिर्फ उनको स्टोर करता है बल्कि रिजर्व करता है मेडिकेशन को फॉर ओनली डिजास्टर सिचुएशन. इसके अलावा इमरजेंसी फार्मासिस्ट मंथली इंस्पेक्ट करता है और उसकी लॉट एंड एक्सपायरी को भी मेंटेन करता है. सो नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस द रोल ऑफ इमरजेंसी फार्मासिस्ट एट क्लिनिकल राउंड. तो इमरजेंसी फार्मासिस्ट जो है क्लिनिकल राउंड में रियल टाइम क्लिनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. मीन्स आप जब सैटेलाइट में होते हैं तब भी आप जो है वो एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट जब आप राउंड्स पे होते हैं तो आप पेशेंट सेंट्रिक क्लिनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. पेशेंट को देख के मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ वर्क करके एक क्लिनिकल डिसीजन ले रहे होते हैं. सेकेंडली आप एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप में रोल प्ले कर रहे होते हैं. यू हैड टू चूज द राइट एंटीबायोटिक एज पर एंटीबायोग्राम, क्योंकि जो है इमरजेंसी में आपके पास कल्चर रिजल्ट जो होते हैं वो पेंडिंग होते हैं. द थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज एंटीकोगुलेंट स्टीवर्डशिप. एंटीकोगुलेंट स्टीवर्डशिप में भी आप मेक श्योर करते हैं कि राइट एंटीकोगुलेंट मिले और जो है उसकी मॉनिटरिंग ठीक से हो. लाइक वॉरफेरिन जो है उसको अगर किसी पेशेंट का एनआर अबव हो रहे तो उसको स्टॉप हो जानी चाहिए. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द ड्रग नॉलेज हब, क्योंकि जो फिजिशियन है और नर्सेस हैं उनके पास ड्रग एक्सपर्टीज नहीं है. सो जो फार्मासिस्ट होता है वो ड्रग एक्सपर्ट होता है. सो इमरजेंसी में क्या होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता,
तो अगर इमरजेंसी फार्मासिस्ट राउंड पे होगा तो वो विद टाइम जो है अप्रोप्रिएट ड्रग रिलेटेड क्वेरीज को वो सॉल्व कर देगा, और जो है ड्रग रिलेटेड इश्यूज जो है सॉल्व हो जाएंगे और पेशेंट को अप्रोप्रिएट मेडिसिन जो है वो मिल जाएंगी। रोल ऑफ इमरजेंसी फार्मासिस्ट इन टॉक्सिकोलॉजी। सो इमरजेंसी फार्मासिस्ट के पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उसके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होती है टॉक्सिकोलॉजी में। उसको ये पता होता है कि किस एजेंट के लिए कौन सा एंटीडोट देंगे, किस तरह से जो है हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करेंगे पेशेंट को, और इसके अलावा टॉक्सिक रेंज जो होता है ये पता होता है कि किसी ड्रग की कितनी टॉक्सिक रेंज होगी। सो अगर हम बेंजोडाइजेपिन्स की बात करते हैं, अगर एक पेशेंट है जो कि 10 अल्प्राजोलम की टैबलेट लेके आगे आया है और जो है वो सिम्टोमेटिकली स्टेबल है, तो क्या हम उसे एंटीडोट दे देंगे? सो अगर हम बेंजोडाइजेपिन की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन की जो टॉक्सिक रेंज है वो बहुत वाइड होती है, और अगर पेशेंट्स पे कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे फॉर 24 आवर्स और उसे फौरन से एंटीडोट नहीं देंगे। और उसको अगर उसको कोई सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करेंगे। एक चीज जो याद रखने की वो ये कि हम कभी भी पॉइजन को ट्रीट नहीं करते, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं एज पर सिम्टम्स। So here I have shared the list of some agent with antidotes. Benzodiazepine के लिए flumazenil देंगे and so on. So I would like to discuss case study. So this case study is actually related to poisoning. 28-year-old man presented to the emergency department after ingesting approximately 40 amlodipine tablets 10 mg in a suicidal attempt. The physician immediately approached the emergency pharmacist for management advice, discussing regarding the antidote, and decided to give IV calcium gluconate bolus 2 gram Q6 early and high dose insulin therapy. तो इस केस में क्या था कि हमारे पास एक 28-year-old पेशेंट था जो कि 10 mg एम्लोडिपिन की टैबलेट्स लेके आया था। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि पेशेंट में जितनी टैबलेट्स ली हैं क्या वो टॉक्सिक रेंज के अंदर आती हैं या नहीं। तो यस, ये टॉक्सिक रेंज के अंदर थी और पेशेंट सिम्टोमेटिकली हाइपोटेंसिव था, उसे ब्रेडिकार्डिया था। तो डिसाइड किया गया कि उसे जो है हम एंटीडोट के तौर पे IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे और हाइट थेरेपी देंगे। Height therapy for chronotropic and inotropic support and calcium gluconate for reversal. तो यहाँ इमरजेंसी फार्मासिस्ट का रोल खत्म नहीं हो जाता। आपने जो थेरेपी स्टार्ट कराई है आपको उसके काउंटर इफेक्ट को भी मॉनिटर करना है। So because of calcium gluconate and height therapy, patient can undergo severe hypokalemia and hypoglycemia. So जो काउंटर इफेक्ट आएंगे उनको भी मैनेज करना होता है। तो the pharmacist immediately intervene and further advise to administer dextrose alongside with insulin, provide potassium supplementation with calcium therapy, as this could lead to severe hypoglycemia and severe hypokalemia. तो यहाँ पे फार्मासिस्ट ने जो ये सिर्फ एंटीडोट नहीं बताए बल्कि फिजिशियन को ये भी एडवाइस किया कि आप जो है इसके साथ पोटेशियम सप्लीमेंट्स भी ऐड करें और 25% डेक्सट्रोज भी दें, ताकि पेशेंट को जो इसके एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं हाइट थेरेपी एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट की वजह से तो वो ना हो और पेशेंट स्टेबल हो जाए। तो इस केस से हमें ये पता चलता है कि फार्मासिस्ट की जो एक्सटेंसिव नॉलेज है वो बहुत मैटर करती है। The second case is related to medication error. Here we have a patient with severe hypokalemia and doctor enters the order of potassium chloride 60 MEq per hour via central line. So इस केस में क्या था कि हमारे पास एक पेशेंट था जिसको सीवियर हाइपोकेलेमिया था और पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिकली जो है उसकी PVCs भी चेंज हो रही थी और पेशेंट बहुत क्रिटिकल था। तो डॉक्टर ने 60 MEq per hour IV सेंट्रल लाइन से एंटर किया। बस ये ऑर्डर जो है फार्मासिस्ट की स्क्रीन पे आया तो कभी कभी मिस्टेकनली भी लिख देते हैं। तो फार्मासिस्ट ने इमीडिएटली कांटेक्ट किया अटेंडिंग फिजिशियन से, लेकिन अटेंडिंग फिजिशियन इस लाइक कि आप ये डिस्पेंस कर दें क्योंकि मेरा पेशेंट जो है वो बहुत खराब है, आप मेरे केयर ऑफ पे डिस्पेंस कर दें। तो इस सिचुएशन में क्योंकि ये बहुत पैनिक सिचुएशन थी और पेशेंट बहुत क्रिटिकल था तो क्या इमरजेंसी फार्मासिस्ट ये रेट पे डिस्पेंस कर देता। तो ये केस जो है वो एक्चुअली ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से इमरजेंसी फार्मासिस्ट ने यहाँ रैपिड डिसीजन लिया और इसके किस तरीके से सेफर आउटकम आए। तो इमरजेंसी फार्मासिस्ट ने जो इमीडिएटली
सीनियर कंसल्टेंट को कॉल की और उनको एक्सप्लेन किया कि जो है ये रेट जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई है और शायद पेशेंट जो है वो सीवियर हाइपोकैलेमिया की वजह से उसको कुछ ना हो, बट बिकॉज ऑफ हाई डोज ऑफ पोटाशियम पेशेंट को जो है वो सडन डेथ हो सकती है. So after discussion, consultant agreed and infusion rate was safely adjusted to 20 mq per hour. So here, emergency pharmacists prevent a sentinel event. So here is conclusion. In an emergency department where every second counts and every decision matters, pharmacists are not behind the scene. We are at the front line. Thank you for listening. Here is the references. Now you can ask questions. Anyone, if you have any question, please ask in the question answer session. I would like to thank Dr. Ayman Fazal for sharing her valuable insights on emergency department pharmacist at the front line. With this, I would like to pass it over to Ms. Abisha Arif. Abisha Arif, over to you. Best of luck. Thank you, Ms. Saisha, for seamlessly moderating the previous session. Assalamu alaikum, everyone. Myself, Abisha Arif, a final year PharmD student and moderator of Dr. Maqsood Khan for today's virtual session at the 6th Annual Conference of Giving Back to Pharmacy in Pakistan. I am pleased to introduce our honored speaker, Dr. Maqsood Khan, Senior Clinical Pharmacist, Critical Care and Infectious Diseases at Sheikh Khalifa Medical City, Abu Dhabi. Dr. Maqsood Khan, a leading figure in clinical pharmacy and antibiotic stewardship, began his journey at Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital. He established robust antibiotic stewardship programs at Sheikh Khalifa Medical City and received notable awards such as Pride of Performance, Excellence in Clinical Pharmacy, and Sheikh Khalifa Medical City Medication Safety Award. Dr. Khan has presented over 100 talks on infectious diseases, therapeutics, and has impactful research publications. Dr. Khan, it's a pleasure to have you with us today, and we look forward to hear your presentation on time is brain medication strategies in post-stroke care. Over to you, Dr. Khan. Dr. Khan, are you there? Hear me? Yes. Yeah, can you? Yeah. So thank you very much, Abisha, for this nice introduction and invitations from, I will thank to Siddiqui Saab, Cleveland Clinic colleagues and other colleagues who are participating in this and making it really effective for our new coming pharmacist and to share our legacy and our knowledge and skills. Today talk I will be basically it's the stroke related to the stroke, but basically I want to share the experience which is over 15 years now as a clinical pharmacist, and I have been all the way from Shaukat Khanum back to 2009 internal medicine, critical care, and then with ID, and then Sheikh Khalifa Medical City. I have been basically initially covering till last year internal medicine, the whole internal medicine with high dependency unit and infectious disease. And for the last 1 year, I am covering the critical care. And when it's come to the topic of stroke, I have been very much active involvement from all those years and step in stroke patients. I understand that the topic is quite extensive. I will be sharing few thoughts, but the basic thing is I want to share the practical insight or skills, how you perform the different kind of components in your day-to-day life. So please, Abisha, can you, is the slides are visible? Yes, Dr. Khan. Yeah, okay. So basically stroke, I just go into, it's, we all know, but just to refresh the things, it involves definitely the neurologic dysfunction, and it can be abrupt. And by the way, when I'm presenting today, right, like maybe 3 hours ago, there was a stroke code in our hospital, just like code blue. We have now the trauma code and stroke code.
and patient came with, sudden stroke with vision loss and right-sided weakness, and CT confirmed a stroke, ischemic stroke. So at that time, they called me, the ED physician called me to look into quickly into the medication history and stuff. So this, I don't know, it was by chance or coincidence, but however, we see these patients quite commonly. So this, we know that stroke involves any kind of neurologic dysfunctions, and when we say at least 24 hours, then usually it's obstructions to the cerebral blood flow or spinal or retinal. And we know that majority of the strokes are ischemic strokes in terms of the emboli, thromboembolic strokes, and hemorrhagic stroke happens maybe 10-15%. The subarachnoid hemorrhage is the common category which I have seen in the clinical practice, and definitely the patients may be, the clinical presentation may vary, and depending upon the degree of stroke and intensity, sometimes patients may not be giving you the full informations, or cognitively impaired, or language deficits, or related to the effect of stroke. So the family members or caregiver in those cases may help. So the symptoms, we know that it can go anyway from it's a wide range of, spectrum of symptoms. Unilateral weakness, inability to speak, loss of vision. In today's case, which I couldn't include into the presentation, the patient is 52 years old, diabetic, control blood pressure, and he came just with the one of the eyesight loss, and he was having weakness on the side. When it comes to the ischemic stroke, usually it's not painful, but I have seen one of the case in past with the patients we were thinking that this patient is having just a headache, and we repeatedly, even in hospitalized patients got the hemorrhagic stroke, and they are usually very quite painful. So when we talk to the stroke, we know that time is money. This is a very common phrase, and then time is muscle in myocardial infarction. These phrases has been used very frequently in the past. Similarly, when it goes to the stroke, we know that the timing is very important, and that different neurons in the circuit and all those kind of things can be damaged. And the earlier we have the robust system to basically, that's why we very recently we introduced the stroke code, stroke code. Just like code blue, we have now the stroke code, we have trauma code. So immediately once the patients arrive, all those hurdles of registration and everything goes on side, and the physicians, the ED physicians, quickly assess the patients, and then they activate the stroke code in order to get everyone on board quickly from a stroke physician neurology perspective, if need to be thrombolized, or if need to be devascular to do something with endotracheotomy or these kind of procedures. So we know that the acute stroke assessment basically is very critical. Just like you don't have too much time, you have to quickly go into the patient medication history, current medication, and look into just as a second. Basically, the ED physician and stroke physician will be assessing, but however, you have to look into more detail from the medication perspective point of view, because patients may be carrying medication from different places, or from a different emirates, or maybe a visitors, and sometimes everything is not documented in the Malafi or in the Cerner. And definitely this is very important. Second thing is the protocol. Here we go, the protocol is like we used to have the altiplase. I mean, when you have random practice versus a protocol, so there it makes a huge difference. In protocol, you have included the workflow and everything from all the way ordering, and just like a kit, crash cart kit, we used to keep this altiplase kit in the ED, in the main area, in ICU, in surgical unit, in medical units. So the nurses know, the pharmacy know that, and the physicians know that if we need it urgently, the stroke kit, they can do it. And with this stroke kit, we have the very simplified workflow with the many, just a checklist like what they do in the airline industries for safety. Just yes, no for a few things like contraindications, or patient has been fit for this or not, and then once quickly assessed, then they go with it. And recently, and when it's come to the clinical pharmacist role, I would say that I have been from the day one. We started this stroke kit protocol in a structured way in 2018, and as an internal clinical pharmacist, internal medicine, I have been assigned to look into the literature, come up with the workflow and all the hiccups and in between the gaps, and we just
make something which is very simplistic way, and it create a lean process for everyone. So currently, just like 3 months ago, we know that the alteplase had its own issues with the thawing up and then reconstitution in slow dosing. So we switched even to tenecteplase, which is metallized. And this one is, I will discuss in the next session how we are doing it now. Safety and monitoring, as other colleagues, is any medications we have to do. But when it comes to the stroke patients, we have to be extra cautious in terms of medications, vital signs and stuff, and make sure that the nurses, physicians, everyone at the same page and in real time monitoring is happening. And if there's anything, we have to update the patient status accordingly. And documentation is a key, because we know that when there is a panic or there is these kind of situations, so for verbal kind of stuff, even the simplistic documentations, we were not going to go the whole story, the assessment things, but whatever actionable items, you just write it in the in a very brief note, whether it's a 1 line, 2 line, to make sure that whatever you said, all the people are who are on the care are following this. So here we go with the, just as I mentioned, we have this very simplistic, we remove our alteplase, which was taking us a lot of time, because we know that the 10% of the dose is given over 2 minutes, then remaining over 1 hour, and then the thawing and preparation and all those stuff, little bit complicated in dosing. Here, when it comes to tenecteplase, the metallized, we have this, the dose is not that complicated. The table is very simple. And what we do is, you can see the preparations. Basically, what I myself, with the stroke physician and with the company representative, we did the actual hands-on experience training for the ED nurses, for the high dependency nurses, for ICU nurses, like how you prepare quickly, how make it literally what after having a repeated practice for the nurses in the in these training sessions. Initially it took them like 5 minutes to 7 minutes to get the medication, everything into be injectable, and then with the practice, literally 2 to 3 minutes. And that's how when it comes to your demonstrations, it's a IV push over 5 seconds. And here you go, like all the dose. So whatever clot is there, so basically, just like in case of alteplase, where 10% therapeutic effect is achieved by the rapid dose, and the remaining you have to, achieve through the infusion. Here we go quickly over 5 seconds, and that's it. And then patient is in critical care in high dependency in ED. And even what happens sometimes, like we used to have some patients who can be just stable enough afterward and transferred to the another facilities. Let's say for the Cleveland, one of the stroke physician was telling me that these patients can be transferred. It's a new practice. I don't know feasibly how much it will be possible based on the things. However, we are using it in-house and in ED level, and so far things are going very smooth and quick for the pen. And we know that the timing is very important in this approach. Yeah. So, I mean, when it comes to the post-TPA care, this is, we know again, it's ICU high dependency. It's a common thing that very high-risk medications and high-risk patients. So monitoring of neurochecks, it's in our protocol 15 minutes for 2 hours, and then Q 30 minutes for 6 hours, then 1 hour afterward for the 16. And the thing is, we have to look into the blood pressure, and first 24 hours, very important, and follow-up CT. And if patient has even a home or self medications from like aspirin, clopidogrel, we remove these as a safety, so that the patient doesn't take it without even involving the pharmacists or physician or nurses. And we make sure that there is no active order in the system. I mean, even if the order is in the system, a mistake may happen. So we just deactivate everything. And from nurse, I have to explain, from the primary nurse, she has to give to the next ward, to the next shift, to the physician, that please. And very important thing is, you don't give inadvertently any anticoagulant or antiplatelet within the 24 hours until it's reassessed by stroke physicians, and clinically then accordingly, depending upon maybe 24 to 48 hours, how it goes case by case. Definitely the non-NG tube insertion, and keep NPO, because risk of aspiration depending upon the degree of stroke and issues will be, and we don't want to puncture the
the esophagus with the NG and risk of bleeding, all those kind of stuff. And we continually with normal saline if it's allowed, and half normal saline, and blood pressure monitoring, and sometimes D5W with insulin if patient is diabetic. Blood pressure management, we know that in hyperacute stage, definitely the first step we have to look quickly into the this component, which is pre-thrombotic area where you control depending upon your choices. In our hospital, we use sometimes labetalol and urapidil. Nicardipine, I don't remember if we have used it. Post-thrombotic thrombolytic period is also important for the first 24 hours. We have to look into blood pressure monitoring, make sure we are not exceeding the 180. I mean, in our protocol, definitely 170 to 160, talking about systolic, for the first 24 hours is acceptable as long as patient is clinically okay. And definitely we don't overdo it just to give any rapid like nifedipine immediate release or anything just to quickly bring down the blood pressure. That's not an ideal target, for these kind of patients. And secondary stroke prevention here, to be honest, I mean, this is really, we've seen that the patients they can develop multiple strokes depending upon their risk factors, because it's a lifelong strategies where you have to focus as a clinical pharmacist all the way. I mean, having someone on antihypertensive, let's say even 2 or 3 type of antihypertensive, or diabetes and dyslipidemia, if they are not getting into the goal blood pressure of 130, let's say by 80 or 85 for these patients with ischemic stroke, on chronic basis, if they are outlier in blood pressure limit, if their diabetes is not well controlled, in terms of it doesn't make any sense whether they are on insulin, 2 type of insulin, 3 type, as long as they are not. So dosing optimizations, patient compliance, and all those you have to take into account. And definitely when it comes to the dyslipidemia, atrial fibrillations, and antiplatelet, all those need to be considered based on the risk versus benefit. And lifestyle modification, I mean, most of the time we see the patients are elderly. I mean, some patients may be young and they may have like BMI more than 30 or 35, or they may need this different kind of weight reduction and exercises, but it's all too, it's too broad to specifically say what kind of patients will benefit at these things. And clinical pharmacist, definitely, when I see personally, I look into these chronic medications a lot when the patient is going from hospital and when they are coming. Basically, by the way, I mean, we have this for these patients, rehabilitation, pain management, and polypharmacy clinic, where I do it once a month. What we do is we review all these patients, including the stroke patients who has rehabilitation issues, and at the same time we review their medications and look into where their medications are optimal and their blood pressures are controlled, diabetes is in control or not. And then if not, then we refer them within our hospital and put our recommendation directly to the team who are following up, let's say if it's endocrine or if it's is a stroke physician, just to say that these kind. Remember that we have so many options in medications, but when it comes to specific in our part of the world here, things are covered by insurance, but we have now a lot of patients whose insurance may not be offering them that benefit in terms of the chronic medication. So we shouldn't go with the fancy kind of, let's say for example, if I'm giving someone with the candy and telmisartan and the brand, and the patient cannot afford it, so I have to find out what are the reasons. I have seen patients who are just like labor class, where they cannot afford even a 300, 400 out of pocket. So you have to look into the generic and this kind of stuff where it can help them. And then anticoagulation, this is a big area itself. We have these commonly, I mean, we prefer the DOAC over the warfarin. However, again, this insurance issue and the patient compliance and stuff that we have to take into account. Warfarin, I mean, we know indirectly when patients are prescribed on warfarin, they need to be carefully monitored. I used to do the counseling, and we give them follow-up appointment and make sure they are doing the things routinely, and they don't disappear just out of blue. And then statin therapy, we know that the statins, we are giving different kind of statin. Again,
maybe rosuvastatin if some patients may not be affording it. So then you have to look into which statin and in how many doses into equivalent doses. But usually atorvastatin, we go 60 to 80, or depending upon the patient condition. And sometimes if your target is HDL, so you may add ezetimibe or the other kind of, antihyperlipidemic. Can you hear me? Can you hear me? Yes, Yes, we Dr. are. Maksood, we can. Yeah. I'm going to finish it. Yeah, sorry. Yeah. So antihypertensive, our ACE, our first line, usually in our hospital, we have the ACE and ARB, candesartan, losartan, valsartan. And when it comes to ACE, definitely you have the ramipril and perindopril, especially if you, in combination with the indapamide, if the compliance is an issue, that definitely a patient's, the ACE, which is in combination with thiazide, uncontrolled blood pressure, it can give them the other benefits. Calcium channel blockers, I mean, when it comes to usually, we use the amlodipine and nifedipine extended for on the other comorbidities. I mean, it's so many things on menu, and lot of scenario out of it. So, but as a clinical pharmacist, important thing what I learned, that whatever you do, it should reflect into the patient reality first. The patient, all the way from the patient perspective, his counseling, his way, his compliance, his affordability, so that whatever patient understand in terms of financial impact, in terms of compliance, then it will reflect on the outcome. Otherwise, the best medication will be the one which patient either cannot afford, or patient has to take many times, or patient says, well, when I take this specific, I have a cough, and that is my biggest concern. I don't want to take it. So we have to address the patient deeply at the patient level, what we are going to do so to improve the outcome. Glycemic control, again, we have to, for a lot of patients, we have to keep the glycemic control less than 7%, and some maybe extremely elderly patients do less, life expectancy, maybe 7.5 to 8 is acceptable, depending upon. We are using, again, metformin, but then we have to look into the optimization of metformin. And the new medication, especially SGLT2, which is dapagliflozin, canaflozin, empagliflozin, what we do is that I aggressively and look into these patients who are on other oral hypoglycemic agents, but they are not well controlled, and insurance is not a hindrance affordability. These kind of patients, I mean, sometimes I will see a patient with vildagliptin or linagliptin with metformin, and there is no issue for patient affordability, and they have a recent stroke or a year or 6 months ago, and their diabetes is not well controlled. In these kind of patients, definitely you have to switch between into the dapagliflozin, cana, empagliflozin, and other two, cardiovascular protection and stroke protection. Yeah. And hypoglycemia, again, is also important. Insulin, we have to look into the patients, what type of insulin patient are using, their monitoring. Are they able, if someone is worker, they don't have they are working in remote area and they come up with the hypoglycemia, the issue is with monitoring, then you have to be careful what, we shouldn't be too much, what you call the optimistic. Pragmatism should be their practical approach for individual cases. And medication, admission reconciliations, home medication, these are the patients where, and what I have noticed, I mean, sometimes patients old medications, for example, recently I saw a patient with the zoster vaccine, which was ordered as once in outpatients, and now during admission it was resumed as it is, and the inpatient pharmacy called me. They are asking for this patient to give this vaccine, and this patient is elderly with so much comorbidities, and should we go or not? When I looked into all the history patient, this was an old order in clinic, even patient has taken it. So when I called the consultant, he told me, oh, this is just like a tick mark, maybe from the home medications. So reconciliation in the transfer is also a big issue. When you are transferring patients in ICU to or high dependency to a normal unit or discharging, initially we know that they may be on too much medications, but then you have to take certain medication. That it should be an informed decisions what patient is carrying, and we should question ourselves and the
medication in terms of dosing, in terms of indications, why they are not going or why they are missing it, what happened. Initially, I mean, you may surprise someone, clopidogrel was suspended for the time being during the inpatients, and maybe at the time of discharge, everyone forgot about it and patient went without clopidogrel aspirin. So these are the kind of things where you have to look into, the issues in terms of medication reconciliations. Future directions, we know maybe from epigenomic, DOH and the other people, they are working on genomics, and the future is, I think, maybe in terms of drug metabolism or the response of individual antihypertensive or diabetes or related to the stroke. I think this may be coming in the future generation. We cannot predict when the timeline, but works are being done. When it comes to digital health integrations, AI-powered management, medication management may improve the patient's, the monitoring system and patient prediction, different models for prediction. And as a pharmacist, I mean, in UK, I have one of my friend. I think they have the prescriptive authority. Even in the stroke unit, they have the training, 1 year training, and then specialized stroke care pharmacists. Only they are following these patients, and they have prescriptive authority, and they are doing this. And here, I think in DOH, they have the specialized pharmacist, pharmacotherapy specialized. But when it comes to maybe one day we will have this kind of specialized system over here. The evolving role of clinical pharmacists in stroke provide improved outcomes through innovative therapy expanded. What I notice, I mean, in between, there is so much. I will just conclude my presentation, that these patients, especially, are having so many problems. And I was having a stroke patient. I will give you the story. This patient, after the stroke, disability, and she has been on lot of oral medications, and they put the what you call the PEG tube, long-term PEG tube, and this patient will be getting like atorvastatin, blood pressure medications, clopidogrel. She used to have low potassium syrup, and then she used to have the Capra, the levetiracetam. And what these patients basically, the nurses will be, when they are giving through the NG tube administrations, rather than properly following to flush the NG tube and which medication you can mix with one, home care nurses will be mixing 2-3 medication together, and the PEG tube will get blocked after every few weeks. And I think it happens when we looked into, and we asked the nurse that, how are you doing, the home nurse? And the way she was doing is just like you are preparing a chicken kadai at home, like mix up all things together. So as a pharmacist, a clinical pharmacist, you have to look into whether the patient, if there are extended release product and patient is on PEG tubes, so you have to make into what viable options. If the patient is on levetiracetam tablet and patient is on PEG tube, why it has to be on tablet when you can have the syrup? So these issues and so many other things you have to take into account. When they are admitted, you have to make sure that the patients are on prokinetics, bowel protocols, PPI, and patients are being monitored in terms of the safety. So it's a very broad area in practice, and we enjoy it, everything. But what I do is, I never remember a case in the clinical practice where I come with comprehensive management plan, which is very practical and specific to the patient, and the team didn't agree. But the point is, when they call, they agree, they follow you as a clinical pharmacist, you have this credibility, then it comes with big responsibility. So all those things you carry on with responsibility, outcome in mind, specific to that patients. Thank you very much, and for giving me the opportunity. I'm 8 minutes. I took extra minute as for me for first time. And when it comes to the clinical pharmacy, by the way, having so much cases and so much involvement, I always get like super excited to share the things which we have seen. And hopefully we will benefit our juniors and things. And if anything in future we can do for our profession. Once again, I say thank to the whole management and Siddiqui Saab and Abisha and everyone. Okay, I will finish my presentation here. Thank you, Dr. Maksud Khan, for sharing your valuable insights on time is brain medication strategies in post-stroke care. With that, I would like to pass it over to Ms. Aisha. Over to you, Ms. Aisha.
Over to you, Ms. Aisha. Assalamu alaikum everyone. Sorry for the inconvenience. This side Aisha Shehzadi, moderating the session of Dr. Ghulam Mujtaba. It's my pleasure to welcome Dr. Ghulam Mujtaba, Pharmacy Manager at Pakistan Kidney and Liver Institute and Research Center, Lahore. With over a decade of experience in medication therapy, management, and patient-centered care, he has expertise in conducting comprehensive medication reviews, optimizing therapeutic plans, and ensuring the safe and effective use of medications. Dr. Mujtaba holds notable qualifications including PharmD, MPhil, board certified pharmacotherapy specialist, and certified healthcare quality profession. Today, he will share his insights on pharmacist's role during step down to acute care. Please welcome Dr. Ghulam Mujtaba. Over to you, Dr. Ghulam Mujtaba. Thank you very much. Can you please confirm? Can you hear me and see Yes. my screen as well? Yes, sir, you are audible and your screen is also showing. Okay. Thank you very much to the entire team of Giving Back to Farms in Pakistan. So it's an excellent platform where we get a chance to discuss such wonderful topics and share the insights with the pharmacist community. So this is a very important topic, and I'll try to be as brief as possible because much has already been discussed regarding the medication reconciliation. So moving forward, I'll start with usually I start my presentation with a case scenario, so that makes kind of interesting. So a 72 years old male, history of hypertension, type 2 diabetes mellitus, CKD stage 3 and CHF, was admitted to ICU and had a septic shock. The patient required intubation, vasopressor, and broad spectrum antibiotics. So over the course of 6 days, the patient was stabilized, but the patient unfortunately developed a new onset atrial fibrillation, which was not there at the time of ICU admission. The patient had a rapid ventricular rate during the ICU stay. So the team decided to treat it with a rate control strategy with IV deltazim. And patient was started on therapeutic anticoagulation with IV heparin. So his STAT-VAS score was 4. And there was a clear-cut indication for the long-term use of anticoagulation. So patient was improving, extubated, weaned off pressors. Medication reconciliation not performed at the ICU time at the time of transfer, where they decided they are going to step down the care. The heparin infusion stopped when the patient was leaving ICU. No other place for oral anticoagulation. So the folks who work in critical care or the clinical pharmacists, they know this requires to be bridged when they are going to stop and they are going to start the either the DOACs or the warfarin. So what team was unaware of the atrial fibrillation diagnosis and anticoagulation indication. So on day 2, after the transfer, what happened? Patient developed sudden left-sided weakness and slurred speech. The CT brain was done. It could have been a MRI brain or the CT scan. So patient had an acute ischemic stroke. MCU territory stroke was attributed to the missed anticoagulation and a high-risk atrial fibrillation. So this was kind of a real plus a made-up case. So we had a patient where we successfully identified this thing when the patient was transferred, and we were lucky enough to identify it very quickly. Otherwise, the same kind of unfortunate medication error would have happened. So what are the key learning points? So ICU to ward transitions are high risk for medication errors. Anticoagulation in atrial fibrillation with CHAT score above 2 is life-saving and should never be omitted. Medication reconciliation at step down would have ensured transition from IV heparin to oral
anticoagulants. Pharmacist involvement definitely can prevent critical emissions and reduce the morbidity and mortality. So we know this is the transition at the time of at the time of transition of care. Three types of error usually occur, and this is very much supported by the available evidence: duplication, omission, wrong doses. So ICU medications often not appropriately reviewed for acute care when the especially it's a common practice when the patient is being transferred from the acute care to the ward. So ward is kind of a why the nurses and the staff, they are not as much trained as the ICU people, and if the reconciliation is not done successfully and the patient is not followed post ICU care and post ICU transfer, there are transition related readmissions and unwanted ADRs happen, and if that happens, it ultimately will increase the mortality and morbidity, as we saw in previous case. So what we have to do, we have to verify all the active medicines at the time of transfer from one unit to another, especially from ICU to the ward, because in the ICU, you are managing patient in a sort of different scenario. And when you are going to transfer the patient to a ward, now this is the time where the patient should be started on the home meds, if there are any. And say, for example, if your patient was on the IV antihypertensive therapy, and now you are thinking to shift the patient to the ward, this is the time to transfer the parental antihypertensive and antibiotics to the oral one. So and we have seen examples, and literature does exist, where we have seen the paralytics were continued despite the patient was transferred from one unit to another to the ward. So there are examples where the high doses of steroids or the stress dose steroids that we usually continue as part of the vasopressor sport, so they were continued without any indication. So what we need to do is to continue the chronic disease therapies for hypertension, diabetes, and epilepsy, because these are the most common indications. And what we need to do is to, in case of, why we are discussing these common diseases or the common conditions, because they are the ones that are supported by the literature available. So we have to optimize the dosage, duration, and we have to make sure the IV route was transferred to oral, because this is the time where patient has started and tolerating the per oral feed, and the NG tube or the OG tube is removed and the patient has started taking orally. So this is the time where the medication needs to be switched from IV to PO. And we need to make sure the prolonged broad spectrum therapy, and we need to ensure that the step down care is ensured. So there are other examples where when the pressors and anotropes are switched, we need to resume the antihypertensive and diuretics. And if there are anticoagulants, they require bridging the therapy. Say, for example, if the patient was on IV heparin, they need to be switched to the lower molecular weight heparin or the DOACs or the warfarin. And there are cases where, for example, when the patient was in ICU, patient had a septic shock, patient had a kidney, and in this septic shock, the most common organ that is going to hit is kidneys. And we know that almost 70% of the drugs are excreted through the kidneys. And after a certain number of days, the shock was treated, the perfusion was maintained, and the kidney has started recovering. Now, this is the time where you need to see whether the initial dose adjustments that were done in the ICU
whether they need to be reviewed and the doses need to be escalated. This is a clinical case-based scenario, but we need to make sure that we cater for such kind of scenarios. So if it's delirium, so delirium is quite common in the ICU population. So the literature says that 30 to 70% of the ICU patients will have delirium at some stage of their ICU stay. So we need to ensure that if to minimize the incidence of delirium, the patient should be early de-escalated from the ICU to the ward, and we need to ensure that the patient is being educated, the sedatives and the opiates are being discontinued, and the patient is not monitored, and patient goes back to the normal life, so that the delirium incidence of delirium or the severity can be minimized. So highlight medications. So later during my presentation, we'll see literature where we would see that this becomes more dangerous when there are highlight medications, and for such medications we have to be extra cautious from reconciliation point of view. And we have already discussed those adjustments, and so we need to ensure that the patient and the family has been consulted regarding the indication monitoring, side effects, or regarding adherence of the medication. So these are the common errors that have been reported in and during the step down care from the ICU to the ward or to any step down unit. So there are different settings. At some settings, the patients are directly transferred to the ward, and there are other settings where the patients are stepped down from ICU to another kind of a close monitoring area. So it depends on the settings, but unfortunately the place where we are practicing, so it's very common that the patient are directly transferred from the ICU to a ward unit, and we don't see the culture where there is a team that follows up these patients after they have been transferred to the ward. So this is one example of the literature where medication reconciliation for patients after their discharge from intensive care unit to the hospital ward. When we see 452 patients were reconciled, and when we see so at least one discrepancy or reconciliation error existed in 34% of the patients. And when you see it, the most found error were those are administration route errors, where the route was different as it should have been. 31% were emission errors. And when you see in 19% of the cases where the reconciliation errors occurred, any of the highlight medication was involved. So we can imagine the level of harm that the patient can go through if there are errors associated with the highlight medications. So another literature, very interesting one, where the 985 patients transferred 450 had a medication error during transition of care. And when you see closely at the highlighted area, the most common types of the errors were regarding the continuation of medication with ICU only indications. So for example, as we discussed, if the patient was started on paralytics, on the sedatives, or the IV therapy, that was continued. And what we saw in my practice, the most common thing that if the pharmacist misses, or the regular the team misses, was the PPIs. The PPIs should be discontinued when there are no risk factors for the stress stress-related mucosal injury. So the PPIs should be discontinued. But what we saw, they were continued even during the ward, and even some physicians resist this change, this kind of interventions. So for untreated
conditions, there were missed doses and pharmacotherapy without indication in 11.9%. And look at this, 75% of the errors reached the patient, but did not, fortunately did not cause any harm, but they had a potential to cause harm. So what are the takeaways? Step down is a high risk phase for medication safety. Pharmacist has a very, very active and direct role. Their direct impact will reduce the readmissions, ADRs, and will improve the outcomes. So any questions? So thank you very much. That's all from my side. Thank you so much, Dr. Mujtaba, for sharing your expertise and providing comprehensive overview of the topic. With that, I would like to pass it over to Ms. Mishail, who will be moderating the next segment. Over to you, Ms. Mishail. Assalamu alaikum. Thank you so much, Aisha and Dr. Ghulam Mujtaba, for the wonderful session. I'm Mishail Vakar, a recently graduated pharmacist, and it's a pleasure to be part of giving back to pharmacy in Pakistan. Let's dive in. I would like to introduce our next speaker, Dr. Azam, who will be speaking on stabilizing the heart, pharmacist-led cardiac medication optimization. Dr. Azam Ishaq is a highly experienced, specialized renal transplant pharmacist with over 15 years of clinical practice in leading healthcare institutions. He earned his PharmD degree and went on to achieve BCPS, reflecting his advanced expertise in evidence-based pharmacotherapy. He started his career as a clinical pharmacist at Shaukat Khanum Cancer Hospital in Lahore. Then he moved to Abu Dhabi and joined Sheikh Khalifa Medical City. Throughout his career, Dr. Ishaq has served in various hospital settings where he has played a pivotal role in optimizing immunosuppressive therapy and preventing drug-related programs. Now he is serving as a preceptor in PGY1 Pharmacy Residency Program at Shaukat Khanum Memorial Hospital in Lahore. Over to you, sir. Thank you, Michelle, for this kind introduction. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay, thank you. I think you will operate my presentation. Yes, sir, you may start. Sorry, I can. My voice is echoing. Let me check one sec. So perfect for us. Child, it's okay now. Can you hear me? Yes, Dr. Azam, we can hear you, and it's completely audible. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you, Dr. Siddiqui, for this opportunity. And I remember like how you started and we gathered, and this program started like a few years ago. Let's jump into our main topic, which is like burden of cardiovascular disease in the whole world. Let's start with the case. This is actually my patient. I work in a renal post-renal transplant setting. So this patient is having heart failure, 60 years old. I couldn't put the labs for this patient, but he is on multiple comorbid condition and with this medication. If we'll see worldwide, cardiovascular is one of the leading cause of death, not only in US, also in UAE, which is around 40% mortality rate with these cardiovascular diseases, and also in Pakistan. The recent data which I went through, like it shows like the cases are rising. Could you go to the next slide, please? Correct. So heart failure is a clinical syndrome with a peculiar rise in the incidence and the prevalence.
irrespective of the milestone which we have achieved in the medical field of treating this heart failure, management of HF has been challenging for the healthcare provider. Next slide, please. So, Pharmacist has recently involved in MDT for this heart failure in my hospital, where we see these patients. So before going to discuss the case, I just want to go through a little bit pathophysiology of the disease to understand better about guideline-directed therapy. As we know, when heart failure, systolic function lead to the activation of the neurohormonal system, where our sympathetic nervous system is involved. Our RAS system is get activated, and along with that, with our BPN is get activated. So these are the three things which will be focused, and our medication therapy will that. So the first thing is like, as there is a decline in systolic function of the heart, that leads to the activation of cardiovascular and vasoactive center in medulla. So in response to that, baroreceptor get activated, and they cause a decrease in increase in sympathetic flow. So our beta receptor, which are on the heart and on the kidney, they get activated. Once our beta receptors get activated to compensate the decrease in cardiac output, that leads to some transformational or structural changes in our heart to compensate that decrease in cardiac output. So once we know Hi, Dr. Azam, you are not audible. Hi, Vishal, is it okay? Yes, Dr. Azam, it's fine. Thank you. I think it was disconnected. Sorry for that. Connected. All right. So the pharmacist's involvement is very important to deal with the polypharmacy, as we know the mechanism of this disease. So similarly, we will divide our pharmacotherapy planning based on these mechanisms. As I said, there are some therapy which target the sympathetic nervous system, the other the RAS, and this one BNP. So if we will, next slide, please. Anyhow, I think there was some issue. Okay, I'll go through by myself. So the first therapy, which is like reduce the mortality. So if we discuss about the mortality, it means that beta sympathetic system, when get activated, it effect on the beta receptor, and the beta receptor when get activated, it increase the heart rate and the contractility, which increase the oxygen demand, and to increase that oxygen demand, our heart pumps faster. Already there is vascular resistance. So also when the beta 1 receptor on the glomerular in the kidney is activated, they activate the RAS system, which initiate
ACE inhibitor, ACE angiotensin converting enzyme convert AC1 to AC2, which again increase the cardiovascular resistance. So all these mechanisms, what they add on is to try to compensate that decrease in the cardiac output. So we have guideline directed therapy, which decreases this mortality, including beta block. Dr. Azim, you are not Hello? audible. Yeah, now you're audible. Is it okay? Okay, sir. All right. Yeah, Sorry good. for that, sir. I don't know what's the issue. All right. No problem. It So, does happen. thank you so much. Okay, the most important thing, I think there is the slides are not according to what I have in the last slide. It's not arranged properly, so no worries. So there comes the role of pharmacists. As we know, there is guideline-directed therapy, including the medication which will affect this hormonal cycle. To break that cycle, we have beta blocker, we have ACE inhibitors and ARBs, and we have also ARNI and mineralocorticoids antagonist. And there is new therapy which is SGLT2 blockers. So the role of pharmacist is that, like, when to start the therapy, when to add on the therapy, and when to switch to the other therapies. So to achieve the optimal therapy, we have seen, like, there is a trial, we call it like strong HF trial, where we have seen two type of the patient with failure, where we see, like, if we start the therapy early and we rush towards the targeted doses and we increase Hi, Dr. Azim. Hi, Dr. Azim. Hi, Dr. Azim. You are not audible.
I think there is some technical issue. We'll move to the next speaker. Our next moderator is Manahil Iqbal. Can you move forward, please? Assalamu alaikum everyone. My name is Manahil Iqbal and I'm a fourth year pharmacy student at Iqbal University. It's my pleasure to serve as your moderator for today's session. Now let's move on to our esteemed speaker. Please join me in welcoming Mr. Dharam Dev, an inpatient pharmacist at Aga Khan University Hospital in Karachi. With a strong foundation in critical care and a growing expertise in pharmacotherapy and medication management, Mr. Dharam Dev is dedicated to delivering high-quality patient care. His expertise includes conducting thorough medication reviews, providing patient discharge counseling, and performing medication reconciliation to ensure optimal therapeutic outcomes. Today, Mr. Dharam Dev will share his insights on the importance of seamless transitions from hospital to home, focusing on medication reconciliation and patient education. Let's welcome him and hear his valuable perspective on this crucial topic. You may start sharing your screen, Mr. Dharam Dev. Over to you. Is my screen visible? Yes, Dr. Dharm, it's visible. Assalamu alaikum. Oh, In the name of Walaikum salam. Almighty, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum to all of you. As the Manail has given my introduction, I'm currently working as an inpatient pharmacist at Aga Khan University Hospital. The topic which I am going to discuss today is about the patient journey from hospital to the home, in which my focus will be on the medication reconciliation and the discharge education. First of all, discussing the objectives of the presentation. Initially, I will discuss some key terminology which will be used, which will be the base part of our presentation. And after that, the focus will be on the medication reconciliation. Why we do the medication reconciliation? Why we need it? When we have to do it? Who is the person or the corresponding person who do the medication reconciliation, and how the medication reconciliation affects the patient outcome. After that, the main focus will be on the discussion of key errors which are found during the medication reconciliation and patient discharge counseling. Now, starting with the definition of hospital discharge. Hospital discharge is simply the conclusion of a inpatient episode within the hospital when the patients leave the hospital either after treatment, whether for cure or either for the transfer to another institution in case of transfer, Sorry, in Dharam, case to of interrupt referral. you. Sorry, Dharam, to interrupt you. We are seeing your slide as empty. Can you please reshare and check? Yes, yes, now it's visible. Thank you. The hospital discharge. The hospital discharge is the conclusion of a inpatient episode within the hospital, which occurs when patient leaves the hospital either for the treatment or either for cure or transfer to another institution, or as a reference from the clinical team, or in case of death. The second topic is the types of hospital discharges. The type of hospital discharges are of 5 types. Number 1 is the planned discharge. That means when patient get admitted, get the treatment. After that, there is a clinical improvements in the patient, and finally, the medical team decides to discharge the patient. This is the planned type of discharge. Second type of discharge is the LAMA. That means leaving against the medical advice. When the patient leaves the hospital, disobeying or disfollowing the
medical advice. Third one is the absented from the hospital. That means patient get discharged from the hospital without clearing the payments and without following the protocol. Now the fourth one is the referral to another hospital. In this case, the patient is admitted in one hospital, and after that, if the patient condition become more severe, that means its treatment, the treatment of a patient is beyond the level of that hospital, then we refer it to another hospital. And the major reason in the LMIC country like Pakistan is the financial issues, due to which the patient get transferred from one hospital to another hospital. Your slides are not changing. Now the patient counseling. Patient counseling, is it visible now? Is it changing? No, sir. No, Your we are- slide is visible. Yes, but your slide are not changing. Is it changing now? No, it's still on the hospital discharge slide. Now it's visible. Patient counseling. Oh. Patient counseling is defined as the providing medication information either orally or in written form to the patients or their representatives, attendants, which contains the direction of use, advice on regarding the side effects, precautions, and the storage and diet and lifestyle modification of the patient with respect to medication and the specific condition. Now, the next term is medication reconciliation. The medication reconciliation, it is the process of identifying the medications which are currently being taken by the patient. After that, these medications, after the appropriateness review, these medications are compared to the newly ordered medications when patient get admitted to the hospital. After comparison, the discrepancies are noted and identified and then discussed with the patient care team. After that, the reconciliation of medications is done. Now the question arises why we do the medication reconciliation. The one word answer of this question is that we simply do it for the patient safety. Medication reconciliation is, we do medication reconciliation because the medication reconciliation brings the ripple effect. How it produces the ripple effect, we have studied in physics that there are, when we throw a pebble or stone in the water, there are ripple-like waves are created. The same effect is observed when we do the continuous process of medication reconciliation is established in an hospital. Then this type of effect is observed. How it is observed? When we do the practice of medication reconciliation, there is definitely the reduction in the discrepancies of medication. When there is a reduction in the discrepancies of medications, this leads to the reduced DRP, but a reduction in the number of DRP, drug-related problems. Excuse me, sir. Sorry to interrupt you, but your slide is showing the patient safety picture. Yeah, now it's medication reconciliation. You may continue. Reduction of medication reconciliation produces the ripple effect, which occurs in a form that there is a reduction in the discrepancies of medications, which lead to the reduction in the number of DRPs, drug-related problems. When there is a reduction in number of DRPs, which leads to the three types of effects. First of all, there is a reduction in the workload of the healthcare professional, which leads to the increased efficiency and quality in the patient care. Second one, there is a reduction in the morbidity and mortality of the patient, and which ultimately leads to the increased safety and quality of the patient life. Third one is the reduction of hospitalization. That means that re-hospitalization. That means the once after doing the medication reconciliation, we observed that those patients in which medication reconciliation has been done, there has been reduced number of re-hospitalizations due to reduced number of drug-related problems. Now, when we do the medication reconciliation, at all steps of patient care, we do the medication reconciliation
at the time of admission to the hospital, at the time of shifting of patient from one ward to another ward, means from emergency department to the ward, general ward or to the ICU ward, there is a medication reconciliation, and at the time of discharge, when patient is just leaving the hospital, we do the medication reconciliation, and after that discharge comes. Now question arises, who do the medication reconciliation? Everyone involved in the patient care do the medication reconciliation. Either it's a physician, either it's a nursing staff, or either a pharmacist involved in the patient care do the medication reconciliation. Now, how we do the medication reconciliation? Medication reconciliation can be explained from this pictorial image. In this, first of all, we collect the patient's information. We collect the patient information either directly from the patient if the patient is stable, or from the attendants. After collecting the medication information, it is verified. We can verify it in a form that if I have asked from the patient, I can cross-check it from the attendant as well. I can cross-check the information from the medication record documents if the patient have. After the verification of the information, this information is compared with the new medications which are being ordered or which are being decided to be continued by the medical team or patient care team. After that, we cross-check both of the medications. Initially, the patient was taking at the home and those which we have recommended. After that, we reconcile, we adjust those medications, and after that, the final list of the medication is let's process works. Medication reconciliation process is based on the 4 to 5 factors. Number one is the patient education, patient involvement. Once we are doing the medication reconciliation, we should keep in mind that patient is fully involved, fully engaged and interested while reconciling his or her medication. After that, we try to complete and form a accurate, best possible medication history. And we implement the medication reconciliation at the time of admission and at the time of discharge. And after that, during medication reconciliation, there should be the interprofessional communication, and which leads to the positive results. And the final one, which is the major one, that is pharmacy-led medication reconciliation in an institute. Is my slide visible? Not now, Dr. Dharam. Can you reshare? And I will suggest you not to show the presentation mode. Just you can share the screen without the presentation mode. Okay. Reshare it and share it without presentation mode. Is it visible? Yes, it will remain visible, inshallah. Yeah. Okay. Now moving to the next step of the presentation, which is about the medication reconciliation. In this part, I will review the most common types of errors which were identified during the discharge medication reconciliation and patient counseling, and it will be discussed, inshallah, in the light of the practice scenarios. The number one is the omission of the routine medicine. This is one of the most common type of error. That means the patient get admitted to the hospital and the patient was taking the medication at the home, which is his home medication. But when the patient get admitted to the hospital, the new medications have been ordered and that medication was discontinued. And this medication can be the most critical or high alert medication or most needed for that indication, or patient can be suffering from that comorbidity which may have worsened during the hospitalization.
The second one observed error is the duplication of medication. This type of error most of the time get filtered from the satellite. This occurs when there's a patient is taking the medication in the combination form. Like patient is taking the amlodipine and valsartan, but when patient get admitted to the hospital, the physician also orders the amlodipine separately, and amlodipine and valsartan again the same. Though if the dose in the therapeutic range we can give, but there are chances of duplication at the time of discharge. The third one is the dose error. It is the most common type of error which is being done. Dose error can be with respect to the pharmacological dosing. It can be with respect to the pharmaceutical dosage form. Because with respect to the bioavailability and biopharmaceutical scenarios, now the fourth error which is encountered in the hospital is about allergy. Multiple patients which get admitted to the hospital, we have no record of the allergy. The allergy record is not updated. Like many patients have the allergy to the penicillins, but due to the infection, the patient is prescribed another penicillin or another class of like cephalosporin. So there is a chance of allergy, or the patient is having allergy from the NSAID. And when patient get admitted, we are giving the NSAID for the pain relief or for the anti-inflammatory action. Now the fifth type of error error which is observed is the drug-drug interaction. Drug-drug interaction is most common, and most of the times in the institute where I am working, it gets filtered by the system and also the trained pharmacist, but sometimes it gets missed. It can be due to the same timings or due to the same timings or frequency of the drug. It can be due to the pharmacological or pharmacodynamics issue. Like one of the error which recently during discharge counseling I observed was that the patient was taking the valproate as an home medication for the seizures, and during discharge the patient was also prescribed for the meropenem for 3 days. But during the review of the medications, I got to know this. As we have the drug interaction between meropenem and valproic acid, the medication team was informed about this interaction. The valproic was continued and meropenem was switched to another antibiotic. Now, the next error which was encountered was the drug-food interaction. Drug-food interaction play a vital role in some of the scenarios. There are some type of food which interact with the medication. Like during one of the scenario where patient was being discharged, and after the discharge, there was a diet plan was also shared by the dietitian team, and it was noted that patient should take high quantity of protein. But when I reviewed the medications, I found that there are in the list of medication there was the Selimet as well, means carbidopa levodopa. There's a drug interaction between the proteinous diet and carbidopa and levodopa. So the patient was counseled and medication team was informed, and the diet plan was bit changed. Patient was counseled regarding to keep the gap between the diet and the dose of the medication. Now the wrong drug frequency. There are some drugs which need to be taken at the prescribed time, and during the discharge or during the due to improper medication reconciliation or due to improper medication history, when patient get discharged, patient is taking the both drugs at the same time. Like there was a scenario which was discussed that the patient was taking the levothyroxine at the home. And when patient came to the hospital, both levothyroxine and omeprazole was also started on the patient. So both levothyroxine and omeprazole were continued at the same time.
And after intervention, the timing of omeprazole was changed, while the levothyroxine timing was kept same. And levothyroxine should be given in the acidic environment, so its absorption will be good. Now the second last one error which was observed was the wrong pharmaceutical dosage form. Though it seems that it will not affect, but its effect is a bit greater. Like there are errors which have been observed, like patient was taking the labetalol oral at the hospital, but at the time of discharge, the same dose of labetalol was prescribed in the IV form. Though in routine form, we do not continue the labetalol IV. So there are some biopharmaceutical and bioavailability issues in the dosing of the medication with respect to its dosage form. And one of the most common type of error which is observed is in the form of plain tablet and talc-coated tablet, especially in the form of prednisolone. When the patient is on the steroid therapy and patient from home, the patient is taking the enteric thread, but at hospital, the patient is in therapy which is initiated is on the plain prednisone. Moving to the next one, the administration error. It is one of the critical error. In this, I will explain a scenario. There was a scenario. Patient was having a central line. From that, the amphotericin therapy was continued to the patient. During the hospital stay, the amphotericin was continued, but at the time of discharge, the central line was removed and patient peripheral line was inserted. But when the amphotericin was processed, it was processed with the dilution same as of central line. So this is the error. Because if we administer the concentrated diluted amphotericin, which to be administered from central line, if we get administered from the peripheral line, definitely it will produce the amphotericin allergy. Another scenario which is that there was a patient which was being discharged and patient was prescribed azithromycin and ceftazidime avibactam for the multiple drug resistant microorganisms. All was set. Patient dose was also accurate. Patient the frequency was also accurate, and both of the drugs were in their perfect dilution. But the medication team, or we can say nursing staff, has not counseled the family that these two drugs will be administered from the same Y site at the same time for 3 hours. So during when patient was during counseling, when patient was asked about these medications, so the patient and the family was not aware. So this intervention was made. This point was being noted in the medication discharge sheet, and in which it was mentioned that these medications will be administered at the same time to get the better outcomes, as these both medications produce the synergistic effect. Now the final one is the missing renal and hepatic status. Multiple drugs which are need to be adjusted renally are not renally adjusted. Most of the times, not some, most of the times, these errors are set by the satellite pharmacist, but sometimes these errors get missed and are being corrected at the time of discharge and during the medication reconciliation at the time of discharge. It can be due to the renal status, due to the hepatic status. During hepatic status, we check the child pop score, we adjust the dosing as per the child pop score, and the medication therapy is modified. Finally, I will discuss the points which should be focused during the medication reconciliation and discharge counseling. ये online करो completely. Medication reconciliation and discharge counseling is that we should inquire from the patient that either patient is taking any herbal product or not. Because in Pakistan, we are well aware that in every street,
we have a herbal shop or where the person is selling the product with the title that it could cure everything. ये हर मर्ज का इलाज है. So we have to reconcile that is there a patient taking any herbal product which not only produce the interaction with the prescribed therapy but can also be lethal with that medication. The dose and frequency route should be confirmed. We should cross-verify the information. Like if I am doing the counseling of the patient, and patient after 4 to 5 medication, like there are 7 medications, after 3 to 4 medication, I can repeat. Like during reconciliation, we can pick the box of rice. We can ask from the patient. मैंने अभी जो समझाया वो आपको समझ में आया, ये दवाई किस टाइम लेनी है. So there should be a two-way communication from the patient. Definitely, when the patient is involved, when patient is interested, it will produce a good result. And the final one is that we should focus on key drug. That means key drug for that specific indication. Like I have discussed about acetaminophen, avibactam, and azithromycin. These two drugs were the key drugs for that entire discharge medication list. The final one is about the hurdles which are faced during the medication reconciliation and discharge counseling. It is the language, one of the most common hurdles. Like as I am working in a tertiary hospital, I have experienced these scenarios. I still remember there was a patient when I went for the discharge counseling and came to know that the patient is from the northern area and only know the language that is Hindko, I guess. Yes, so, and don't know Urdu, but very little bit Urdu was understood by the one of the attendant, and that attendant went for the billing. So I waited there. Then I went to the ward representative, UR, and I told that person to page in the ward that do we have any staff who can explain the patient in the Hindko language. And fortunately, it was my fortune that I got the staff. I called him. I explained him all the medication one by one, and those medications were explained to the native language of that person. And each and every medication was explained in that language, and it took definitely double the time than a regular patient. But after discharge counseling, after counseling the whole medication, the patient expression was immatchable. The patient was really happy, and at least the patient, I believe that if there are 10 medications, at least patient was made aware about the 6 to 7 medications. Then the second problem is about the poor patient memory. Patient sometimes forget about the medications or is not able to inform about the details of the medication in a more proper way as it should be. And there is a hurdle in the, we have hurdle in the documentation, as we in the rural areas especially, we don't have the systemic based pharmacy, systemic based hospital work, we have the paperwork. So during these transfer of the patients, some of the documents, some of the patient important information might get displaced. The final hurdle is the polypharmacy. Any questions? Any queries? I hope the session was a bit engaging and bit knowledgeable. So final message of this presentation is that our medication is a ray of hope for some. That's it from my side. Yes. Thank you, sir, for sharing your valuable insights and expertise on medication reconciliation and education. Now over to the next moderator. Thank you, Minal. Assalamu alaikum and a very good evening.
I'm Fala Salim, your moderator for this session. It is my honor to introduce our next esteemed speaker, Mr. Muhammad Omar Khalid. Omar is clinical pharmacist, advanced practice pharmacist, compounding supervisor, and pharmacy informatics regulatory compliance supervisor in Scandinavia region. He is a master program candidate in health and technology. He is also part of European Society of Oncology Pharmacy, giving back to pharmacy as consultant and board member. Omar earned his Doctor of Pharmacy degree from University of the Punjab, Lahore, and completed pharmacy practice internship at the Department of Shaukat Khan and Cancer Hospital, Lahore. He holds an adjunct faculty position at an international allied medical service institute for delivering compounding education. His interest in digital health and pharmacy informatics design, implementation, and compliance has led him to become an expert in regulatory compliance, artificial intelligence in healthcare, telehealth, electronic health records, health information exchange, and pharmacy benefits management system. Dr. Umar, I request you to present your topic, which will serve as ambulatory practice, titled as Counsel Don't Just Dispense, Enhancing Patient Safety, Patient Understanding, and Adherence. Over to you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। इतनी ज़्यादा बातें अपने मुतलिक जान के मुझे खुशी हुई है पहली मरतबा। सो नाइस टू नो अबाउट दीज थिंग्स। Let me start that topic. Let me start first of all, I would like to say thank you to the team giving back to pharmacy in Pakistan. These people are working really very hard to empower the pharmacists in Pakistan. So please join their mission just to rise the healthcare standards in Pakistan. Regarding to the presentation, I have no financial relation to disclose, and about that presentation, I'm not going to share any off-label use. And additionally, I have used some AI tools, but these tools are humanized by myself. Okay, now let's talk about the topic. And last presentation, it was like overlapping with the same topic, and thanks to the presenter, they have cleared a lot of concepts, so it will be a easy way for me to move forward. So let's start. What is the counseling? Why do we need a counseling? Now, there is a study which shows that if the 100 prescriptions are generated from a physician office, so approximately 50 to 70 will arrive at pharmacy. 30 prescription patients, they are not going to pick up the medicine due to some reasons. And then they will pick medicine like up to 40 to 60, and the patient, they are going to pick that one. And out of those, only 30 to 25 will be taken properly, and the 15 will be refilled as they are prescribed. So what could be a reason for that one? So it is like a lack of adherence to a treatment. Why does this happen? Because the pharmacists, they are not able to build up a trust with the patient. So how do they can build that trust? So this is by the counseling. So now let's define the counseling. I have combined the definition from different ways. So counseling, basically, it is an interaction between a patient and or a patient caregiver or a pharmacy team or a healthcare team. It could be a face-to-face, it could be a verbal, it could be a non-verbal as well. And they are going to discuss about the treatment plan, about their disease, about the medication, the usage, lifestyle modification. What could be a impact of that one? Definitely, it will rise the healthcare standard in a country, and by achieving a KPIs to optimize the therapeutic outcome to promote the safety and efficacy of the medicines. Now, we people want to do a drug recounseling. So what are the challenges with us? So first of all, like pharmacies are very busy, so there is a no time. So time is a problem with us. Second thing is a healthcare literacy. That's a big challenge. Like I have faced that one once I was working in United Arab Emirates. So the people, they were multicultural people. And similarly, right now, this is the same problem we people are having in a Scandinavian country. So people are again from a multiple societies. So they have a different types of like the understanding about the health. What is actually a health? How to deal the health? Then the language barrier, definitely when we are going to apply for immigration or we are going to move from one country to another country. So first of all, what is coming to us, it's a language proficiency test. We need to pass that one. So that's the biggest challenge what I have faced on several years.
and then everything is going fine. We want to offer that one the counseling to a patient, but patients are engaged patients, they don't have time. So the point number one, that was a time based upon the pharmacy activities. But now the point number four, it's like from the patient side, they are engaged with some other thing. And now with the next part is the lack of skills. We people need to develop the skills how we can do effective counseling. And so we should move our focus from dispensing to a communication. So once we are going to discuss about the counseling or role of pharmacists in adherence, so at what level pharmacists they can do like that counseling, or even we can make it more simple, how we people can define the role of pharmacists in different committees. So pharmacists could be a part of MTM medication management therapy committee, and they could be a part of transition of care. They could be a part of monitoring, and they definitely they are working as a collaborative member for various societies, and to develop their own personalized care plans. Now, what are the tips to do a effective counseling? So let me just say, counseling could be a verbal, it could be a written, or it could be by a visualization, or it could be by digital apps or some like brochures we can do for that one. So the tip for that one is like whenever we people are going to do a counseling, we need to make sure that we people are going to use a simple words, those words the patient can understand. Language barrier, where we should avoid to use some technical wording so which patient cannot use that. Now let's take some examples, and I am going to share some effective examples from the Norwegian healthcare system. So this is an organization of in a Norwegian healthcare system. Like the other countries, they do have a primary healthcare system and secondary healthcare system. Once we are talking about a primary healthcare system, so they do have a GP system and the emergency room, so health station. So I have found a lot of things we people also are having in our own country in Pakistan. These are available. So organization, it is like quite similar between these two countries. So now let's discuss the 5 primary component of a healthcare system. Once we are talking about the patients, so in Norway, their population is approximately 5.6 billion, and it is a multi-cultural population. So definitely, it's a challenge for them because the healthcare literacy will be varies. And what patient do they need? They need a self-selected and free of cost, readily available treatment. That's a wish of a patient. And second thing, when we are going to talk about the providers, so it is like a hospital, physician, pharmacy, physiotherapist, everybody. In Norway, approximately we are having around 500,000 of the healthcare workers, and there is a severe shortage of healthcare workers in each and every department, and it will keep on increasing. And the pair, as per the GDP, 10.5% they people are utilizing on their healthcare system annually. And we can say like between 80 to 85% healthcare services are organized by government. Only up to approximately 15% these are private services. And the regulatory framework, definitely they people are working under the European regulations. And industries, they people they don't have a lot so much industries or manufacturer, so they love to outsource the services or to just import the services from the other countries. So now let's talk about the pharmacy. In the pharmacy, we people are having 2 types of services. Like the first of all is the prescription dispensing services. When we talk about the prescription dispensing services, so there are various type of prescription. E-prescription coming, electronic prescription coming directly from the physician to the system. And then there is a telephonic prescription and paper-based prescription is there. And secondly, there is an online prescription. How we can differentiate the e-prescription from the online prescription? Patient has got the prescription. Now they are going to order the medicine, online medicine, from the website to a pharmacy. So once these will be ready, they will just come and pick that medicine. So now the other services what pharmacy they are need to offer, or like here I would like to stress about services, because in my upcoming slide I will just focus on that one, how we can develop these services. Okay, so from the pharmacy we people are having services like multi-dose inhalation guidelines and large patient drug misuser and membership services, vaccination. They people have like a very good knowledge about the vaccination. So they always try to get the travel vaccine, seasonal vaccines, or whatever the other type of vaccines are there. So this is like a
we can say a good business in Norway related to vaccination, antibiotic preparation. And whenever we are going to dispense any antibiotic from the pharmacy, we need to make the extemporaneous preparation and need to provide a proper guideline to a patient. So just to ensure the adherence. Medication start meeting, blood pressure measurement, and then their counseling and generic medication substitution and the other medical related documents. So when I start working in Norwegian healthcare system, then I was just looking for that one. What could be like the goal for these services? So after reading approximately 6 months about the article, what I conclude that one, their main goal is just to ensure the adherence, and they love to have adherence, and this can boost their healthcare policies. Now let's take an example from the multi-dose services. Multi-dose services in Norway, they people are having elderly omsorg. This is known as a old age people, and the polypharmacy, they people are using more than 5 pharmacy medicine. Now the adherence from these patients, it was like very bad, very poor. And then the people have started like they initially started to give some like the dose setup to the patient. So patient, they can redo the refill, but it was not effective. And after that, they have started like some reminder system. And these reminder systems, these were based upon technology. And again, these people are old people, and so they are from the like a millennium generation, so it was not effective. So later on they have developed another thing. So they people, physicians are going to set their the medication list to a pharmacy, and they are providing a role to the patient, and every detail is written on that one. So patient, they are just going to open that roll and just going to take the medicine, so they don't need to remember which medicine they need to skip and which medicine they need to use that one. Next one is the inhalation guidelines. So if there is a patient of asthma and there is COPD, so it is a responsibility of the pharmacist to offer that or the inhalation guidelines, to check the techniques, how the people are using the inhalator. And studies are available which shows that when the before this inhalation service and after inhalation guideline service, so there is a huge difference. Now let's take the drug misuser. Definitely, like the other countries, in Norway, there is also a lot of drug misuser, but rehabilitation programs are available for these people. Now again, to ensure the adherence of these patients, once the people are going to finish their course from the hospital, and then on the regular basis, they need to visit a pharmacy to take their dose, because they need to taper down the dose. So it will be done under the pharmacy supervision. Abonnement membership service, this is something what I love to do, and my colleagues, they don't like that one. The reason behind that one is that I have worked in a hospital, and it is for me, it's like just a clinical appropriateness of a medication order. Well, let me just add something about that service. It is like a service where we people just ask a patient, do you need some sort of reminder once your medicine is going to be finished? So we people will make sure your medicines are ready and packed. You will just come and pick those medicines, and so they will just go for that service, and that we people call it like a membership services. We need to open a patient a prescription, and then we need to open our database, and we need to ensure, okay, which kind of medicine is not available and what are the changes in their prescription. Is there any first line choice has been changed to a second line, or there is any other issue, so they don't have any prescription or any drug shortage is going to affect their treatment. So we people are just going to remind the patient, this is a current scenario. You can talk with your physician, so you can adjust the things accordingly before you are going to run out your medication. So it's a time consuming process, but it's really effective. So now let me talk about these services, pharmacy services in Norway, legislation and the financial concern of that one. So how the people are going to frame these things. They have categorized these things as a three things: health help in their own language, and what we call it healthcare help. And the second one is the hälsa tjänsten, and that is called health services. And the last one is a veiledning apothec. What does it mean? It's a guideline we people are going to provide to a patient about a medication. So let me just skip that one and come to that one. Yes, okay, it is easy. So now look at that one. Once we are going to look on these services, basically these are going to enhance the adherence, and the intervention, it will be a counseling. We people are going to provide a counseling, but the way to provide that one and to document and then to get the financial concern or financial payment from the ministry or healthcare department,
they have categorized these services. Some sort of services, this is only a pharmacist they can do. Some types of services, pharmacist and the pharmacy technician that can do. And the other type of service, pharmacist as well as pharmacy staff. So there we need to understand the difference. Pharmacy staff mean to say they are not authorized people. But once we are talking about a pharmacy technician, so these are authorized people. They have like diplomas in pharmacy or something. So this is something to just say differentiate between these things. What could be a benefit of counseling? Now we can say it will definitely improve the health outcomes. It will reduce the hospital readmission. Data are available. It will increase the patient satisfaction. Definitely we people are having the same thing, and it will empower the pharmacists and strengthen the role of pharmacists. So these are the final. So in my last final slide, what I will say, dispensing is not enough. We need to understand and we need to drive the adherence. Pharmacists must be proactive as an educator. Empower pharmacists for the better healthcare and the healthcare outcomes. That's a mission from the Give Back to Pharmacy in Pakistan. Thank you so much. Over from my side. It was a very quick session because as I know, I have put the things only on 15 minutes. So I think I achieve it. Thank you so much, Dr. Umar, for this insightful session. Now, I would like to introduce our next distinguished speaker, Mr. Rana Kamran Mahmood. Mr. Kamran is a board-certified pharmacotherapy specialist who pursued his Doctor of Pharmacy degree from Bahauddin Zakaria University and Master's in Clinical Pharmacy from Gulf Medical University, Ajman. He is a board member of Giving Back to Pharmacy in Pakistan from the past 3 years, leading the board certification program in Pakistan. Mr. Kamran has 4 publications in the field of antibiotics. He has been working in the UAE for 11 years in the retail community and ambulatory setup. Mr. Kamran is currently working as clinical staff pharmacist in Cleveland Clinic, Abu Dhabi. I request Sir to please start his presentation, which will serve as a case wrap-up. And the topic for this is full circle care, a patient journey from emergency room to home. Over to you, sir. Thank you very much, Paula. Thank you very much for the introduction. And I hope my slides are visible. And am I audible? Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा सदीकी साहब का, और क्या ज़बरदस्त डिज़ाइन किया उन्होंने। और मैं, चूँकि मेरी ड्यूटी है कि दरिया को कूज़े में बंद करना, ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि ये दरिया बहुत बड़ा है। और ऐसे था कि आज इंफॉर्मेशन का सैलाब था जिसको संभालना और इसको बंद करना वाकई बहुत मुश्किल था। तो सर, जैसे कि डॉक्टर सदीकी ने स्टार्ट किया आज का सेशन, और उन्होंने फार्मासिस्ट के जो है वो क्लिनिकल इम्पैक्ट की बात की और केयर कॉन्टिन्यूम की बात की, और उन्होंने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें बताई। उसके बाद जो है डॉक्टर सईदा उमैमा ने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, डॉक्टर ताहिरा ने आईसीयू राउंड्स के बारे में बताया, डॉक्टर सैयद उज़ैर ने जो है हमें ट्रांजिशन आईसीयू ट्रांजिशन के बारे में बताया, अरीबा ने जो उनसे हैं हमें sedative and vasopressors and electrolyte balance, and Zishan Ali about the safety. All, if we see after the break, Ayman about the ED pharmacist at the front line, Dr. Masood Khan about the post-stroke care, Dr. Ghulam Mujtaba about the step down to acute care, Dr. Azam, although we couldn't hear him and he couldn't complete, we'll have him inshallah in the next session, and he already has explained about stabilizing the heart. Dr. Dharamdev, I will never forget the reconciliation. You really explain it very well, and again you emphasize on it. And Dr. Umar Khalid, ये मेरे उस्तादों में से एक हैं, और जैसे डॉक्टर सदीकी हैं उसी तरह डॉक्टर मकसूद खान के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करना
It's really an honor. All of the speakers, इसमें से कुछ speakers जो हैं वो they are already developed leaders, and some are in between, and some are the future leaders. And it's really an honor for me to share. And now I would try to sum up whole of the idea. कि हमने जहाँ से स्टार्ट किया था कि हमने ट्रांजिशन ऑफ केयर कि पेशेंट इमरजेंसी में आता है और वहाँ से उसका पूरा जर्नी और वो घर तक पहुँचता है. तो उससे पहले मैं विजन एंड मिशन की बात करूँगा. गिविंग बैक टू फार्मेसी इन पाकिस्तान, आवर विजन इज़ वेरी क्लियर. वी वांट टू एम्पावर द फार्मासिस्ट फॉर द बेटर हेल्थ केयर. And I'm included in this mission, and I'm honored to be a part of this mission. We are aiming and we are trying to reach to our pharmacists and our students. We want to give you all type of skills and all type of soft and hard skills, any type of education material we want to provide you, so you can gear up and you can come and join all over the world leading pharmacists. We want you to be with us, and you will rule over the world leaders inshallah soon. तो अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट जब भी किसी हॉस्पिटल में होता है तो नॉर्मली जो पहले फार्मासिस्ट था ही वाज द लास्ट पर्सन. वो एक एम्बुलेटरी सेटअप में अवेलेबल होता था और पेशेंट का जर्नी स्टार्ट होता था इमरजेंसी से, वेदर ही कैन गो टू द आईसीयू, क्रिटिकल केयर, एक्यूट केयर, एनीवेयर. बट व्हेन ही वाज गोइंग टू बी डिस्चार्ज, after discharge, he went to the pharmacy, he will get his medication, and then he discharged and he go home. And it used to say that we are the last sieve, and we have to catch the errors at that time. अब ऐसा सिनेरियो नहीं है. जो एडवांस फार्मेसी केयर है अब फॉर द पेशेंट, इट स्टार्ट फ्रॉम द इमरजेंसी रूम. इट्स राइट एट द पॉइंट व्हेन द पेशेंट इज कमिंग टू द हॉस्पिटल. अब सवाल ये है कि क्या पेशेंट इमरजेंसी के बाद लाजमी है कि वो आईसीयू में जाए? ज़रूरी नहीं है. ही कैन गो होम डायरेक्टली एज वेल. कि पेशेंट इमरजेंसी में आए किसी भी वजह से और we get to know that the doctor get to know that he already have the treatment what he actually needed. उसे जोन सी भी मेडिसिन चाहिए, पेन किलर्स हैं वो उसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं और उसको मज़ीद अद्वियात की कोई ज़रूरत नहीं है, तो he will be discharged and he can go home even without going and passing through the ambulatory pharmacy. He will go home. Next, it can be possible the patient will discharge from the emergency and he will come to the ambulatory pharmacy, he will pick up his medication and he will go home. Now, अगर हमारे पास emergency में pharmacist available है, this is a message for the learners who are in the student age or you're studying, and for the leadership as well. अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में काम, तो आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए. जो हमने मल्टीपल जो हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने डिस्कस किया कि हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे. हम देखेंगे कि पेशेंट क्या पहले यूज़ करता रहा है, कौन सी मेडिसिन खा रहा था, उसको कौन सी ट्रीटमेंट में था, उसकी कौन कौन सी एलर्जीज हैं, वो उसकी स्मोकिंग हैबिट है या नहीं है. Can be possible his drugs has a contraindication with his smoking behavior, or it can be possible the drugs are contraindicated. It can be possible there is any sort of interaction. It can be possible he is taking a medication but he is not getting the outcome what he should have to receive. और ये भी हो सकता है कि आपके पास पेशेंट एक्चुअली प्रॉब्लम के लिए ना आया हो सकता है कि पेशेंट आपके पास किसी एडवर्स इफेक्ट या किसी प्रॉब्लम की वजह से आया हो कि आप उसकी एक मेडिसिन को जस्ट स्टॉप करें, हिज प्रॉब्लम इज सॉल्व एंड ही विल बी हैप्पी एनफ कि मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स एक्चुअली वी जस्ट हैव टू स्टॉप वन थिंग. जो मसल पेन है, यू गेट टू नो कि उसे जो है वो हमें जो है रोज़ोस्टैटिन को स्टॉप करना है. तो अगर हमारे पास इमरजेंसी में फार्मासिस्ट है तो वो क्या उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या वो एलर्जीज को देख रहा है,
क्या वो ये देख रहा है कि पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री ली गई है या नहीं ली गई है? तो जैसा कि अभी इससे पहले धर्म ने बताया था कि पेशेंट जो है वो नॉर्मली बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज के पेशेंट जो है वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल चले जाते हैं, उसके बाद उनके पास कुछ पिछली मेडिसिन भी हैं और वो अगले हॉस्पिटल जाते हैं, उनके पास कुछ और मेडिसिन भी होती है, तो दैट कैन बी अ डुप्लीकेशन। और एक दफ़ा ऐसे हुआ है, हमने कैच किया है कि पेशेंट क्लोपिडोग्रल भी ले रहा था एक जेनेरिक से और प्लेविक्स भी ले रहा था। तो पेशेंट को तो नहीं पता था कि भाई ये एक ही मेडिसिन है, उसका जेनेरिक एक ही है, लेकिन वो एक ब्रांड है और दूसरा जेनेरिक है। तो पेशेंट इज जस्ट फॉलोइंग कि वो ये समझ रहा था कि बस ये एक एडिशनल मेडिसिन है, ये भी मैंने लेनी है। तो ये जो कैचेस हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं इमरजेंसी से। फार्मासिस्ट का रोल इमरजेंसी से ही स्टार्ट हो जाता है। अब स्वेरिटी ऑफ द प्रॉब्लम के जो हमने देखना है कि पेशेंट की स्वेरिटी किस किस्म की है। क्या पेशेंट इस स्टेज पे है कि इसे एडमिट करना पड़ेगा? क्या पेशेंट इस स्टेज पे है कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वेदर ही नीड एन एक्यूट केयर और वेदर ही नीड अ क्रॉनिक केयर और वेदर ही नीड एन आईसीयू कि उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। तो हम हमारे पेशेंट को किस किस्म की ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये जानना फार्मासिस्ट के लिए जरूरी है। अब फार्मासिस्ट का काम डायग्नोसिस से तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सेवेरिटी ऑफ अ प्रॉब्लम से जरूर होता है कि जो उसको डिजीज है उसकी सेवेरिटी क्या है। क्योंकि सेवेरिटी जैसे जैसे चेंज होती है आपकी गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं। तो आप जो जैसे फॉर एग्जांपल एक नमूनिया का पेशेंट है, तो जो उसकी गाइडलाइंस हैं, और अगर वो नमूनिया विद एनी ऑफ हार्ट फेलियर या डायबिटीज है, अगर उस पेशेंट को 65 से एज उसकी ज़्यादा है, तो वहाँ पे गाइडलाइंस चेंज हो जाती हैं। तो जैसे जैसे उसका स्कोर चेंज होता है वैसे वैसे, इसी तरह न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस है, अस्थमा की डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। तो वेदर द पेशेंट इज एट स्टेज 1 स्टेज 2, ये आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इतना आपको जरूर बताना चाहिए कि स्वेरिटी क्या है। तो ये इससे आपको अंदाजा होगा कि पेशेंट को एडमिट, जैसा हम नमूनिया के अंदर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट विल एडमिट टू द आईसीयू or the patient will admit into the hospital just in the acute care, or the patient will discharge from the pharmacy, just he will get the medication and will go home. So that's all dependent upon the severity of the problem. तो ये emergency में आपको clarify हो जाता है कि patient ने ये patient की fate क्या है, उसने किधर जाना है। और उसके लिए reconciliation बहुत ज़रूरी है, उसके लिए patient की history, पेशेंट की एलर्जीज के बारे में आपको इल्म होना चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पेशेंट जो है वो इसके अलावा कौन सी मेडिसिन ले रहा है, पेशेंट इसके अलावा। अच्छा, इससे दोनों चीज़ें आपको पता लग सकती हैं कि बाज़ अगर होता है पेशेंट आपको सिर्फ मेडिसिन दिखा रहे थे, जी हम ये मेडिसिन खा रहे हैं, तो उससे आपको डिजीज़ का पता लग सकता है। और बाज़ अगर वो अपने मुंह से डिजीज़ बता देता है तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हो सकता है कि वो ये वाली दवाई बताना भूल गया हो। तो यू कैन टेल हिम कि आप ये वाली दवाई तो नहीं खाते हैं, तो उसके जो कॉमन नेम्स हों या कोई पिक्चर्स हों वो आप दिखा के पेशेंट से पूछ सकते हैं कि हो सकता है कि वो भूल गया हो आपको बताना, लेकिन उसके घर में ये जो है वो दवा घर में मौजूद हो। तो अगेन पेशेंट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ, क्योंकि ये समझा ये जाता है कि पेशेंट हिस्ट्री जो है मेडिकेशन हिस्ट्री है या ओवरऑल पेशेंट हिस्ट्री है, इसमें फार्मासिस्ट का रोल नहीं है, ये एक नर्स की जॉब है। ऐसा अब नहीं है। जो अपकमिंग फार्मेसी प्रोफेशन में जो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो रही हैं। फार्मासिस्ट को हिस्ट्री इन फ्यूचर, द फार्मासिस्ट विल बी द वन ऑफ द पर्सन हु विल टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। क्यों? उसकी वजह यह है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट आउटकम, पेशेंट की करंट ट्रीटमेंट, पेशेंट की जो है वो प्रीवियस ट्रीटमेंट क्या थी, और आगे हमने पेशेंट को कौन से प्लान के ऊपर लेके जाना, ये ऑल डिपेंड अपॉन द हिस्ट्री कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी। वो हो सकता है पहले किसी और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हो, वो आपको बस ये बताया कि मुझे एक आधा इंजेक्शन लगा था। वो हो सकता है आपको बताया कि मुझे एक इंजेक्शन लगा था और एलर्जी हुई थी, मुझे नहीं याद वो इंजेक्शन कौन सा था। तो उसमें हो सकता है कि फार्मासिस्ट उसकी कोई हेल्प कर सके ये जानने में कि वो कौन सा इंजेक्शन था, वो कौन सी
ऐसी दवाई थी जिसकी वजह से उसको एलर्जी हुई थी। और जो है वो ये तमाम आप इसका रोल देख सकते हैं कि वेरीफाई करता है ऑर्डर, प्रिवेंटिव इंटरवेंशन कर सकता है और एडवाइस ऑन द ड्रग इंटरेक्शन की अगर किसी भी किस्म की वो फाइंड आउट करता है। अब पेशेंट को आप जो है वो आईसीयू में मूव कर देते हैं। अब पेशेंट इमरजेंसी से उठता है और वो आईसीयू में चला जाता है, और आईसीयू में जब वो पहुंचता है तो देयर इज अ नीड ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कि पेशेंट की जो एक्चुअल अगेन उसकी रिकॉन्सिलेशन हिस्ट्री जो भी कुछ थी वो आप ट्रांसफर कर देंगे जो आईसीयू का फार्मासिस्ट होगा। अब वो यूनिट बेस्ड फार्मासिस्ट है। अब उसकी क्या जॉब है? उसकी जॉब है कि पेशेंट की ड्रग मॉनिटरिंग करना, उसकी जॉब है कि पेशेंट के आउटकम्स को मॉनिटर करना, क्योंकि ये बहुत ही अर्जेंट केयर होती है और इसमें बड़ी जल्दी से पेशेंट के जो लेवल्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, लैब वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं। पेशेंट की जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी उसका पोटाशियम लेवल अप एंड डाउन हो रहा होता है। पेशेंट के तमाम जितने आपको क्रिएटिनिन क्लियरेंस उसकी देखनी पड़ती है। आपको पेशेंट के एक एक लेवल के हिसाब से आपको अपनी ड्रग की डोज या आपकी ट्रीटमेंट चेंज करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई दिस इज वन ऑफ द बेसिक रोल ऑफ द आईसीयू फार्मासिस्ट। इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि वो एडजस्ट करता है रीनल फंक्शन के हिसाब से, इंटरेक्शन के हिसाब से। तो ये जो है हमारा जो आईसीयू फार्मासिस्ट है। इसी तरह हमारे फार्माकोथेरेपिस्ट होते हैं, हमारे जो हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं। और जब फार्मासिस्ट आईसीयू से या क्रिटिकल केयर से एक्यूट केयर में ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हम स्टुअर्डशिप प्रोग्राम्स को भी फॉलो कर रहे हैं? क्या हम पेशेंट को आईवी टू ओरल में मूव कर रहे हैं? क्या हम पेशेंट की मॉनिटरिंग क्या उतनी ही रैपिडली अब होगी या नहीं होगी? आपने किस किस्म की उसकी आइडेंटिफिकेशन की कि अगर आपको ड्रग इंटरेक्शन उसमें मिले हैं तो आपने उसमें क्या आइडेंटिफिकेशन, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मोहम्मद सदीकी ने स्टार्ट में कहा था, देखिए कम्युनिकेशन कैन नेवर बी कंप्लीटेड विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो उसकी जो मिसाल है वो मैं आपको आगे आके इसके बारे में समझाता हूँ। तो इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, आपके जो सारी टीम्स हैं उनके साथ आपको एक कोऑर्डिनेशन चाहिए। आपको डॉक्टर्स के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ, नर्सेस के साथ, आपकी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, उसके साथ फार्मासिस्ट कोलैबोरेट करता है। एंड देन दे फाइंड आउट कि पेशेंट की एक्चुअल नीड क्या है, करंट नीड क्या है, फ्यूचर नीड क्या है, उसको कौन सी मेडिसिन चाहिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसका रिस्क हम कैसे कम कर सकते हैं, सेफ्टी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये वन ऑफ द पाविटल रोल जो है पेशेंट की मेडिकेशन मैनेजमेंट के अंदर, जो कम्युनिकेशन है और कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप राइट टाइम पे देखें, अब आप काम कर रहे हैं फार्मेसी पे, अगर आपको एक डाउट हो गया है कि कैन बी पॉसिबल ये कोई इंटरेक्शन है या इट कैन बी पॉसिबल कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है या कुछ भी है, तो आपकी सबसे पहली जॉब बनती है कि आप कम्युनिकेट करें, आप पूछें। लेकिन क्या ये इससे पहले ये जरूरी नहीं है कि अगर वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए तो आपको पूछने की क्या जरूरत है? यही आप नोट्स अगर आप बनाते हैं, डॉक्टर्स अपने नोट्स बनाते हैं, तो फार्मासिस्ट अपने नोट्स बनाएं। तो वो अगर अपने नोट्स में मेंशन कर देते हैं कि पेशेंट इज लाइक फॉर एग्जांपल के मेरे साथ रिसेंटली एक इंसिडेंट तो नहीं है, खैर एक वाकया हुआ। तो पेशेंट को जो है वो एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई और सिस्टम ने अलर्ट दिया कि वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब पेशेंट की मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है लेकिन फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया, ना इट्स माय जॉब, आई हैव टू आस्क हिम। तो मैंने जब फिजिशियन को पूछा तो उन्होंने ये मेंशन किया कि नोट्स में हमने मेंशन किया है कि पेशेंट जो सा है वो डायलिसिस पे है, तो दैट्स फाइन विद हिम। तो अगर मैं पेशेंट की ट्रीटमेंट को होल्ड ना करूं और मैं फिजिशियन को अप्रोच ना करूं, मैं खुद से पहले नोट्स पढ़ लूं या मैं इसको अपनी ड्यूटी का एक हिस्सा बना लूं कि मुझे उन्होंने कम्युनिकेट किया है थ्रू द नोट्स, तो मैं नोट्स पढ़ लूं तो वहीं पे ही आप उसको सॉल्व कर देंगे। और आई वाज एट द पोजीशन ऑफ वेरीफाइंग द फिजिशियन ऑर्डर। मैंने वेरीफाई किया है, उसके बाद डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट दूसरा है। अब मैंने डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट को अगर मैं नहीं बताता हूं
तो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट क्या करेगा? वो भी देखेगा, सिस्टम एरर देगा। सिस्टम की जॉब है आपको अलर्ट देना। अब उस अलर्ट को आप ओवरराइड करते हैं किस बेसिस के ऊपर? ये आपकी जॉब है, ठीक है। इसलिए आपको सिस्टम कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता। ये एक अदर डिबेट पे मैं चला जाऊंगा कि एआई जी फार्मासिस्ट को रिप्लेस कर लेगी, इसी वजह से नहीं करेगी, क्योंकि एआई आपको ये बताएगी कि ये मेडिसिन इस तरह तो किसी भी पेशेंट को दवाई नहीं जाएगी। देखें, इंटरेक्शन आपके निकलेंगे कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुई थी या पेशेंट को डायरिया है और एक मेडिकेशन है, फॉर एग्जांपल के एक्यूट डायरिया अगर आ जाता है और पेशेंट को जो है उससे पहले लोपेरामाइड दी गई है, और या आप ये कह सकते हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन की कोई भी जो सी है ना मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई, तो वो एक्यूट डायरिया उसको एक्यूट कंडीशन में था, वो आज से 1 महीने पहले था, लेकिन अलर्ट आज आ रहा है क्योंकि वो उसकी हिस्ट्री में है। तो आपने ओवरराइड करना है कि भाई ये तो एक्यूट केस है और द पेशेंट करंटली ही डोंट हैव अ डायरिया और अब उसको कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन दी जा सकती है, करंटली ही हैज द कॉन्स्टिपेशन। तो ये जो जॉब है ये फार्मासिस्ट की इसीलिए वैलिडेटेड है कि आपने एंड पे डिसाइड करना है। ये आपकी जॉब है ये बताना कि ये मेडिसिन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो आप मेडिकेशन ऑर्डर जो हैं वो सारे के सारे लिखते हैं और इंटरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, एरर्स को प्रिवेंट करते हैं। देखिए, एज अ फार्मासिस्ट हमारी जॉब क्या है? हमारी जॉब है कि हमने सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन देनी है, कि पेशेंट को की सेफ्टी को कंसीडर करना है और मेडिसिन की एफिकेसी को और आउटकम्स हमें मिलने चाहिए। और आउटकम्स हम कैसे उसके फाइंड आउट करेंगे? उसकी मॉनिटरिंग के थ्रू उसके फाइंड आउट करेंगे। तो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसके अंदर आ जाता है। फिर देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट, डिफरेंट पेशेंट्स हैं, डिफरेंट नीड्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। तो पेशेंट की इन केस कि अगर वो हेपेटिक पेशेंट है, कंप्रोमाइज्ड है, अगर वो रीनल कंप्रोमाइज पेशेंट है तो उसमें आपने क्या देना है। इसी तरह पेशेंट की सल्फर एलर्जी है, अगर पेशेंट जो है वो G6PD डेफिशिएंसी, इट्स वेरी कॉमन हियर इन यूएई, तो आप कौन सी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, कौन सी पेन किलर्स दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते हैं। तो ये आपकी जॉब है एज अ यू कैन से एज एन एक्यूट केयर और इवन एज एन क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है, और आप उसकी जितनी डिस्पैरिटीज हैं उसको एड्रेस करेंगे एंड देन यू विल जस्ट फाइंड द बेस्ट मेडिसिन which is not only the safe and effective as well. तो अब पेशेंट ट्रांसफर हो रहा है कि अगर आईसीयू से एक्यूट केयर में जा रहा है तो उसमें इंश्योर करेंगे एक्यूरेट मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन अगेन, कि जो आईसीयू में दी गई हैं उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे एक्यूट केयर के फार्मासिस्ट को कि ये कौन कौन सी मेडिसिन दी गई, कौन सी स्टॉप की गई हैं और कौन सी री इनिशिएट की गई हैं, और मेडिकेशन हिस्ट्री क्या थी। फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन, कि हम एवरीथिंग हम उसमें जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे अगर वो ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट को, या अदर फैसिलिटी में भी अगर हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम पोस्ट डिस्चार्ज या पोस्ट ट्रांसफ़र जो है उसकी जो है वो मॉनिटरिंग कर सकते हैं पेशेंट की। आई एम सॉरी। तो इसी तरह अब प्लानिंग के ये बड़ा एक मेरा ख्याल है कि हमारी प्रैक्टिस में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहा है कि हम डिस्चार्ज जो पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग पहले से कर लें। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारा ये पेशेंट जो आज एडमिट हुआ है इसे कितने दिन आईसीयू में स्टे करना है, कितने दिन इसे एक्यूट केयर में स्टे करना है और कितने दिन के बाद हमने इसको प्लान करना है फॉर डिस्चार्ज। तो जब प्लानिंग आपकी स्टार्ट होती है तो आप क्या करते हैं कि पेशेंट को उन मेडिसिन के ऊपर ले आते हैं जो उसने घर जाके लेनी है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, पेशेंट है उसे घर जाके इनॉक्सोपेरिन इंजेक्शन इस्तेमाल करना है। अगर आपको एकदम से ये पता लगा कि भाई इनॉक्सोप के पेशेंट जो है ना आज डिस्चार्ज हो रहा है शाम को, तो अब उसकी इनॉक्सोपेरिन की डोज कल से है, तो उसको प्रैक्टिकली कौन समझाएगा कि नोक्सापेरिन कैसे यूज करना है, और वो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। फार्मेसी वाले उसको एक थैले के अंदर मेडिसिन डाल के दे देंगे, वो कहेंगे कि भाई ये आपका नोक्सापेरिन है, ये रोज का 1 लगाना है या 2 लगाना है, जैसे भी उसकी डोजिंग हो। और
आप अब खुद पेशेंट बन के सोचें। मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूं कि आप पेशेंट को सिर्फ तभी समझ सकते हैं जब आप अपने आप को पेशेंट समझें। आप अपने आप को पेशेंट समझ के सवाल करें कि भाई ये मैंने ये इंसुलिन पेन मैंने कैसे यूज करना है, ये नीडल कैसे लगानी है, ये जो इंजेक्शन है ये किस तरह लगाना है। और अगर उस पेशेंट को इंजेक्शन लगाना सिखाया गया ऊपर फ्लोर पे या किसी भी जगह पे, तो क्या उसके नोट्स ऐड किए गए कि भाई पेशेंट नो हाउ टू यूज इनॉक्सापेरेंट, पेशेंट इज एजुकेटेड अबाउट इट, तो पेशेंट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड इनॉक्सापेरेंट टुडे एंड ही नो हाउ टू यूज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यही नहीं पता कि पेशेंट आज डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप उसको प्लान नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इफेक्ट जो कम्युनिकेशन जिसमें नहीं हुआ होता कि पेशेंट को आपने एस्पिरिन सुबह दे दी है, अब शाम को वो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो फार्मासिस्ट ने उसको बता दिया कि टेक 1 एस्पिरिन डेली, तो पेशेंट शाम को फिर एस्पिरिन ले लेगा। अब वो हॉस्पिटल में मेडिसिन कैसे दी जाती है, आउट पेशेंट फार्मासिस्ट को नहीं पता, वो इकट्ठा उन्होंने एक पैकेट ला के दे दिया टैबलेट्स को, उन्होंने कहा जी ये खा लें। अब उसको तो पता ही नहीं भाई ये एस्पिरिन खा रहा हूं, ये पेशेंट पूछता ही नहीं है, उसको बताया भी नहीं जाता। और वो जिस कंडीशन में होता है, आप खुद सोचेंगे जब आप हॉस्पिटल में होते हैं, आप एडमिट होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ आ रही होती हैं, आप नींद में होते हैं, आप जो सा है वो आप थके हुए होते हैं, आपको बुरा लग रहा होता है हॉस्पिटल में स्टे, यू वांट टू गो होम, और आपको इस चीज से फिक्र नहीं पड़ रही होती कि भाई ये कितनी गोलियां हैं, बस दे दो मैं खा लेता हूँ। तो अब जब आपने घर जाना है तो आपको तो पता ही नहीं है कि भाई सुबह कौन कौन सी दवाई दी गई थी, तो वो हो सकता है कि डुप्लीकेशन हो जाए। ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर फॉर एग्जांपल कोर्टिसोन दिया गया, उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन था या कोई भी ऐसी कोई अस्थमा अटैक था, किसी भी वजह से हमने पेशेंट को एक कोर्टिसोन इंजेक्शन दिया है। अब उसको मैंने प्रेडनिसोलोन टैबलेट दी है आउट पेशेंट में। अब पेशेंट ने घर जाके प्रेडनिसोलोन दोबारा खा लिया, उसको हमने ये बताया ही नहीं कि भाई ये मेडिसिन आपने कल से स्टार्ट करनी है। पेशेंट को एंटीबायोटिक आईवी दे दी गई इमरजेंसी के अंदर, एंड ही इज डिस्चार्ज ऑन ओरल एंटीबायोटिक्स कि आप ऑगमेंटिन ले लें। वो पेशेंट ने पहले आईवी ले लिया और फिर उसके बाद जो सा है वो उसने घर जाकर एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर दी ओरल। तो ये डुप्लीकेशन हो जाती है और बाज़-औक़ात इसके एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं इन केस ऑफ स्पेसिफिकली पेन किलर्स एनसेड्स के या फिर स्टीरॉयडल मेडिकेशन के। तो एम्बुलेटरी फार्मेसी क्या उसको सपोर्ट कर सकती है? डेफिनेटली काउंसलिंग इज वन ऑफ द मेन पार्ट एम्बुलेटरी फार्मासिस्ट का होता है। उसने देखना होता है कि सारे सप्लाईज उसके पास मौजूद है, पेशेंट इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता है कि भाई मैंने कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन सी ओरल है, कौन सी इंजेक्टेबल है, अगर इंजेक्टेबल है तो उसके सप्लाईज मेरे पास हैं। अगर उसने कोई फॉर एग्जांपल कि वो किसी फीडिंग के ऊपर है, तो क्या उसको वो मिल्क है या कोई भी फीड उसको जो दी गई है, क्या वो उसको रिसीव हो गई है या नहीं हुई। दिस इज एक्चुअली द जॉब ऑफ एम्बुलेटरी फार्मासिस्ट। लेकिन ये सब कुछ उसको पता कैसे लगेगा कि कौन सी मेडिसिन देनी है और कौन सी नहीं देनी है? वो नोट्स जो पहले से प्रिपेयर होते हुए साथ साथ चले आ रहे हैं वो आपको ये बताएंगे। और फिर देन पोस्ट डिस्चार्ज कि पेशेंट घर चला गया है और फिर उसके बाद आप उसको कॉल करते हैं, आप उसकी एडहेरेंस देखते हैं। एडहेरेंस देखने के दो तरीके होते हैं कि आप पेशेंट से पूछें, जिसका मेरा ख्याल है कि धर्म बता रहे थे, तो इसको नॉर्मली हम कहते हैं कि आप जो है वो काउंसलिंग के दो तरीके होते हैं कि तो पेशेंट मुझे अमूमन ये कहता है मुझे पता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ अच्छा आपको पता है तो आप मुझे बताएं कि इसे कैसे खाना है, आप मुझे बताएं इसे कब खाना है, इसे खाने से पहले खाते हैं या खाने के बाद खाते हैं। तो आप उसको इंटरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग के क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें, जिससे आपको ये कंफर्म तो पेशेंट अगर मेडिसिन ले रहा है तो वो सही ले रहा है। और मैं आपको अपना अगर बताऊं तो मुझे बड़ी दिली खुशी होती है जब पेशेंट इंटरेस्ट लेता है, जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, जब वो पूछता है कि नहीं ये कैसे करना है, और वो बाजू का कहते हैं आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम अनॉयड। मैं उनको बल्कि कहता हूँ आई वांट टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि भाई आपने दवाई खानी है। अब ये इसके जामिन आप हैं, आपने दवाई खाई है या नहीं खाई है।
ठीक है, एडहेरेंस आपको पता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो इट्स मीन के दैट यू आर रियल इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट और थेरेपी। तो अब आप ये इसमें देख सकते हैं कि अगर ईआर में है पेशेंट तो उसकी रिकॉन्सिलेशन, एलर्जी हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेड ड्रग कौन कौन सी एडमिनिस्टर की गई, प्लानिंग क्या है, एडवर्स इफेक्ट उसकी एडवर्स इफेक्ट हिस्ट्री देखी गई या नहीं देखी गई, या उसको करंटली किसी मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई ड्रग इंटरेक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, और वो डॉक्यूमेंट लाजमी करेगा। जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये मैं इसे कहूंगा सेम पेज, कि आपके जितने फार्मासिस्ट हैं, चाहे वो ईआर है, चाहे वो यूनिट बेस है, चाहे वो क्लिनिकल है, चाहे वो डिस्चार्ज फार्मासिस्ट है, चाहे वो एम्बुलेटरी फार्मासिस्ट है, या फॉलोअप के लिए अगर आपने कोई अलग से फार्मासिस्ट होम डिलीवरी के लिए या किसी भी चीज के लिए फार्मासिस्ट रखा हुआ है, तो क्या ये सेम पेज पे है या नहीं है। जो इंफॉर्मेशन ईआर लिख रहा है उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए यूनिट बेस उसको देखेगा क्या मुझे डोज एडजस्टमेंट की जरूरत है, वो डेली राउंड्स करेगा, रिव्यू लैब्स करेगा, लैब्स के बाद फिर देखेगा कि मुझे इसको चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, टीडीएम को देखेगा, ऑर्डर लैब ऑर्डर मजीद करेगा अगर उसको लैब्स की जरूरत है, वाइटल्स देखेगा, मॉनिटर फंक्शन, एवरीथिंग ये यूनिट बेस्ड फार्मासिस्ट करेगा, और वो डॉक्यूमेंट करेगा। अगर वो ये लिखता है कि मैंने पोटाशियम स्टार्ट किया है बिकॉज हिज पोटाशियम लेवल्स वर लो, तो ये बात एम्बुलेटरी फार्मासिस्ट को कैसे पता लगेगी कि 3 दिन के लिए पोटाशियम उसको दिया गया था, 3 दिन से ज्यादा नहीं देना है। तो ये बात एम्बुलेटरी फार्मासिस्ट को कैसे पता लगेगी, जब वो नोट्स देखेगा कि यूनिट बेस्ड फार्मासिस्ट ने उसकी लैब्स पढ़ी और लैब्स पढ़ के उसने एक मेडिसिन लिखी है। इसी तरह क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसकी गाइडलाइंस को रिव्यू करेगा कि अगर वो फॉर एग्जांपल किसी इन्फेक्शन की गाइडलाइंस है तो क्या वो गाइडलाइंस के मुताबिक हम मेडिसिन दे रहे हैं या नहीं, स्टुअर्डशिप प्लान के मुताबिक क्या हम उसको आईवी टू ओरल मूव कर रहे हैं या नहीं, इंटरेक्शंस हो रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, रेफरेंसेस जो प्रोवाइड जो डॉक्टर को चाहिए वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा, अपनी रिकमेंडेशन देगा, एजुकेशन टू द पेशेंट करेगा, एडीआर मॉनिटरिंग करेगा, एडवर्स इवन एविडेंस बेस्ड सपोर्ट, वो ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बाज़ औक़ात हमें वार्ड्स में या हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट होते हैं उसमें हमें ज़रूरत होती है एविडेंस की, दैट्स समवेयर इज नॉट अवेलेबल, कि हमारे पास कोई उसका एविडेंस नहीं होता। तो क्या हमें ये ट्रीटमेंट प्लान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब है। अब पेशेंट आ गया क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास, उसने ये सारी डिटेल्स मेंशन कर दी हैं, अब वो आ गया डिस्चार्ज में। डिस्चार्ज में उसने यही सारी रिकॉन्सिलेशन पीछे की तरफ देखनी है, पहले कि क्या कौन कौन सी दी गई, कौन सी मेडिसिन स्टार्ट की गई, कौन सी मेडिसिन स्टॉप की गई, डिसकंटिन्यू कौन सी की गई, कंटिन्यू कौन सी करनी है, ऑल मेडिसिन रिव्यू करेगा। नेक्स्ट डोज, ये बहुत जरूरी है कि उसने हॉस्पिटल में सुबह कौन सी दवाई खाई है, अगर उसने सुबह एस्पिरिन खा ली है तो शाम को एस्पिरिन नहीं खानी, अगर उसने ये उस पर मेंशन होना बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टाइम और स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट, ये बहुत जरूरी है। और राइट फॉर्मुलेशन, हो सकता है कि जो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के इनॉक्सापैरिन है, तो अब वो 80 माइक्रोग्राम आप या 80 यूनिट्स चले, आप यूनिट्स में अगर हम कहते हैं तो 80 यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया गया और 90 यूनिट्स प्रिस्क्राइब कर दिए गए। तो जो सिलेक्टेड आइटम थी वो 80 यूनिट थी और प्रिस्क्राइब 90 यूनिट्स थी, तो क्या हो जाएगा, 2 पेन्स ऑफ 80 हो जाएंगे, 81 और 10 यूनिट्स ऑफ जो सा है वो दूसरे 80 से। लेकिन कैन बी पॉसिबल कि पेशेंट जो है वो 160 यूज कर ले, तो क्या उन्होंने फॉर्मुलेशन उसकी या उसकी जो सिलेक्शन ऑफ ड्रग है वो ठीक है, क्या हो सकता है कि वो उसकी जो ड्रग जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो हो सकता है उसको जो है ट्यूब लगी हो तो उसको हम ओरली कुछ भी ना दे सकते हो, तो क्या उसने उसको ओरल फॉर्मुलेशन या लिक्विड फॉर्मुलेशन में चेंज किया है या नहीं, अगर किया है तो क्या एसोमेप्राजोल दी जा सकती है या पेंटोप्राजोल दी जा सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। रिक्वायर्ड सप्लाईज, कि उसके जो सप्लाईज हैं, अगर उसको इंजेक्टेबल दिया है आपने घर में इंजेक्शन लगाने के लिए, तो क्या उसको इंजेक्टेबल दिए गए हैं कि नहीं, नॉर्मल सलाइन दिया गया है या नहीं गया, अगर उसको कोई सुरिंज चाहिए थी, अगर उसको कोई भी चीज़ चाहिए वो सप्लाईज मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। और डॉक्यूमेंटेशन अगेन, कि अगर वो सप्लाईज दिए जा रहे हैं तो वो लिखने हैं ताकि एम्बुलेटरी फार्मासिस्ट को पता हो, वो दोबारा बताए और वो उस बैग में शामिल कर दे कि ये इंजेक्शन आपने इन सप्लाईज के साथ यूज करना है। ये ना हो कि घर में पेशेंट पहुंचे और
मेडिसिन खोले, सप्लाईज इधर पड़ी हो और उसको ये ना समझ आ रहा हो कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पर यूज करनी है। और अगेन लास्ट एम्बुलेटरी फार्मासिस्ट के पास गया है, अब उसके पास ये पिछली सारी इंफॉर्मेशन है, उसने ऑर्डर वेरीफाई किया एज पर द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, एक्सपायरी वगैरह चेक करना, ये दैट्स अ रूटीन जॉब कि क्वांटिटी और एक्सपायरी वेरीफाई करना और ऑर्डर राइट ऑर्डर है या नहीं है। अच्छा ये भी हो सकता है, एक दफा हमारे साथ ऐसे हुआ था कि पेशेंट को जो है पेक्सलोविड जो बेसिकली कोविड की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, वो इमरजेंसी में प्रिस्क्राइब की गई, पेशेंट एडमिट हो गया। अब जब पेशेंट एडमिट हुआ तो किसी ने डिसकंटिन्यू नहीं किया, और जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा था आफ्टर 5 और 10 डेज, तो फिर उसके बाद पैक्सलोविड शो हो रही थी। तो हमने कहा कि भाई ये पेशेंट तो कोविड उसको आया तकरीबन आज से 10 साल 10 दिन पहले, और उसको जो है डायग्नोज हो गया कोविड, और अब 10 दिन के बाद पैक्सलोविड की क्या जरूरत है। तो फिर पता लगा कि ये बेसिकली इमरजेंसी से डिस्चार्ज का प्लान था, लेकिन पेशेंट डिटोरियरेट कर गया जिसकी वजह से एडमिट करना पड़ा, ऑर्डर वहीं का वहीं रह गया। तो ये जानना बहुत जरूरी है, ये वेरीफाई करना कि भाई ये ऑर्डर डिसकंटिन्यू हुआ या नहीं हुआ, और फिर उसके बाद ये नोट्स में शामिल करना। इमरजेंसी फार्मासिस्ट ने अगर नहीं किया था तो क्या वो जब वो ट्रांसफर कर रहे थे पेशेंट को इमरजेंसी से आईसीयू में या एक्यूट केयर में, तो क्या उन्होंने इस चीज को लिखा या नहीं लिखा। उसके बाद डिस्पेंसिंग, पेशेंट को आप सारी मेडिसिन डिस्पेंस करेंगे, आप उसको बताएंगे कौन सी स्टार्ट करनी है और कौन सी कितने दिन के बाद स्टॉप करनी, ये बताना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बताते हैं, आप पैकेट साइज के हिसाब से मेडिसिन दे देते हैं, जैसे आप किसी को पोटाशियम दे देते हैं उसमें 10 टैबलेट्स हैं, उसने यूज 3 दिन के लिए करनी है, तो हो सकता है वो 10 दिन कर ले, और अगर वो 10 दिन कर लेगा तो क्या होगा कि पेशेंट का पोटाशियम लेवल बढ़ जाएगा। इसी तरह सप्लाईज को दोबारा चेक करना है, पेशेंट का फॉलोअप करना है, मॉनिटरिंग करनी है और कम्युनिकेशन। Again, emergency to ICU can be possible, emergency to home can be possible, emergency to ambulatory। जिस जिस चेक से पेशेंट गुजरता जाएगा उस चेक पे फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट करेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट करेगा तो ये सब सेम पेज के ऊपर रहेंगे, ये सब एक ही जगह पे लिखेंगे, एक दूसरे के नोट्स पढ़ेंगे। इनको डॉक्टर्स के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको एक दूसरे के नोट्स की जरूरत पड़ेगी कि हमारा पेशेंट, फार्माकोथेरेपिस्ट ने क्या लिखा, यूनिट बेस्ड फार्मासिस्ट ने क्या लिखा, इमरजेंसी फार्मासिस्ट ने क्या लिखा, मैं डिस्चार्ज फार्मासिस्ट हूं, मैंने इसको पढ़ा है और मैंने देख लिया, पेशेंट की प्रोफाइल मेरे सामने क्लियर है, अब मैंने इसको ये चीजें देनी है, ये डिसकंटिन्यू करनी है, ये कंटिन्यू करनी है, नेक्स्ट डोज तब देनी है और रिक्वायर्ड सप्लाईज देनी है, कोऑर्डिनेट करना है और डिस्चार्ज कर देना पेशेंट। दैट्स माय जॉब। तो ये हमारे जो है आज के सेशन थे। एट द एंड आई want to thank everyone, all of our moderators, our speakers, esteemed speakers, as well as all of our जितने भी हमारे जो हैं गिविंग बैक के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट सेशन जो है, जो कल हमारा पाकिस्तान के 4 बजे स्टार्ट होगा, it will start by Dr. Saad Sultan. He's an executive director of Cleveland Clinic. Dr. Tahir Aziz जो CEO शौक खानम से हैं, Dr. Usman Iqbal, he will talk about the digital pharmacist adapting to AI powered future. Dr. Muhammad Hadi, he's an associate professor in Qatar. He will talk about foundation of ethical research. And Dr. Fareed Hassan, professor in Karachi University, he will talk about the quality by design. Dr. Usman Gori, he's a senior research fellow in the Huddersfield. He will talk about the research in practice. Dr. Yusuf Ahmed, जो कि चीफ फार्मासिस्ट हैं यूके में, वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स एंड व्हाई फार्मासिस्ट एजुकेशन डजंट एंड एट ग्रेजुएशन। डॉक्टर महरीन नाज जो कि BPS 17 स्केल फार्मासिस्ट हैं, ये बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ लर्निंग के ऊपर बात करेंगी। डॉक्टर वासिफ गिलानी, माय मेंटोर एज वेल, प्रोफेसर हैं गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो कि ब्रिजिंग ऑफ एकेडमिया एंड प्रैक्टिस की बात करेंगे। डॉक्टर सिद्रा अंदलीब जो कि फार्मासिस्ट हैं कनाडा में, कम्युनिकेशन दैट कनेक्ट्स द काउंसलिंग विद एम्पैथी, इसके ऊपर बात करेंगे, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। और डॉक्टर सलामत अली, असिस्टेंट प्रोफेसर GCUF, चीफ फार्मासिस्ट सर्विसेज हॉस्पिटल हैं, बियॉन्ड डिस्पेंसिंग की बात करेंगे। डॉक्टर सलवा एहसन, शी इज द चीफ फार्मासिस्ट ऑफ शिफा
टेली फार्मेसी इन पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर उमर इखलाक भुट्टा जो है वो चीफ फार्मासिस्ट SKMCH है। ये इवॉल्विंग रोल्स द फार्मासिस्ट ऑफ टुमारो, ये सारे इस्टीम्ड जो प्रेजेंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये कल हमारे सेशन में अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। 4 बजे से लेके 9:30 बजे तक हमारा सेशन चलेगा। आई होप इट विल ऑल वेंट वेल। और ये तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अपने आप और अपनी आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया, अवेलेबिलिटी का बहुत शुक्रिया। विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट आप लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, हमारे स्पीकर्स आए हैं, और I really have no words to thank all of you. If you have any question, if you have anything to ask, you may ask. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Rana Kamran, for this really beneficial talk. That was a great wrap up for today. This brings day one of our conference to a close. I would like to thank all our esteemed speakers and attendees for being with us and engaging throughout. We'll see you tomorrow at 4 p.m. sharp for the day 2 of the conference. Don't miss it. Have a great evening, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Allah Hafiz. Allah Hafiz.